Hi guys, wow. Before I could make it here, there are 3-4 people here. So I'm quite impressed कि तुम लोग आए हो मेरे जिंदगी में, तुम बाहर बन गए। सॉरी, मुझे तो कुछ गाना गलत गा रही हूँ, पर जो ध्यान में आया वो बोल रही हूँ। एक सेकेंड दो, मुझे इंस्टा लाइव जाना है। Hi guys, wow. Before I why is it here? There are 3-4 people here. Okay, I got a start of my life. Okay, we got it. So, where is the chat? Why can't I see it? 1 minute, guys. Just let me get my act together. Generally, तो chat नजर आता है, आज काहे नजर नहीं आ रहा है? Okay, I can see it. Let me see if I can see the chat now. इसको pause करना पड़ेगा. Okay. Okay. So, आज for some reason YouTube का जो chat window है वो मुझे क्यों नजर नहीं आ रहा है, नहीं पता। कोई जो यहाँ पे स्ट्रीम पे है, कैन यू ऑल जस्ट राइट हाई और समथिंग? आई हैव नो क्लू, आई कांट सी इट। जूम वाले थोड़ा उधर जाओ ना, कोई तो भी वहां जाके देखो लाइव होंगे नहीं। सब लोग इधर ही आ गए आज, वाह अच्छा दिन है मेरा। सो हाउ आर यू ऑल, एंड लेट मी गो लाइव on Insta. Till then, can somebody text here? Can you all see it on YouTube? कि I have to go again live on YouTube. ऐसा तो नहीं हुआ मैंने गलत वाला जूम स्टार्ट किया है? जूम लिंक नहीं, पर तुम लोग नहीं आते फिर। ओके, यस, होम पेज पे ठीक है, कूल। पर चैट विंडो क्यों नजर नहीं आ रही मेरे को? नो डेटा ही नजर नहीं आ रहा। चैट रेट 1 मेरा ही आया है। ओके, जनरली मुझे डेटा नजर आता है और पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, पहले हम लाइव स्ट्रीमिंग तो आ गई थी से, तो वहां पे कोई चैट कोई लिखेगा वहां पे, जूम वाले एक जाके हेलो लिखो वहां पे। फॉर सम रीजन दिस हैज पॉज्ड द चैट विंडो ऑन माय दिस थिंग। फिर हम इंस्टा लाइव जाएंगे। किसने लिखा? यस मैम, यस मैम, ओके, बट जिसने लिखा है हबे जस्ट अ गाय, प्लीज गो एंड राइट ओवर देयर। somebody just write a hi on YouTube so I know that it's working. नहीं तो मुझे चैट विंडो नॉर्मली, हाँ अब नजर आ रहा है। ग्रेट, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग लाइव ऑन इंस्टा। सॉरी टू मेक योर वेट। ओके, तब तक आज का सबसे पहला क्वेश्चन। पहले तो ऑब्वियसली तुम लोग ने मुझे मिस किया, इसलिए जो लास्ट टाइम इतने लोग एक टाइम पे नहीं आए थे, आई सी टुडे लॉट ऑफ पीपल अटेंडिंग दिस वन, सो थैंक यू सो मच। I am very, very grateful to you all कि even though I take such long breaks, you remember me and you come back. Hi Insta people, good to see you all. Okay, so मुझे सबसे पहले question, besides कि did you miss me, which would be a yes. I hope nobody is so stupid to write no. ठीक है, मेरा next question आप लोगों के लिए है। आज के दिन सब लोग चैट में लिखेंगे जो जूम पे आए हैं और जो यूट्यूब पे आए हैं और इंस्टा पे आए। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। ए हाय बेटा, कैसे हो? हाय आर्यन, हाउ आर यू? नमस्ते राइजिंग सन। अच्छा ठीक है, पहले सबको नमस्ते बोलूं। जस्ट अ गाय, जूम यूजर, इफ ओनली इट ओनली टेक्स 1 मोमेंट टू चेंज फॉर एवर। वाह, ये इसका पिक ये है, ठीक है। और अभय, नोबी एंड और कौन है? प्रिंस, हेलो एवरीवन, गुड टू सी यू ऑल। जतिन सोनी, किरण, राइजिंग सन को हेलो बोल दिया। अब थोड़ा हम यूट्यूब वाले नाम ले ले। तुषार, अभय, अमन, I came to Pune for a job. अच्छा तुषार, नहीं अमन, सॉरी, एक मिनट बेटा, let me say hello to everyone before I take your questions. I hope that is okay because I just want to say, क्योंकि इतने दिनों के बाद मैं वापस आई हूँ YouTube पे। कब आई थी? 14 दिन पहले, right? Something. Last was with Vedant, right? And then I went to Istanbul, which I was supposed to go only for like 4 days or 5 days. I ended up staying there 10-11 days and I just got back on Sunday. Who's here? Hi Pratik, कैसे हो? Hi Vishnu. Hello बेटा, बेटा नहीं, hello Vishnu, कैसे हो? बेटा नहीं बोल सकते, नहीं एक्चुअली बोल सकती हूँ। कैसे हो तुम? I hope you're well. तुमने कभी वॉइस नोट का रिप्लाई नहीं दिया। I don't know अभी तुम जर्मनी में हो, कहाँ पे हो? So hi Preet, then Mohit, Utkarsh,
everyone, good to see you all here. And कैसे हो सब लोग? So question, इन सबसे पहले क्वेश्चन, जनरली तुम लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हो, आज मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन पूछती हूँ, सब लोग ने जवाब देना है. Try to, don't be so fucking lazy, sorry, don't be so lazy. Make sure you reply. Today, what did you all do? One thing for your mental health. Everybody please text. Zoom पे लिखो, Insta पे लिखो और YouTube पे लिखो, तीनों जगह. I want to know one thing that you all did today that would be good for your mental health. और किसी को अगर से बोल के भी करना है, if you want to talk, sure, most running. Okay, so somebody exercised. This is from Insta. When अच्छा देखो हाँ, Aryan went to oh no, Aryan wrote somebody else. Somebody wrote gym. Let's say went to work out to the gym. Good. Prince, good evening. I texted this random guy on Instagram and told him I'm there for him. Now one more thing. How is this good for mental health? Right? Most of you will question. But do you know when you help someone, you also release feel good chemicals and it's good for it's very therapeutic. You feel good, you feel valuable, you feel like you have reached out to someone. And even if you can like help them like 1% or whatever, it kind of adds joy to your life and it's good for your mind, even for your physical self. Why? Because तुम्हारा stress levels, जब दूसरों का हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, हम इतने स्ट्रेस नहीं होते जितना हमारे प्रॉब्लम से हम स्ट्रेस होते हैं. ठीक है, दूसरों का प्रॉब्लम सॉल्व करना किसने क्या सिखाया था तुम लोग को? when you're trying to solve your own problem, it's different. Why? Because your emotional part of your brain is active. But when you help someone else, what is it called, and you do a better job at it? Did you all remember something? Aryan, do you know what it's called? Why we do a better job? What is that paradox called? Solomon's paradox. It's my memory is bad. Okay. If yours is bad, imagine mine at my age. Because you do 10,000 things, right? Okay, let's see. Substance abuse, man. Somebody wrote, listening to you live is the best mental health therapy for the day. Thank you. Thank you so much. That's very sweet. Hi, Sumit. Kaise bacha? Hi, Shubham. Hi, Anuj. I smoked for one last time. Okay. So last time, yeah, doesn't mean one last time for today, right? One last time for good. And oh, Prince का birthday. Everybody please write happy birthday to Prince. Prince का असली नाम हमको नहीं पता है. I doubt it कि वो कहीं के Prince हैं, पर शायद वो किसी के बेटे होंगे तो उनके लिए वो तो उनके Prince हुए, क्योंकि माँ बाप हमारे के King and Queen के जैसे होते हैं, और शायद वो किसी का बॉयफ्रेंड है तो वो उसकी princess, he is का prince. So happy birthday, Prince. God bless you. Wishing you a lot of health, good success, and above all, peace of mind. And if I ever can be there for you, I'm sure I've been there for you before, but ever, you can always connect with me. One who says smoking for last time, it's never his last time. So Vishnu, आपने last time जरूर लिखा है, but make sure कि आपका last time है, ठीक है? Okay. किसने क्या लिखा है, एक मिनट. Hi, the King's Label. क्या नाम रखते हो यार, इंसान को पढ़ने में थोड़ा वक्त लग जाता है. Hi, King's Label is actually an alcohol brand. Was that? King's Label is an alcohol brand. Oh, I thought वो कौन सी मूवी? King's something, no? King's Men. King's something. Okay. Hi, Shayarishi, कैसे हो? Horseman or something like that. हाँ, okay. भाई को सब पता है. हाँ, कौन से भाई को? हाँ, obviously खुद बोला, पर जरूरी नहीं है. Some people actually keep their word. For all you know, he'll surprise you and never smoke again. So don't underestimate. Hi, Rohit ji. How are you? Sagar Rajput wants to go live, okay, with me. I will try, but doubtful it works. See if it's accepted. Please join me. I have no problem. But generally, since I moved to Dubai, it's become quite a hassle to add new people live. Oh, Mother of Jesus Christ! YouTube का बहुत chat रह गया. एक second, हम पढ़ते हैं. अमन, आपके question पे हम आएंगे और आपका लिखेंगे. Answer करेंगे. Hi, Alishba, कैसे हो? Tushar said he meditated and breathing exercise. Good job. Then Alishba said called a friend and talked about nice things. That's also good for your health, mental and physical. One more thing. अच्छा, तुषार का ही नहीं, तुषार
रस्टी के साथ क्या हाय रस्टी वन मोर थिंग आई डिड वाज आई जॉइंड सम डिस्कॉर्ड पेज टू गेट फ्रेंड्स बिकॉज आई डोंट हैव हेल्दी फ्रेंड्स इन रियल लाइफ दैट्स अ गुड थिंग तुषार online offline it doesn't matter. Gulam Abbas, hi, how are you? Alishba, she made sandwiches, that is also good. When you keep yourself busy, when you are productive, that is also good for your mental health. And then she had a walk in this nice weather. India में मुझे लगा बारिश हो रही है. I'm not a very बारिश person, so forgive me. Hi Jojo, how are you? Happy birthday Prince, somebody has wished you. Rohit, I'm good, how are you? So very nice to see. Lot of people have learned a lot of things from me, and I didn't want to like just answer your question. Okay, somebody wrote Jim. अरे गौरव आया है. गौरव तू कहाँ से? तू वही गौरव है ना कि कोई और गौरव है? I don't know, इतने सारे गौरव है. तो मेरा एक normal maybe muted. क्या muted? What is muted? What are you writing? Excuse me. किसने लिखा ये? अक्षत. Maybe muted. What is muted, Baba? Audio नहीं आ रही है. सर क्यों नहीं आ रही? Muted इंस्टा पे नहीं हो सकता. ए YouTube वाले जरा देखो. ऑडियो ठीक है. YouTube पे ठीक है? हाँ YouTube पे भी ठीक है. मैं चेक करता हूँ. हाँ जरा देखो. तुम लोग इंस्टा वाले YouTube की बात कर रहे हो कि इंस्टा की ग्राफ बात कर रहे हो? शायद आपकी तरफ से म्यूट है वीडियो. नहीं बाबा, वीडियो है ही नहीं, इधर चल रहा है. तुम लोग अगर से इंस्टा की बात कर रहे हो, सब लोग नो ऑडियो लिख रहे हैं. Can't hear you. I wonder why. Okay, I'll disconnect and go live again on Insta. YouTube is good. I checked. Okay, YouTube is good. So it's just Insta. Sometimes Insta को मौत आती है, तो हम figure out करेंगे. Okay, पहले तो मुझे थोड़ा सा अपना शॉर्ट्स को ठीक करने दो. अब मेरे को रियलाइज हुआ, ठीक है? Okay. हाँ, अब हम फिर से ट्राई कर रहे हैं. अगर से इंस्टा को सुनाई नहीं देता है, इंस्टा वालों कम्युनिटी पे डिस्कॉर्ड का लिंक, डिस्कॉर्ड और कम्युनिटी पे जूम का लिंक है, प्लीज वहां आ जाइए, ठीक है? एंड अगर से आप लोग को अभी भी सुनाई नहीं दे रहा था, ठीक है? Okay, hi Arnav, how are you? Good to see you. Tej, how are you? So nice to see some new names, although it's possible that you're the same people who have named yourself differently. Generally तुम लोग ऐसा करते हो ना? तो अभी कोई ए करके आया है. अच्छा, ए इज अर्नव. ओके, don't mind if you don't want me to take your names, although I think there are many of your same names wala in India, so it should not really matter. Okay, hi Tej, hello ma'am, hope all is well. उस दिन की डांट के लिए थैंक्स. पहले तो तेज मुझे नहीं पता तुम कौन हो, तुम्हारा केस क्या था और मैंने तुम्हें डांटा क्यों. सो प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि मेरे इतने केसेस होते हैं, तो ऐसे नहीं करके डोंट. Loco sing from Instant. Acha, sorry, I can't recall. I'm sorry. I get way too many DMs to remember any case. मुझे जब तक नोट्स नहीं देखती हूँ या तुम लोग का इंस्टा स्क्रॉल नहीं करती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता मेनी ए टाइम. सो मुझे माफ कीजिए. और अगर से आपको मेरी डांट अच्छी लगी, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि जनरली मेरे बच्चे बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा डांटती हूँ ऑन सर्टेन पॉइंट. सो दैट इज नॉट नेसेसरी अ बैड थिंग. आई नो समटाइम्स वी थिंक करके यू नो we take it we are very sensitive because we only want someone to say nice things about us, not get angry with us, not get upset. But sometimes it helps you come on the right track. It's not necessarily a bad thing. Hi Surajveer, hi Rupal, hi Preet again. Hi Romil, kaise ho? Long time. Rupal, I cannot take anyone live. If you all want to come live with me, please come on Zoom. You can talk to me, you can come on video, audio, whatever. Saurabh, hello ma'am, we are grateful to have you around us. Thank you, Saurabh, that's a very sweet thing. Thank you. So, you know, normally I rant so much, right? Not so much. One odd case तो मैं बता देती हूँ. पर आज के दिन मैं तुमको बोलने वाली थी कि लास्ट 4-5 दिन से, जब से मैं 4-5 दिन तो नहीं हुए मुझे आके, पर 3-4 दिन से जब से मैं वापस आई हूँ, तो I've been like working non-stop continuously. So I must say कि I got like such beautiful, someone wrote to me like although I'm not their mother, but they look at me like a mother figure, and someone said hey, you're the best, or you're the sweetest. And yes, मैं डांटती भी हूँ. For the ones who actually know me, Sarah knows me, Aryan knows me, they know that I will get upset with you all. But see, you cannot tell someone कि सिर्फ हमें प्यार करो, सिर्फ हमें you know आराम से समझाओ. It जैसे हर चीज का
बैलेंस होता है, ये आपको बैलेंस देता है. तो not necessarily when I get angry with you all or I get upset with you all is a bad thing. I'm just trying to help you all, and I'm like a teacher, but I'm like a nicer and cooler teacher. I hope that you can like discuss so many things with me. Like last 3-4 days, as usual, porn addiction is the topic of the week, and some incest, some this, that, and then most of you all go into this circle of guilt, not letting go of the past and all that. So even though I'm not a sex therapist, I do try to help you all. I give you all the resources and all that, right? So I don't think कि generally school teacher या किसी से आप लोग ये सब बात कर सकते हो. मैं कभी although मैं लिख देती हूँ, I'm not a sex therapist and I can only give you all a resource, but मैं थोड़ा भड़क तो जाती हूँ आप लोगों के साथ आपको सीधे रास्ते पे लेके आने के लिए. एंड आई थिंक किसने क्या लिखा, टीचर क्या लिखा, इन माय ओपिनियन इंडियन वे ऑफ गिविंग एडवाइस टू, नहीं, आई डोंट ऑलवेज कोर्स. I think like that day somebody didn't give me an email, okay, after saying I will make a, I'm like beta email तो दे दे, like so depends, okay, मेरे मूड पे भी डिपेंड करता है, मैं कितनी थकी होती हूँ वो भी डिपेंड करता है, तुम किस तरह मुझे मैसेज करते हो उस पर बहुत डिपेंड करता है. इफ तुम लोग मुझे लाइक प्लीज थैंक यू नहीं बोलेंगे, मेरे को मुझे और भी चिढ़ पड़ती है, क्योंकि आई एम लाइक यू वांट हेल्प, जस्ट बी नाइस टू मी. बट लास्ट फ्यू टाइम्स everybody, I think you people have got my message, because nobody lately has started a message, hey, yeah, tell us this. Nowadays I get messages, hello ma'am, how are you? So thank you so much बच्चा लोग for understanding that हम भी इंसान हैं, हमको भी कभी कभी पूछ लिया करो हम कैसे हैं, ठीक है. So thank you so much for the love, and if you love someone you will scold them to stop them from doing bad things. Yeah, of course. So see, I don't know you all, right, but I love you guys. I mean, it's I won't say it's unconditional, because respect is one of the conditions I have. I believe that if I am helping you all, least you can do is respect my time and value me. And कभी कभी याद किया करो, चाहे वो मेरा बर्थडे हो, गुरु पूर्णिमा के टाइम कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया. थैंक यू फॉर दैट. I'm very blessed that yes, maybe I didn't post any stories this time because I was traveling and I just got back. But thank you so much. Ma'am, please may I get your appointment? Of course you may, but please understand, I've just got back to work. My next 2 weeks are chock-a-block full. So much so, even though I have a lemon down, I took 2 clients today. And remember, each client takes more than an hour. So it's very draining for a counselor to talk so much and then come back and talk some more. Okay. So if you don't mind waiting, one, or I have some junior counselors. Now I have one more added. थैंकफुली. सो जब तक मेरा अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है आप लोग उनसे भी बात कर सकते हो, ठीक है. सी मोस्ट ऑफ आवर इश्यूज आर वेरी क्या बोलते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट इट यू ऑलरेडी फील क्वाइट लाइट. एक मिनट फैन ऑन करने दो. तो इफ यू डोंट माइंड, आई एम रेडी टू टेक योर केस, एज लॉन्ग एज वन यू आर नॉट सुसाइडल, टू इफ यू कैन वेट. ये फैन का है ना, ऑन हो रहा है, ऑन हो जाए बच्चा. हाँ तो हाँ, बाय द वे कल मैंने वो देखा, रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क था कि वो हैरिसन फोर्ड वाली कौन सी मूवी है? Raiders of the Lost Ark. You're talking about इंडियाना जोन्स. Indiana Jones and the Dial of the हाँ, मैं देखकर आई बाय द वे. जिनको एक्शन अच्छा लगता है देख लेना, पर रबर बैंड की तरह एज यूजुअल खींचे और अचानक पता नहीं कहाँ चले गया. स्पॉइलर अलर्ट. पुरानी इंडियाना जोन्स मूवीज वाली वो बात है ही नहीं इसमें. नहीं, यू वुड बी सरप्राइज, बिगनिंग में है. एंड आई विश वही बिगनिंग में है. देन जो आई विश करते मेड इट अ टिपिकल हॉलीवुड इंग्लिश फिल्म. हाँ, नहीं फिर वो क्या था, फिर बाद में वो लोग, वो याद है फास्ट एंड फ्यूरियस में कैसे वो कार से एरोप्लेन बना देते टाइप से ना, इलॉजिकल. I know, I've seen it. I went like 2 days ago. Something like that happens here also. I'm like, oh my god, अच्छा खासा चल रहा था. वो लेवल ही अलग था. हाँ. ओके, किसी ने लिखा है, तेज ने लिखा, आप जो करते हो ऐसा कोई नहीं करता, स्पेशली आज के टाइम में. सो थैंक यू एंड रिस्पेक्ट. थैंक यू सो मच. एंड ओके, व्हाट वाज द मैम, बट पीपल हु कम टू यू आर इन पेन, सो उसमें भूल जाते हैं वो लोग. प्लस जनरली नॉट द नॉर्म.
while messaging will be followed by following. See, okay, let's address this properly. Okay, अब जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो, तुम पेन में होते हो, तुम अपॉइंटमेंट लेना नहीं भूलते, राइट? तुम वहां पे पेशेंट भी हो, तुम रुकते हो, राइट? तुमको पेशेंस भी दिखाना पड़ता है, तुमको अपना पेन असाइड करके डॉक्टर से पोलाइटली भी बात करना पड़ता है. मुझे बताओ, तुम कोई भी डॉक्टर के पास जाते हो, तुम कितने भी पेन हो, तुम अगर से उस डॉक्टर पे, अनलेस वो डॉक्टर बहुत गंदा डॉक्टर है, जनरली मोस्ट ऑफ अस बोलेंगे डॉक्टर प्लीज हेल्प अस, और डॉक्टर बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ करो. हम सब करते हैं कि नहीं? तो व्हाई डज इट चेंज व्हेन यू कम टू अ काउंसलर? डोंट मेक एक्सक्यूजेस फॉर नॉट हैविंग एटिकेट. डोंट हैव क्या अपनी पुरानी है. हाँ, अपनी पुरानी है. हाय गौरव, कैसे हो? वेलकम. मैं सोच रही थी ये गौरव कौन सा है, दो गौरव है आज. तो एनीवे, सो वन दैट. सेकंड, व्हाट वाज योर पॉइंट? द नॉर्म दैट मैसेजिंग विल बी फॉलोड बाय फॉलोइंग. हाँ, तो आई थिंक यू मीन बाय फॉलोइंग मी ऑन इंस्टा. When you can follow 1000, 2000, 3000 people, pay the money and get that blue tick mark. Okay, so somebody who comes handy during your difficult times, if you cannot do that, I'm sorry, then you have no etiquette. Then you have no value for the person who's going to be there for you. ये simple चीज अगर से आप बचपन से सीख लो ना, you will do well in your life. It's not only because of me. I am teaching you all because this is the norm. This is the right thing to do as you grow older. Now whoever I have worked with, okay, one second. Whoever came on my podcast, I might not use them again, right? I might not need them again. I might not call them again. But I still respond to their Insta, on their post, even after 1.5 years of calling them on a podcast. मेरा उधर टक करके मैं उसको unfollow करती after they came handy. I have only unfollowed certain people who were very rude to me. Okay, so I'm talking about the creators of that. फिर मैं बोलते thank you so much, नहीं चाहिए, मत आओ हमारे podcast पे, चलेगा. But other than that, we have to be very, very courteous. We have to learn how to be kind, how to be polite. जब अपना खुद का काम कराना हो, सेल्फिश इतना भी मत बनो कि वो इंसान को आप हाय हेलो भी ना बोल पाए. और अगर से आपने ये मेरे चैनल पे नहीं सीखा तो फिर क्या सीखा? अगर से मैं तुमको हमेशा कहती हूँ कि बी काइंड टू अदर्स ऑल्सो, राइट? काइंडनेस तो अपने लिए तो हमारे पास भरपूर होती है, हम कुछ अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हैं. तो आई होप यू गेट माई पॉइंट. हाय गौरव, हाय हुज दैट? मैं भी आया हूँ मैम, आपका सबका राज. तूने सारा नेम काहे चेंज कर दिया? ये फ्यूजन फॉर्म मुझे फिर से इतना टाइम लगेगा याद करने के लिए. मैम ये पिछले 3-4 मीटिंग से यही नाम से आ रहा है. अरे पर काहे, क्या हो गया? फ्यूजन. ठीक है मैम, मैम के मीटिंग के लिए यूजर नेम चेंज च्युइंगम हुआ करता था, तो पर तूने नाम क्यों रखा है ऐसा? ओ मैम, वो मेरे मीडिया कंपनी का नाम है, तो उसके हिसाब से मेरे को मीटिंग में जाना होता है, तो मैं वही नाम से जाता हूँ. बड़ा आदमी बन गया. अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा फ्यूजन फॉर्म / राज लिख दिया कर, तो मैं मेमोराइज करने की कोशिश करूंगी. ठीक है, मैं लिख दूंगा आर्यन का दोस्त. मैं ठीक हूँ गौरव, तुम कैसे हो? लॉन्ग टाइम. मैं इस्तांबुल गई थी और कैपाडोकिया गई थी. मैंने एक्चुअली सोचा था मैं यूट्यूब के लिंक से तुम लोगों को कुछ फोटोज नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगी, ठीक है? और एक स्टूपिड वीडियो कम्युनिटी पे डाल दो ना मैम. हाँ, क्या कम्युनिटी पे पोस्ट कर सकते हो. वीडियोस आजकल पोस्ट कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, बट लाइक मैं कभी कभी, अभी जैसे मैं शादी पे गई थी किसी के, तो अर्चित ने मुझे बोला मैम फोटो वीडियो नहीं डालते. ऐसे मैंने कभी नहीं डाला है. वेरी रेयरली यू हैव सीन मी शेयर एनी फोटोग्राफ्स और वीडियोस और एनीथिंग. मुझे तो निकालना ही जान पे आता है. क्या? मुझे फोटोज खींचना ही जान पे आता है. क्या? हाँ, इवन आई एम नॉट लाइक दैट कि मैं सारा टाइम फोटोज ले रही हूँ, या खुद के तो मैं बहुत कम लेती हूँ. मेरे ज्यादातर ग्रुप फोटोज होते हैं. कभी कभी मुझे अच्छा लगा तो मैं सेल्फी ले लेती हूँ, बहुत मुश्किल से. मोस्टली इट्स अगर से मैं गाना सुन रही हूँ और मुझे गाना अच्छा लगा तो दैट वुड बी मोस्ट ऑफ इट. अच्छा, क्या लिखा है? गौरव ने लिखा आज तो आप ऑरेंज पेस्ट्री लग रहे हो. आई डोंट नो ऑरेंज कलर की पेस्ट्री होती है क्या इंडिया में? आई डोंट इवन नो दैट. Okay, sorry. King's Label, you're looking very pretty, ma'am. Thank you, King's Label. Ma'am, my name is Naveen. Thank you for your advice you give. Oh, okay. My pleasure. Okay, 1 minute. Sarin, तुम कहाँ हो? तुम आज आने वाले थे? Hello, ma'am. Stay healthy always. Thank you. Love the dress, Romil. Thank you, Romil, for your compliment. Hello, ma'am. You're superb, but couldn't get your appointment. ऐसा हो ही नहीं सकता.
please bump the message. Maybe I by mistake clicked unread and then it got read because I forget नहीं तो sometimes. मुझे भी मैं जब टेक्स्ट भी करता है। Please ignore me. I mean, मैंने please रिसेंटली mind. एक मिनट सौरभ, हाँ क्या कोई क्या कह रहा था, सॉरी बोलो। मैं कह रहा था, मैंने जब से मैम की स्टोरीज देखी लास्ट, पता नहीं जब देखी तभी मैम के स्टोरी में वही होता है कि डू नॉट मैसेज मी, आई एम आउटसाइड स्टेज। अरे पर फिर भी लोग मैसेज कर रहे थे। आई स्वेयर, आई नॉर्मली आई एम लाइक टू द पॉइंट, वन इज नॉट इवन 1.1. आई कैन नॉट टेल यू आफ्टर राइटिंग these stories also, why do you think I wrote it so many times? Because people kept bumping their message and calling me during my trip. तो मैं मुझे टेक्स्ट करने बोल दिया करो, मैं आई कैन मेक अ नोट कहाँ ऑफ। टेक्स्ट करेगा किसको? आई कैन नॉट डाइवर्ज ना, कॉन्फिडेंशियलिटी का फिर पॉइंट ही नहीं रहा नहीं है। जस्ट लाइक आई कैन टेक द अपॉइंटमेंट्स ना, like नहीं, you so that see, they don't disturb you. I no, can like take the names down and then जब भी आप वापस आते हो then I हाँ, give you कि हाँ ये लोगों को अपॉइंटमेंट चाहिए। okay. So नहीं, this happened even when I was the busiest that I could be. Remember when I did the podcast with Shweta, हाँ I used to get like 50 to 60 DMs per day. Not kidding you all. Okay. अच्छा, do you have someone to manage the Even this then, thing? Mridhu, Kanaya all told me, ma'am, we'll take the appointments for you. You give it to her. नहीं, अगर से see वो जो बात होती है ना, इतना मुश्किल से मैंने Confidentiality. ट्रस्ट बिल्ड किया है। एक इंसान ने नेम लीक कर दिया, सपोज इट्स नॉट दैट आई डोंट ट्रस्ट यू, बट दे ट्रस्ट मी। I get it. हाउ दे डोंट नो यू, आई कैन नॉट टेक दिस रिस्क ऑफ देम, एंड देन नोबडी विल कनेक्ट विद मी। दे विल थिंक करके नहीं मैम फॉरवर्ड कर रही है, मैम अगर से किसी रॉन्ग बंदे को मैंने बोल दिया ये काम करने के लिए, और यू मिसयूज द इंफॉर्मेशन। सो आई रादर टेक माई टाइम। हाँ, इतना भी मेरा नाम नहीं हुआ है कि मैं अपना काम नहीं हैंडल कर सकती। आई स्टिल कैन मैनेज। मैम ऐसा होता है क्या कभी, लाइक अभी लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास डेली 15 to 20 डीएम्स आते होंगे, लेट अस अज्यूम, एंड हर एक वॉइस नोट में सबके प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होते, यू हैव टू कीप अप विद द कन्वर्सेशन एटलीस्ट फॉर 15 मिनट। तो आपको कैसा पता होता है कि हाँ अब इसका रिप्लाई दे, अब ये रिप्लाई करेगा, फिर आप रिप्लाई करोगे, वो मेंटेन कैसे कर पाते हो आप, फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन? हाँ, तो पहले तो आई नेवर टेक मोर देन कपल ऑफ कॉन्वर्सेशंस एट अ टाइम। वन, टू, आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई हैव रिप्लाइड, and if they are very very important cases, they are put in my general. I know there is two ना, primary and general. So जो flagged होते हैं वो general में चले जाते हैं, जो ऑलरेडी आंसर्ड एंड क्लियर्ड होते हैं वो मैं छोड़ देती हूँ। रिप्लाई किया तो किया, ऑफकोर्स मुझे मस्ती कम नहीं होती है, ठीक है। तो जब किसी ने मुझे अगर से बोला ना ओके, तो मैं बोलती यू मीन थैंक यू मैम, राइट? अब देख इतना काम है मेरे को, हाँ बहुत काम है, बट मैं ये बात नहीं कभी छोड़ती। बोलती थैंक यू बोल के जाओ, भले अनफॉलो करो, बट एटिकेट होना चाहिए। तुमको किसी ने टाइम निकाल के मदद किया है, यू आर फीलिंग गुड, यू आर फीलिंग रिलैक्स, एंड यू से ओ फाइनली आई गेट इट। सो अभी आज एक फनी कॉन्वर्सेशन हुआ, सो दिस पर्सन रोट टू मी क्वाइट अ बिट, सो आई रिप्लाइड बाय 7 वॉइस नोट्स, ओके। आई फिनिश दैट एंड ही सेड हाँ ओ ओके समझा, राइट? I'm guessing he's listening. Don't worry, I'm not telling your problem, I'm not taking your name, I'm just explain, I'm having some fun over here. So he says हाँ ओके समझा, and something else he wrote कि अच्छा ऐसा है, और मैंने कॉन्वर्सेशन छोड़ दी, उसने भी कॉन्वर्सेशन छोड़ दिया। अब पर मेरे को याद आया कि इसको मैंने तो रिप्लाई किया था, राइट? पर इसने तो हाँ ओके समझा के बाद कुछ थैंक यू नहीं बोला। तो मैंने उसको लिखा ऐसा, हाँ ओके समझा मतलब हाँ ओके थैंक यू मैम। तो बोलता है करके, पर मुझे लगा आप रिप्लाई करोगी ऐसे, बट साथ मैंने वॉइस नोट्स भेजे, नहीं बोला आई अंडरस्टूड, सो आई अज्यूम्ड यू अंडरस्टूड एंड द टॉपिक इज ओवर। So ऐसा भी होता है, लाइक मैं उसको आपको से गिव अ विंक एंड आई एम स्माइलिंग, आई एम नॉट डांटोइंग देम, मैं बहुत प्यार से बोलती हूँ। I'll put a smiley emoji, like don't forget. Like the other day, there's this guy. He's been with me almost since I began my Insta, right? YouTube Insta career, like career का पैसा नहीं बनाए, career भी नहीं बोल सकते, but ठीक है जो भी मैं कर रही हूँ. So he's been with me since that time, right? तो उसने मुझे थैंक यू नहीं बोला, तो मैंने बोला करके यू मीन थैंक यू मैम, राइट? ये कल की बात है, ये आज की बात थी, वो कल की बात थी। तो मैंने बोला यू मीन थैंक यू, राइट? सो ही सेड करके आई डिडंट वांट टू साउंड लाइक आई एम बटरिंग यू। I said, करो, क्या प्रॉब्लम है, करो करो बटर भाई। पहले तो एटिकेट आया बट
बटर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं इतनी स्वीट हूँ तो ऑब्वियसली बटर तो खत्म होने ही वाला है, जस्ट किडिंग। हाँ, बटर इज सॉल्टी ना। हाँ, क्योंकि मैं इतनी स्वीट हूँ तो मैच होना चाहिए। तो इट वाज रियली हिलेरियस, सो आई वाज लाइक, तो ही सेड नहीं नहीं, नाउ आई गॉट व्हाट यू आर सेइंग। आई सेड एटिकेट अपनी जगह, बटरिंग अपने जगह। तुम अगर से मेरे बर्थडे पे कार्ड बनाते हो या गाना गाते हो या व्हाटएवर, आई स्टिल डोंट कॉल इट बटरिंग। आई थिंक इट्स सच अ स्वीट जेस्चर। उससे ज्यादा सारन का है, उसने तो आज बोला था आएगा, पता नहीं उसका गाना, मैंने उसको बोला म्यूजिक टोन डाउन करो, तो गुस्सा तो नहीं हो गया मेरे से तो। मैम ब्रेथलेस बाकी है इस बार। हाँ, उसने काफी अच्छा गाया था ना। आई नो, सारे मैं खुद तुम गाओ, प्रैक्टिस एक कर रहा तुम्हारी था। बात हो रही है। आरा भी, AR अभिषेक, हाय अभिषेक, जो भी मुझे हाय लिख रहा है मैं उनका ही नाम लूंगी, इतना नाम लेते लेते मैं थक जाती हूँ। ओके, रूपल सेज मैम आई लाइक व्हाट यू डू, कैन यू प्लीज टेल हाउ टू बी अ काउंसलर। ओके, पहले तो अगर से तुम साइकोलॉजी कॉलेज में ले रहे हो, फिलोसफी एंड साइकोलॉजी कभी कभी दो स्ट्रीम्स हो सकते हैं, उसको डिवाइड किया जा सकता है जैसे मैंने किया था, क्योंकि मेरे रुया कॉलेज में फुल साइकोलॉजी नहीं था, और माय डैड डिड वांट मी टू गो टू अ वेरी फार अप कॉलेज इन बांद्रा, सो इन रामनारायण रुया कॉलेज दे वर एट दैट टाइम, आई डोंट नो व्हाट इट इज राइट नाउ। तो एक बार तुमने वो किया, देन यू हैव टू डिसाइड, तुम अगर से PCM या तुम साइंस से आए हो, तुम साइकेट्रिस्ट बन सकते हो, तुम साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हो, वो ज्यादा साइंस रिलेटेड है, तुमको ब्रेन के बारे में सीखना पड़ता है, मेडिसिन के बारे में सीखना पड़ता है। तो पहले डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है, ठीक है। डू यू वांट टू बी अ काउंसलर और डू यू वांट टू बी अ लाइफ कोच? अभी आई नो सम पीपल विल स्नैप एट मी व्हेन आई से बीइंग अ लाइफ कोच इज इजियर, बट लाइफ कोच के डिग्रीज नहीं होते, लाइफ कोच के ज्यादा डिप्लोमास होते हैं। यू कैन बी अ करियर लाइफ कोच, यू कैन बी अ हैप्पीनेस लाइफ कोचिंग, वो अलग होता है। क्यों अलग होता है? उसमें इतना साइकोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होता। उसमें तुम्हारा जैसे एक करियर काउंसलर, जो करियर लाइफ कोच होता है, प्रोफेशनल लाइफ कोच होता है, वो तुम्हें डे टू डे तुम्हारा स्केड्यूलिंग ये वो तुम्हें लेट्स से सपोर्ट करता है, या आपका if you are having some dilemmas, he'll help you, he or she will help you with that. Now counseling में बहुत बथेरे बथेरे स्ट्रीम्स हो सकते हैं। तुम काउंसलिंग अगर से लेते हो, तुम क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी अगर से मिक्स करना चाहते हो, जैसे मैंने किया, वो कर सकते हो। मैंने फिर ऊपर से CBT किया, आप वो कर सकते हो। DBT अलग है, CBT अलग है। तुमको अगर से साइकोथेरेपी करना है, वो अलग है, उसका कोर्स मैंने अलग किया। ये सारे मैंने अलग अलग कोर्सेज किए थे। फिर मैं ग्रुप काउंसलर बनी ड्यूरिंग कोविड। आई डिड द कोचिंग फ्रॉम द अमेरिकन ग्रुप साइकोथेरेपी एसोसिएशन। वो बहुत लंबा और बहुत एक्सपेंसिव कोर्स होता है, तो वो किया। मैं सिंगापुर गई थी क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी सीखने के लिए। सो ऐसे बहुत सारे एक्लिप्टिक अप्रोच होते हैं। कोई लोगोथेरेपी सीखता है, कोई सिर्फ चाइल्ड काउंसलर बनना चाहता है, या आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो। सो हर चीज का पढ़ाई अलग होता है, हर चीज का पैसा और टाइम अलग लगता है। आपको इंडिया में क्या चल रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ाई नहीं की, मैंने मिक्स कर दिया, क्योंकि मुझे चांस नहीं मिला था। एज मोस्ट ऑफ यू नो, आई डिडंट हैव द ग्रेटेस्ट ऑफ चाइल्डहुड, सो आई स्टडीड मच लेटर। and if you have a chance, but always remember, many of you all tell me ki, I know you people get very carried away looking at people like Shweta, like Prakhar, and quite a few of them who sit on YouTube and help you out through psychology, right? But do you all know, many of them after some time they have to either, if you remember Vedant ke podcast mein bhi ye baat hui thi, it is not a career which pays a lot in India, being a counselor or a life coach, unless you're in maybe tier 1 cities or something like that, where the pay grade is good, and of course you have a lot of experience, you managed to crack it. And जैसे जैसे कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट का कैसे नाम आता है बॉम्बे में, अगर से नाम लो तो ये लोग आ जाते हैं। जैसे वो डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट का रुजुता देवितकर या व्हाटएवर हर नेम इज, जैसे नाम आता है, शी इज मेड सच अ नेम फॉर हरसेल्फ, राइट? सर्टेन पीपल मेक अ गुड नेम. Now to reach that level, it will take you a long time. So you need to obviously make sure that you got a proper degree, come out of a proper college, so your placement is good, work in a hospital or a school or whatever, right? So there is a lot involved, and you have to make sure ki, see, yes, it's good to help people. It's good if you can use your, your EQ and your empathy in the right direction. Having said that, many of you all don't do that. Why? Because तुम लोग पे इतना प्रेशर पड़ता है, माँ बाप बोलते हैं यार साइकोलॉजी लोगे तो पैसा क्या कमाओगे। उनका पॉइंट भी एक तरह से सही है, क्योंकि अभी तक
जैसे यूएस में या यूरोप में मैं जो 1 घंटा चार्ज करती हूँ ना, आई वुड बी अ मिलियनर बाय नाउ, द काइंड ऑफ वर्क दैट आई डू। बट यहाँ पे जो मैं फ्री काम कर रही हूँ, या एशिया में जो होता है, बहुत कम जगह प्रॉपरली पेमेंट मिलती है। अगर से मैं बोलूँ, कुछ क्लाइंट जो जिनके पास पैसे नहीं होते, उन्होंने बोला मैम आपको पता है हमारे गांव में या हमारे नॉट गांव रियली टाउन में इट्स चार्जिंग 500 रुपीज पर आवर, समटाइम्स इट्स ओनली दैट मच। Do you think you can? Then if not, then you'll have to go to Bombay and the metro cities to actually make it. If you can, do it, but it's not going to be an easy thing. Maybe you can get your degree and work abroad. Like one of my friend's daughter has gone to Canada to further, and she's a criminal psychologist. So she wanted to go, sorry, forensic. So she's gone into that, or I don't know how much this is in India, कि इसका कितना पैसा आपको मिलता है कि नहीं, ठीक है? So just find out about that. I have 2 years bachelor's degree in counselling psychology. Okay. But blindfolded cannot lead the blindfolded, darling. Even if you are got 2 years, you cannot use just say that I have a degree. So No, I am doing you it. have to be sorted. Even I if you know started now. all the terms, and you know all the theories, and you know what Socrates said, you know everybody, Freud said this, and you know whatever. That's not really all. It's not just the education. You have to be pretty sorted and solid during your work hours. Like many of you know, I was like having a tough time in March and April, and I was literally, if you remember, I used to come to tears when I used to, so I stopped working at that time because I know that I was not sorted. I cannot be of help to anyone if my mental health is itself, quite, of course, I try to take the important cases, but most of the time I didn't work. So this is very important. Okay, next. Ma'am, I watched a video on malpractice in therapy industry. Can you please talk about it? What is the status in India? Because I've heard they start gossiping about people's problem behind the back. And also there is a situation where the video that said that someone from the government can come and ask for your details, and therapist is legally bound to provide the data. Don't think, see, I don't live in India, so I don't know, but I know this much. You have to get proper court say orders for your paperwork to be released, and only when you are a criminal or something, they will, if they know that somebody is in dire danger or need or something, only then. Second of all, malpractice in therapy industry. Okay, so तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा लॉयर, तुम्हारा डॉक्टर, ओके, तुम्हारे फैमिली डॉक्टर, वो कहीं ना कहीं किसी से कर सकते हैं ना, सब करते नहीं, ठीक है? तो कुछ मैल प्रैक्टिस डॉक्टर्स भी कर सकते हैं, लॉयर्स कर सकते हैं, काउंसलर्स कर सकते हैं, टीचर्स कर सकते हैं। कितने बार हमारे टीचर्स अपने स्टाफ रूम में गॉसिप नहीं करते हमारे, वो पता है वो बच्चे ने वो किया, अरे उसको पता है, जैसे कुछ काउंसलर्स होते हैं स्कूल में, शायद वो भी करते हैं। सो नो फील्ड इज टोटली क्लीन एंड नो पर्सन इज टोटली गुड और बैड। थोड़े बैड ट्रेड्स होते होंगे उनमें, सो नॉट नेसेसरी होते होंगे मैल प्रैक्टिसेस, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होता है, पर इंडिया में कितना हो रहा है मुझे एक तो पता नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम काउंसलर्स नो हाउ टू कीप थिंग्स टू देम। कॉन्फिडेंशियलिटी हम लोग ब्रेक नहीं करते हैं। अगर से आपको ऐसा लगता है, मैंने तो कभी आज तक नहीं किया है, ठीक है? अगर से तुम लोग का इफ यू विल सी, व्हेनेवर आप लोग कुछ अच्छा लिखते हो, मैं उसका स्नैपशॉट लेती हूँ, आपको अगर से बताया नहीं बताया, कभी किसी का नाम आज तक, even when the person has abused me, I have never even taken that name. So आप लोगों को याद है, मेरे को 2-3 केसेस डिस्कॉर्ड में हुए थे जहां वो इंसान बहुत अपसेट हुआ था एंड he raided our डिस्कॉर्ड एंड ऑल दैट हुआ था। मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया, मुझे पता है उस इंसान का नाम, जो पता है उस इंसान, 2-3 जो लोग थे जिन्होंने मुझे तंग किया, मैंने फाइनली फाइंड आउट किया कौन थे, पर मैंने नहीं लिया। आई सेड लेट इट गो, लेट इट पास। सो ऐसा नहीं कि सब बुरे होते हैं, कभी कभी हर प्रोफेशन में गड़बड़ हो ही सकती है। हाँ बोलो, बोलना चाहते हैं। अगर 2 काउंसलर्स आप कोई केस डिस्कस कर रहे हैं, आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरीली मैल प्रैक्टिस। लाइक 2 डॉक्टर्स अगर कोई केस डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे में विदाउट लीकिंग एनी डिटेल्स, I don't think उसमें कोई गलत बात है। No, I'll tell you what. Yeah, this is not called malpractice. Now I'll tell you what happened. Okay, so when I was doing the group psychotherapy thing, we had to talk about our cases. Also, if you all don't know, we have to take supervision hours. Okay, so when you're taking those hours,
you are discussing the difficult cases which burn you out, right? So it's not, we're not taking your name, we don't know your full address, we don't know. मैं तो वैसे ही फोन नंबर किसी का नहीं लेती, मेरा खुद का ना देती हूँ, बहुत कम लोगों को, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं जिनके पास मेरा नंबर है, बट अदर देन दैट तुम लोग को मालूम है मैं नंबर भी शेयर नहीं करती, तो तुम लोग का नंबर भी मेरे पास होगा यार, मोस्ट ऑफ अस, हमको क्या लेना देना, क्या मिलेगा तुम लोगों का नाम हमको किसी को, अनलेस आप मर्डरर, स्मगलर, कुछ कंट्री के लिए टेररिस्ट या कुछ ऐसे हो तो शायद हम ऐसा कुछ करें, बट अदरवाइज हम ऐसा नहीं करते, तो लेट्स नॉट इवन गो देयर. Okay, so Rupal, I think we went on length on this topic. Please make sessions with Shweta Bhai. Shweta Bhai seems to be very busy because he's rarely posting on YouTube, which he just started, or sometimes on Insta, so he goes through this whole thing. मुझे माफ करो, वो बहुत busy है, but we will try to contact him one more time end of this year. Otherwise, तुम लोग प्लीज उसको लिखो, मुझे लिखना बंद करो, मैंने कभी ना नहीं कहा है इस बात के लिए, मैं सबके साथ except barring few, I will do podcast with everyone. Okay, who else is there? Swati is live, looking so beautiful, ma'am, as usual. So happy to see you. How have I been? I have been very good, and Istanbul treated me very well, and I treated Istanbul even better by pumping the economy by shopping. Okay, which sometimes I think I overdid it, but it's okay. Hota hai. And hi, oh my God, there's a lot of new people. I have never read your name before, but great analogy. Hope people understand this. Thank you so much, Swati. Hi, Frozdin. How are you? Hi, Nikita. Hi, Mohit. Hi, Namaste, ma'am. Akshit Rawat. सारे मैं यहाँ हूँ. पर यहाँ हो तुम, यहाँ क्यों नहीं हो Zoom पे? Okay. आज क्या हो गया मैम? कमेंट्स कैसे हटाए? यहाँ पे नहीं हटा सकते ना इंस्टा पे? No, you cannot delete. You can only delete on YouTube or in Zoom. Neha Gilor, you're very supportive and helping. Thank you so much, Neha. Gunjan. Hi, Gunjan. Kaise ho? Long time. GLBTPO. Okay. I'm good. Sorry, I can't even read your thing. Aisha. Hi, Cho. Hi, Aisha. Kaise ho? My beautiful, gorgeous lady. Thank you, Aisha. So Aisha and I met in Turkey for the shadi. By the way, I'm soon meeting Vishal tomorrow. And sorry, I read your "Main Hoon Yahan, Reho Wahan." Deepak, I'm good. How are you, ma'am? Does it not affect your mental health too, listening to problems and negativity of so many people? Okay, so one, you cannot, since you are interested in being a counselor, you cannot be a counselor if you don't know how to switch off. Switch off happens with experience. Initially, आपको हर बात पे बुरा लगता है और हर बात पे रोना आता है, हर बात पे तुम्हारी एम्पैथी जाग जाती है, ठीक है? फिर धीरे धीरे ऐसा नहीं करके तुम फील नहीं करते हो, ऐसा नहीं करके तुम्हें बुरा नहीं लगता है, but you stop your personal side affecting too much of your professional side. Having said that, certain cases till date मुझे मेरे आंखें नम होती है जब कुछ सेक्सुअल असॉल्ट का आता है या इंसेस्ट का कोई केस आता है, जब someone is extremely suicidal या the parents are not treating them well, and or certain cases like मैं अभी बात करते भी रो सकती हूँ, so you know how emotional I am, right? So I try my level best not to let it flood my judgment and the way I'm conducting myself. And so it bothers. Yes, that's why we do supervision, because you burn out as a counselor all day, all night. You have to be available. Night छोड़ दो, sorry, मैंने 24 hours छोड़ दिया ये सब करना. मैं पहले करती थी कोविड के टाइम जब बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, अब मैं नहीं करती. तो what I have started doing is I keep work hours. After some time I stopped checking my Insta because you're never there fully. Since I've come back, yesterday I went for a movie. My children were like, "Can you put your phone down?" I'm like, वैसे भी मूवी मुझे बोर हो रहा था, right? तो I'm like, forget it. मुझे बहुत सारी emails करने थे. Like जिनको पता है, जिनको मैं I keep the email address and I send you all the resources. I said, चलो ये तो कर सकते हैं, because you cannot reply to clients and all that without being. There should be shanti around you. You have to focus on what they're saying and everything. So yes, it affects your mindset. Yes, you can get over it. And yes, there will be always certain things which will bother you.
अदरवाइज तुम इंसान कैसे हुए अगर से तुम एम्पैथी ना दिखाओ या सैड ना फील करो किसी के लिए. लाइक देयर सो मेनी केसेस व्हिच स्टिल नो, even though it's been 2 years, I still remember that case where this boy got electrocuted and he lost his left hand and left leg. And I still can't, like, yeah, so it's tough. It's not easy being a counselor. It's like doctors. आप देखते हो ना वो इतने सारे सर्जरीज करते हैं, इतना कुछ, आपको लगता है कि डॉक्टर में बेडसाइड मैनर्स ही नहीं है, वो हमारे लिए कुछ नहीं. बट क्योंकि धीरे धीरे आपको स्ट्रांग होना पड़ता है. आप हर बात पे हर केस पे रोने लग जाओगे, डॉक्टर कैसे बनोगे? आप कैसे उनको ऑपरेट कैसे करोगे, उनको ट्रीट कैसे करोगे? सो यस, यू हैव टू बी केयरफुल. And when you realize you're burning out, like I realized I was burning out, so I reduced my cases. Simple. You reduce and you start taking more care of your mental health. Simple as that. Okay. I'm good, Neha. How are you? Okay. मैं अब तुम्हारा क्या? मैं अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ, मैं जवाब में हूँ, मैं सवालों में हूँ. देखती हो जो दिल में तो हैरान हो क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की आवाज में. कुछ ज्यादा नहीं हो गया सारे भी? तुझे सिर्फ मैंने पूछा तूने why have you not come to sing your song? Because last time, if you remember, all of them requested you to sing the Shankar Mahadevan wala Breathless. एंड तुमने इतनी म्यूजिक लगा दी थी तो हमको सुना ही नहीं दिया था. सेकेंड टाइम जब तुमने गाना गाने लगे तो तुम थक गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नॉट एन इजी सॉन्ग. हम उसलिए पूछ रहे थे, आप मुझे माफ कीजिए, मेरे दिल में ये सब क्या हो रहा है भगवान जाने. ये क्या नए कमेंट्स नहीं हटा सकते, इट्स कूल. क्या कमेंट क्या था मुझे तो पता ही नहीं. व्हाई वेटिंग फ्रेजल्ड, नोबडी हैज सो मच टिल यू डोंट कीप टेलिंग ना. नाउ आई हैव टू स्क्रॉल बैक जस्ट टू चेक व्हाट इज ही कमेंटेड. Remember, people do not pay so much attention till you bring that topic into attention. कि देखो अरे क्या हुआ, like let's say इधर एक stain लगा है, I'm going about my thing, but if I mention it 3 times, stain, you look at that stain only. Although stain nahi hai, I think by now people are imagining your stain. So see how our brain works. Okay, I have a question, ma'am. Go ahead. रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटीज एंड मेल ईगो को कैसे हैंडल करें? तो ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है. एक तो सेकंड, आपने बिल्कुल डिटेल ये नहीं दी कि आपकी उम्र क्या है. तीसरा, आपका पहला रिलेशनशिप है या नहीं, क्योंकि नॉर्मली जनरली जब आपका फर्स्ट रिलेशनशिप होता है सबसे ज्यादा इमोशनल हम हुए तभी होते हैं, क्योंकि हमने 0 एक्सपीरियंस से स्टार्ट किया होता है. हमको नहीं पता कि सामने वाला किसके साथ कैसे बिहेव करना है, और उनको अच्छा लगेगा कि नहीं. हमारी इनसिक्योरिटी तो सबके साथ होती है. सबसे प्रिटीएस्ट और सबसे हैंडसम या सबसे नॉलेजेबल, सबको इनसिक्योरिटीज होती है. ऐसा कोई नहीं है जिनको सेल्फ डाउट नहीं होता. अगर से कोई आपको ऐसा कहता है तो वो आपको डैश बना रहा है. ठीक है, तो हाँ. सो उसको डील करने के लिए पहले तो आप मुझे डीएम कीजिए. ठीक है, मुझे फाइंड आउट करना है आपको इनसिक्योरिटी क्यों हो रही है. क्योंकि आपका सेल्फ वर्थ लो है कि आपको सच में किसी पॉइंट पे. ओके, so what am I trying to say? I'll try to clarify a little bit and then we'll take it in the DM in case you want to know more. So what happens? Let's assume, okay, let's assume somebody, I'm just taking a general case. Let's assume it's me, okay, and I am, let's call me 20 kgs heavier, okay, and the girls around me are, say, smaller in frame and thinner than me. Fit and unfit, ma'am. Better. Fitter is the right word. Sorry, they are fitter than me, and I'm not fit because बात मोटा पे और पतले की नहीं हो रही. बात fit or unfit. I'm not fit. I cannot climb. I get out of breath and whatever. I have problem in my back and blah blah. So now I have a boyfriend. Okay, so the boyfriend is like, he's okay with my size, but it's my own view of myself that I'm not being able to handle. So therefore, if he ever compliments someone else, it's to do with my insecurities. It's not that he doesn't love me or something like that. So you have to work on yourself. So you have to see कि तुम्हारा क्या वो insecurity तुम्हारे में सच में है कि तुमने मन घड़त कुछ बनाया है और एक्चुअली तुमको कोई इशू नहीं है, तुम्हारा सेल्फ वर्थ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट यूर possessive about that person.
ओके कि तुम्हारी इनसिक्योरिटी को भी फिक्स करना होगा, और तुमको ये याद रखना है वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है. व्हेन यू आर विद समवन यू हैव टू रिमेम्बर, तुम्हारा गाय भैंस बकरी चारा खिलाने के लिए नहीं आए वो इंसान, राइट? आप उसको इंसान की तरह ट्रीट करोगे, आप उसको उतना फ्रीडम दोगे कि उसको पिंजरे में बंद करके नहीं रखोगे क्योंकि तुम इनसिक्योर हो या तुम बहुत ज्यादा पॉसेसिव हो, तुमको लगता है यू ओन दिस पर्सन. सो यू हैव टू डिफरेंशिएट व्हाट इज इट ईगो or is it the person actually making you feel like shit? So therefore you feel very insecure about yourself. If my boyfriend would keep saying you're so fat, you're so fat, you're so fat, then even if I'm not, let's say I'm this size and my boyfriend keeps calling me fat, चाहे अच्छा लगे ना लगे, I'll start thinking from that angle, right? कि अरे maybe I'm really fat. So this is what I'm trying to say. Is it coming from outside? Is it coming from inside? Or both the worlds are colliding? Where are your insecurities stemming from? What do you mean when you say कि your male ego? जब generally male ego तब आता है जब जो मैंने lately cases देखे हैं उनकी बात करते हैं हम लोग कि you know क्या सॉरी मैं ये पढ़ने लगी. सो लेटली ऐसा होता है कि मेल जब आप लड़कियों से बात करते हैं, लेट्स से लड़का लड़कियों से बात कर रहे हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर अगर से तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कोई गाय फ्रेंड्स है आप लोगों को इनसिक्योरिटी होने लग जाती. अगर से वो ज्यादा बफ्ड अप है, ओके मे बी आप भी कहीं आपके 3 पैक उसके में भी 5 है, ठीक है, आपको इनसिक्योरिटी हो रही है क्योंकि आपको लगता है वो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे और 2 पैक हो जाते तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव समझती. पर आप लोग कोर इशू देखते ही नहीं है कि वो 6, 8, 20 पैक बनाने के बाद भी इफ यू आर अ एसहोल, सॉरी एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, बट इफ यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, you don't give time, you don't make efforts, you don't nurture and nourish the relationship, you take the person for granted, then either which ways the relationship is not going to work. Now having said that, when I say that nurture, nourish the relationship, make sure that you do things together, it doesn't mean 24/7. Too much of anything is bad, so you have to understand the person सामने वाले को, you have to meet midway. ऐसा नहीं करके तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो और वो बेजार हो जाए, तुम बहुत कम कर रहे हो वो बेजार हो, तो वो बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट. सो इफ इन केस, क्योंकि तुमने मुझे 2 सेंटेंसेस भी नहीं लिखे हैं, एक सेंटेंस में पूरा कंप्लीट कर दिया अपना प्रॉब्लम. आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू डाइसेक्ट and try to tell you the different scenarios that could be. In case I have missed out something and you need some more help and perspective, please DM me on Insta, but please इंतजार कीजिए, आपका क्वेश्चन कतार में है क्योंकि मैडम रचना थोड़ी सी व्यस्त है, ठीक है. अच्छा क्या लिखा है तुम लोगों ने? मैम इफ माय फ्रेंड्स इज नहीं आर, जब फ्रेंड्स लिखते हैं आर मतलब प्लूरल हो गया तो आर. ओके इफ माय फ्रेंड इज वन सिंगुलर, if my friends are opening up in front of us, you mean they're sharing their problems, and he says he's facing mental health issues, should I tell him, her, provide, he is no position to pay because we are students, telling them just here feels like I'm brushing off my responsibility as friend. Okay, one, I don't charge, you can always give my link, because just now somebody from my team said that he read somebody's story and he felt that she needs help but she's camouflaging it, sometimes it happens. So I said yes, you can ask them, are they doing fine, but unsolicited advice मतलब क्या, मतलब बिना पूछे अगर से आप कोई किसी को एडवाइस देते हो, generally they will brush it aside, they will not want you to help them, right? तो जब तक आपको कोई पूछे ना, चुप. But having said that, if it's your friend, however, फ्रेंड्स के साथ हमारा एक अलग डायनामिक होता है, हमको पता होता है उनको तकलीफ हो रही है, वो दुखी लग रहे हैं, तो yes, as a friend you should support, you should ask क्या हुआ, try to be a good listener, don't say I told you so, don't say oh I feel so sorry for you, I feel so bad for you, अरे 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 अरे, ज्यादा पिटी नहीं करना है क्योंकि टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड. फ्रेंडशिप्स में जब आप ज्यादा उनको पिटी करते हैं, एक तो वो सेल्फ पिटी मोड में भी चले जा सकते हैं, दूसरा उनको गुस्सा भी आ सकता है. बहुत सारे लोग, अगर से आपने कुछ पढ़ा होगा कि many people who are experiencing hardships in their life, generally they don't share, you know why? Because people go through this whole thing,
feeling sorry for them. So don't over the top feel sorry for them. Say, I want to be there for you. What may I do for you? Would you want me to just listen to you, or would you want me to give you my perspective on this? Ask these two simple questions. So if the person says, I just want you to listen to me, it's a very difficult thing, I know, to listen and shut your mouth, right? Because हम तो पूरा ज्ञान के पतीले हैं, right? All us humans, हमको बिना पूछे भी कोई, हम इंडियंस तो ज्ञान में तो नंबर 1, राइट? तो resist the urge to give gyan. Okay, then make sure you listen to the person and say, okay, I understand. No, sorry, you cannot understand. Say, I can imagine what you're going through. Now I said that because generally, no matter what we are experiencing in life, we cannot totally understand what somebody is experiencing. So I say, I can imagine what you're experiencing and let me know if I can be there. Sometimes you don't need to give them gyan. They already know what is right and wrong or what they should be doing. Other thing, what you can do, you can take them out for a movie, you can take them for a walk, you can send them some food that they enjoy to eat and like that. ठीक है? और therapist के पास भेजना है तो कोई बात नहीं है. कुछ चीजें आप खुद बच्चे हो, राइट? आप लोग खुद इतने छोटे हो, आप कैसे किसी की मदद कर सकते हो फुल्ली? आप एक थेरेपिस्ट का काम नहीं कर सकते, राइट? तो इट इज ओके, थोड़ा मदद करो और थोड़ा दोस्तों को बोलो कि कनेक्ट विद एनी थेरेपिस्ट दैट यू नो, इंक्लूडिंग मी. ओके ओके, तो अर्नम लाइक द फूड कॉन्सेप्ट. थैंक यू. एक सेकेंड ना, पहले I know YouTube, you're going to kill me. I'm reading all Zoom questions and Insta questions. Please give me 2 minutes. Bella King. Am I audible? Yes. Who's talking? Sorry. Ma'am, Advitya. Huh? Advitya. Advitya, बहुत खराब आ रहा है बेटा आपका सिग्नल. मेरा ही कान खराब है आर्यन की, इसका सिग्नल ठीक नहीं आ रहा है. नहीं इसी का इशू है. और आपका भी थोड़ा बहुत इशू हुआ था बीच में. हाँ, तो वो होता रहेगा, पता नहीं, सब लोग घर में यूज कर रहे हैं, मेरा इंस्टा भी चल रहा है. ओके, हाय मिस्टर रोहन, हाय ओरिजिनल गणेश, I'll come in sometime. Yes, Arshi beta, that's okay. Hi Kapil, hi SKR, hi Sana, how are you? Long time we have not partied together. Hi Kapil Sharma. वो पीछे कौन से भगवान है? मैं एक बात कहूँ, आप माँ सरस्वती का अवतार हो. थैंक यू. पहले तो वो गणेश जी है, आपको बेटर यूट्यूब जूम वाले विंडो से नजर आएगा बेटा. that's a beautiful compliment, but I don't think I come close, but thank you so much. Hi Neil Shukla, how are you? I am good. Kapil, would like to know your take on how to filter out toxic people in our life, like how to know which are the red flags. It's hard to when they are near ones. So my people pleasing video is quite good, I think. So one, you don't want to be that, so watch that. And बेस्ट वे, अगर कोई टॉक्सिक है निकाल दो लाइफ से, और कोई ऑप्शन नहीं. मेरा थोड़ा सा अलग व्यू है. विथ माय केस द वे आई डिड. तुम्हारा अलग है, वो नियर वन बोल रहा है, वो तुम्हारा एक तरफा प्यार. आई एम सॉरी, नो आई एम जस्ट सेइंग दैट जा ही नहीं रहे, ऐसे रख के फायदा नहीं है. वो रिलेटिव्स की बात कर रहा है बेटा, अलग ही बात होगी. ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आई थिंक द टॉक्सिक वर्ड इज जस्ट थ्रोन लाइक दिस, लाइक सबको टॉक्सिक बुलाओ, थोड़ा भी गड़बड़ करो, थोड़ा भी वो आपको कुछ बोले, उनको तुमने टॉक्सिक लेबल कर दिए. टॉक्सिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग टर्म है, तो सबको ऐसे रैंडमली एड्रेस करो. वन, अगर से वो आपके रिलेटिव्स है और आपके पेरेंट्स का अभी भी उनके साथ रिलेशनशिप है, या आपके सिबलिंग्स का, या आपके फैमिली कनेक्ट है, यू सेड दे आर न्यू वंस, राइट? So maximum you can avoid them on certain occasions, but I do not, unless they are like super bitter, they're nagging you all the time, they're passing sarcastic comments in front of everyone, they're insulting the shit out of you, and you're really feeling miserable being around them, then yes, then complete cut off. But other than that, learn how to give back, learn how to smile in front of them. There are many people who piss the shit out of me. What do? I don't cut them off. I smile in front of them. I behave like I don't give up. Okay, so you need to become that strong. You cannot, अरे ऐसा करने लगे ना कि हर इंसान हमको इरिटेट करता है, हम उसको कट, ऐसा थोड़ी होता है. देखो, मैं जैसा हमेशा कहती हूँ,
हम में भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, राइट? There's some people who don't like us also. Can you imagine? Some people don't like me. That was very funny, but actually it's true. So that's okay. I've learned to live with it. So like that, you will also not like some people. Some people will not like us. It's completely okay. They come from a different mindset. Some already kind of have a preconceived notion about you. Sometimes you just come across a little more intimidating or harsh, or sometimes even we are on not the greatest behavior. It's possible that they don't like us. So उसमें बुरा क्या है? आप भी किसी को ना पसंद कर सकते हो, पर कंप्लीटली किसी को कट ऑफ नहीं करते. मुझे नहीं लगता कि हर इंसान को अपने लाइफ से निकालना चाहिए. उनके साथ इंटरेक्शन कम करो, अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ स्ट्रॉन्ग करो, और go around. Even I say hello to the people who are horrible with people with me. Okay, like I just did it like 3 weeks back. Someone who was bitching behind my back, and I know, and I yet hugged that person. I said, doesn't matter. You don't change your core. You stay good. And finally, they'll see it. If they don't see it, it's still fine. You don't have to sit proving your worth to every Tom, Dick, and Harry. You cannot cut off everyone. I think in my entire life, I must have cut off maybe one odd person in so many years of my life. Can you imagine? If they are like really, really. But even then, if they come to me, na, I'll just smile and I'm like, chal, koi baat nahi. So ऐसा cool रहो यार, short life है, इतना over reaction नहीं करते. ठीक है? ओके. और काफी लोग आज. हाय ऑफिशियल शिवम गुप्ता. हाय तनवीर, कैसे हो? Good evening. I replied to you. Can you give me some tips to become a fluent speaker in English? Official Shivam. Okay. So there is no quick fix कि मैंने तुमको अभी बोल दिया और तुम्हारी कल इंग्लिश तुम शशि थरूर जैसे बात करने लग जाओगे, राइट? ऐसा कभी नहीं होता. इसको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए होता है हर लैंग्वेज में, स्पेशली इफ इट इज नॉट योर लेट्स से योर like I think in English. Okay. Because when I was growing up, both my parents used to speak more English and Hindi. So वो natural हम लोग का तरीका ही हो गया, और प्लस कॉन्वेंट से आए थे तो हम ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं. उस दिन मैंने कुछ मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि बाय द वे, इन केस यू ऑल नो, कि स्टार्विंग वर्ड यूज नहीं करते, इज पॉलिटिकली इनकरेक्ट. सो यू से you're famished or you're hungry, क्योंकि एक्चुअल स्टार्वेशन बहुत सारे कंट्रीज में हो रहे हैं. तो सो मैं हमेशा अपने बच्चे के सामने बोलती हूँ, आई एम सो famished. So he's like, why do you use such words? You know? So ऐसे आज भी मैंने एक नया वर्ड सीखा जो मुझे याद नहीं आ रहा है. तो मैं जब भी मैं कुछ नया वर्ड सीखती हूँ ना, तो मैं उसको नोट्स में डालती हूँ. फिर मैं आज मेरा फर्स्ट टाइम था वो वर्ड मैंने पढ़ा था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है उसको डाल देते हैं और सीखते हैं. तो ऐसे ही सीखते हैं. ज्यादा इंग्लिश मूवीज देखो, सीरियल्स देखो, यूट्यूब वीडियोस देखो, केक जैसे एप्स डाउनलोड करो जहाँ they say something, you speak after it, you switch on the video, read Times of India or whatever, whichever country, or newspaper निकालो उसको you पढ़ो. I know it will be cringe at first watching yourself speak, but that's one of the best ways to actually learn. When you hear yourself talk, you know when you're mispronouncing a word. Many a times my own children correct me. Why? Because मेरी डिक्शन, मेरा प्रोनाउंसिएशन ब्रिटिश जमाने का है, और ये आजकल के अमेरिकन बच्चे, why are you saying it this way? I'm like, हे भगवान. तो सबको खुश नहीं कर सकते हम, फिर भी धीरे धीरे आप सीख सकते हो. एवरी डे एटलीस्ट 30 मिनट्स दिन का निकालो ये सब करने के लिए. सुनो, पढ़ो. You know, when you're even going for a walk, you can start. मैंने बहुत सारे लोग इंग्लिश म्यूजिक सुनना स्टार्ट कर देते. प्लीज अपना देसी म्यूजिक मत भूलो. हम इंडियंस हैं, इंडियन म्यूजिक भी पसंद करो. जरूरी नहीं करके सिर्फ इंग्लिश सॉन्ग्स अच्छे होते. These are small टिप्स. ऐसे कुछ ये नहीं है. Above all, practice. If any of your friends speak English, okay, even Discord has my Discord has a channel. Somebody is talking to you when I'm talking, please mute yourself. So Discord में हमारा जो channel है उसको I think we have English something, we have named it, I forgot, Shy, or I can't remember, one of the channels. You can actually ask people, anybody wants to speak to me, anyone wants to practice, please go ahead and practice with that person. ठीक है?
Who is talking? Aryan, I can hear you. Better mute yourself. No, someone has said try saying a word, and I was saying that word. What is that word? Who wrote? Where? Pneumono ultra microscopic. Acha, ruko. 21 messages in Silicovolcanium. Zoom. Wait. My God, I've not even checked YouTube. Oh, Balaji, thank you, darling. तू काहे खामगा मैं पैसा डाल रहा है यार? Don't. I feel very bad when you do it. What am I doing that you need to? I don't. It's okay. Thank you so much. Yeah, you're very sweet. You always very. Sorry, my darlings. YouTube वाले, I know I have not replied to any of you all. अच्छा, अभी सिर्फ YouTube के comments, ना Zoom के, ना Insta के. Okay? या इतना मैम इतना दिमाग लगाने की क्या जिससे बनती है उसी से रिलेशनशिप बनाओ, वरना मत बनाओ. लोग बस फोमो में रिलेशनशिप बनाते हैं. ये किसकी बात कर रहे हैं तुम? छोटी आई थिंक वो क्वेश्चन जो ईगो वाला था, ये बोलना बहुत इजी है ना तुषार कि लोग फोमो में बहुत लोग करते हैं. आई डोंट डिनाई इट क्योंकि आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इज लाइक इन थिंग. बट हर रिलेशनशिप के डायनामिक्स को रिजॉल्व करने के लिए तुम्हारा you have to, for the compatibility factor to come, you will have teething problems. You're going to go through those ups and downs, and you're going to have fights and misunderstandings and making up and all that. It's part and parcel. How will you get to know someone if you don't talk to them, right? Okay, Akshat, ma'am, I'm 25. Almost every one of my friends is getting married. I feel left out. Abhi hum wohi reply kar rahe the. I believe I'm not ready as I'm not 25. Wants to get married at 25? यार लड़कियां भी आजकल 25 में शादी नहीं करती. कहां से अक्षित तुमको किसने फोर्स किया इतना जल्दी शादी करने की? सॉरी, मेरे हिसाब से जल्दी. Anybody thinks it's not जल्दी? Me. Okay, so Aryan also thinks like that. I think 25 is too early. My mom got married at 17. अरे that नहीं and generation girls का अलग था. आजकल लड़कियां भी 25 में नहीं करती यार. मेरे सारे कितने फ्रेंड्स के बच्चे हैं जो 28 30 पास कर चुके हैं. लड़कियां की बात हो रही है. yeah, my own sister. Yeah. So, but I mean, I guess 25, 26 is like okay. For girls, yes. But by 26, what guy has a solid career? Girls का इसलिए होता है क्योंकि first 2 years of your marriage, you're like getting the hang of it. Then you have your childbearing years. Most of them want to have children by 30 or something like that, right? Women का समझ में आता है because there's a clock ticking. And in case you don't read the research, it's not like if people don't have kids at 40 or something. A lot of women have started having kids after 40. But there are also a lot of health risks associated with that. It's easier to have a child earlier and to raise them. So that is one of the reasons. But if his career is not set, why would he want to get married? I mean, it's so... Unless you get a woman who's also working, one. 2, you already have enough capital from your family, let's say, 1 minute, and you have then you have something called a bank balance of your family, since you don't have. Okay, why did I say this? Because what if, even if your wife is working and you have a child the first year, suppose accidental pregnancy हो गई, तो पहले तो मॉर्निंग सिकनेस में 2-3 महीने चले जाते, फिर 7वें महीने से वो वॉक करना, ऑफिस जाना, वापस आना, उसके बाद बच्चा पैदा होता है, बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना है, कौन देखेगा? जब तक वो वापस ऑफिस जाती है आपको टाइम लगेगा ना. तो फिर पैसे बच्चे के लिए कहाँ से आएंगे? आपको मालूम है आज मेरे हिसाब से. मैम बट आजकल like in order to not have the kid, there's so many ways. ना contraceptive pills हो गए, you have your protection, you have abortion and all. And I mean, marriage doesn't have to be like a deal breaker, right? Career and marriage can go hand in hand. Of course it can. Marriage is more like just tying the knot with someone you love, rather than जो जैसे लोग देखते हैं ना, burden, एक responsibility. I think it's just making your love permanent and announcing it to the world that yes, this is the person I want to spend my life with. And that's all. It does not happen. क्या? Sorry? Somebody else is talking? Sakib, are you saying something? So, I agree with you on this point. Yes, marriage should be so beautiful and, you want to be with this person.
so-called forever, which not necessarily happen. But I am talking about anything can happen in life. You have to have enough money to sustain. If you don't have money to sustain yourself and your parents, let's say your parents are also retired, adding one more family member, let's assume they are one of those traditional mindset, jahan the women doesn't work. Then what happens? Just Then because she's not friends are getting married doesn't mean he needs to get married. Right? So अपने टाइम पे चलो, जब आपको सही लगता है तब शादी करो. You don't want to sit down and say, why the hell did I get married? I'm so unhappy. And then you'll make your partner unhappy. So don't do it because others are doing it. Right? Do it because you want to do it, because you think you are ready, you are financially, क्योंकि एक हेल्थ का स्केयर या एक बार तुमको कुछ हो जाता है, सर्जरी हो, जैसे मैं जब मेरी शादी हुई थी, इनिशियली इन द फर्स्ट ईयर ओनली आई वाज वेरी सिक, मेरी सर्जरी करनी पड़ी थी. आई रिमेम्बर आई वेंट थ्रू अ बायोप्सी एंड ऑल. फिर मेरा 2-3 साल में मेरा नी का सर्जरी हुआ. अभी thankfully my dad at that time dad was there, but then my dad was not there. Then we had to figure out how to pay for all that. I was newly married, my husband was still very young. Of course, he was 29 plus, so he had money at that time. It was not that bad. But I'm just saying, you cannot predict such things. Na? So for that, always have some bank balance. ताकि अगर से कुछ ऊपर नीचे हो जाए, अगर से आपको लगता है आपका करियर सेट नहीं है, तो आप रोका सेरेमनी भी कर सकते हो. गेट टू नो द पर्सन. शादी को भी आप 1-2 साल लगा सकते हो ना. Basically, like have a plan. Don't rush into things. Exactly. That's the main point. Exactly. And somebody wrote, can you tell me methods to control my OCD? I cannot afford therapy. 1, I am not an OCD specialist. 2, I can give you resources for OCD. Depends on the type of OCD you have. So connect with me, DM me, give me your email address. But as I said, please wait. This is for Soham Dhuri, who has written to me. Shivam Dave, nice to see you here. तुषार, वही होता है मेल ईगो, बट गर्ल्स को समझ नहीं आता, ज्यादा वोक बनती है. यार ऐसा मत बात करो, ज्यादा वोक बनती है. तुम लोग कौन से कम हो? तो लड़का लड़की आजकल तुम लोग को पता नहीं क्या है, लड़की भी चाहिए कि टिकट भी करोगे उनके बारे में. तो बेटा होता है, अभी वो भी यंग है, वो भी, इट टेक्स टाइम फॉर पीपल टू मैच्योर एंड टू बी सॉर्टेड, राइट? डेट ही मत करो ये एज पे, अगर इतना तो कोई है. हाँ. सो क्या है, माय गॉड, तुषार और हे भगवान, इतने मैसेजेस कहाँ से आ गए? एक मिनट. तुषार एंड हु इज दिस? उसके ऊपर तुषार एंड अक्षित, आई थिंक तुम दोनों एक दूसरे के बीच में कॉन्वर्सेशन कर रहे हो. इंसेस्ट रिलेशनशिप के बारे में बताइए, क्या सही है? ओके, पहले तो लेट्स एड्रेस द रिलीजन फैक्टर हियर. Okay, I have heard that certain religions are okay with being married to their brothers. Now, which brother? We are talking about cousin brothers. We are not talking about, I don't think any religion, correct me if I'm wrong, allows you to marry your own brother. No. Right. Even in those religions, it's like someone who you don't share a parent with. Yeah. So basically, you need to make sure that you're not. There is scientific research enough. You look at certain communities where you have thalassemia and all of that, क्योंकि तुम अपने ही फैमिली में शादी करते हो, तो चाहे वो तुम्हारा कजन ब्रदर, अगर से वो ब्लड रिलेटिव है, इट इज नॉट हेल्दी फॉर योर चाइल्ड. दैट्स व्हाई जनरली इट इज सेड कि अपने फैमिली के अंदर इवन इफ इट इज योर कजन नहीं करते हैं. ओके, नाउ डिफॉर्मिटीज होते हैं बच्चे में. नाउ बेचारे बच्चे को क्यों तुम इतना 8 बिलियन की पॉपुलेशन, तुम अपने 20-30 कजन काहे नहीं छोड़ सकते? मेरे को तो लॉजिक समझ में ही नहीं आया है. चलो ठीक है, अभी एक वो पॉइंट है. नाउ ये सबको थोड़ा सा अलग रखते हुए, रिलीजन को अलग रखते हुए, लेट्स गो टू आवर इंडियन कल्चरल एशियन माइंडसेट. नाउ लाइक आई सेड, जब आप सेक्सुअल फीलिंग्स अपने फैमिली के लिए लेके आते हो, आप क्या करते हो? आप अपने नहीं, नॉट ओनली हमारा जो कल्चरल व्यू पॉइंट को इफेक्ट होता है, उसको थोड़ा दूर रखते हैं. अपने जो मॉरल्स और फैमिली वैल्यूज जो होते हैं, उसको तुम पूरी तरह से बिगाड़ देते हो. वो बैलेंस निकल जाता है. क्यों? क्योंकि इमेजिन कीजिए, अभी अगर से हमने अलाउ किया कि a father-daughter relationship or a brother and sister relationship or the mother and son relationship, as soon as the baby is born,
what do you think if it is a girl child? I'm sorry if anybody finds this too, it's a trigger warning for all of you all. Today I'm going to khul ke talk about this topic because I think many of you all contact me because of these incestuous feelings that you all have. Why? Because you're watching shit porn. Porn वालों को कुछ फर्क नहीं पड़ता आप लोग अपने फैमिली के किस फैमिली मेंबर के बारे में गंद सोच रहे हो. नाउ अगर से एक बच्चा पैदा होता है, चाहे वो एक अगर से एक लड़का पैदा होता है और उसकी बहन की नजर उस पे आ जाती है, अब माँ की जाती है, व्हाट स्टॉप्स फ्रॉम द फादर फ्रॉम डूइंग दैट, राइट? हाउ इज द चाइल्ड सेफ? जब आप किसी फैमिली में पैदा होते हो, आप इस फीलिंग से पैदा करते हो बच्चे को, और वो बच्चा तुम्हारे लाइफ में इसलिए आता है क्योंकि वो बच्चा सेफ और सिक्योर फील करना चाहता है. इमेजिन उसको बचपन से कोई अगर से सेक्सुअली, किसी को अगर से पता है कि यार वैसे ही उसको सेक्सुअली हमको हाथ लगाना है, तो फिर व्हाट स्टॉप्स देम फ्रॉम डूइंग सिंस चाइल्डहुड? जो कुछ बच्चों के साथ होता है, आपने देखा है, अपने केसेस भी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप लोगों के. किसी छोटे बच्चे को कोई बुजुर्ग आदमी गंदी तरह से, एक लड़की हो या लड़का, व्हाट स्टॉप्स एनीबडी? Then, if we don't have boundaries, if we don't respect our mothers and fathers, कोई ये नहीं कहता, आई नो बहुत सारे रिलीजन में ये कहते हैं कि माँ बाप को भगवान समान समझो. ठीक है, भगवान समान मत समझो, मेरे को भगवान ज्यादा परफेक्ट होंगे माँ बाप से. बट दीज पेरेंट्स, लाइक माई चाइल्ड, इट्स माई लाइफ, राइट? Cannot even in the wildest of dreams think that my children or I have such feelings. You want to protect your child from this dirty, shitty world because the world outside is so fucked up. If you meet most girls, you will hear from them that they have been sexually touched sometime or the other since they were kids. Now imagine if it starts even in the house. हम लड़कियां जाएंगी कहाँ, हम लड़के कहाँ जाएंगे? लोगों को लगता है कि लड़कों को सेक्सुअली मोलेस्ट नहीं किया जाता है, बहुत सारे करते हैं, बट लड़के कम बोलते हैं इसके बारे में. क्यों? अगेन द मेल थिंग. अरे लड़के को भी टच कर सकते हैं? नहीं, ये झूठ बोलता हूँ. अरे मुझे किसी ने टच किया, मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ? मैं तो लड़का हूँ, मैंने तो स्ट्रांग होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता. सिर्फ लड़कियों के साथ. सॉरी, that's the usual thought that comes to boys' minds ki I don't matter, I'm a guy. Yeah, I'm a guy. I cannot cry, I cannot say I'm weak. It was my fault if someone touched me. And same thing applies to girls. When they are touched, we grow up, and I'm talking about myself also. When some fucking neighbor touches you inappropriately, I don't know how many of you all experience when somebody brushes against you also, you feel violated. So imagine if you feel violated from the time you are damn born, in that family who is supposed to protect you, from the brother who's supposed to love you, who's supposed to take care of you, from that father, from that mother, you want your एक 4-5 लोगों की, वो जो अपना न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हो, थोड़े दूर नहीं जाते, इतना सा अपना छोटा सा प्यारा सा फैमिली होता है, हम उनको नहीं छोड़ सकते. अभी 8 बिलियन पॉपुलेशन हो गई, चलो हम निकाल देते हैं कुछ जेंडर्स को, कुछ nationalities को, फिर भी आपके पास इतने choices हैं. आप लोग, why are you fantasizing your sisters and your mothers and your fathers and your brothers? Man, the way it destroys families, It does. And just one small incident can destroy the whole childhood for that child. And not just that, for every child in the house, it can destroy the whole family dynamic, and it can destroy any chance of, bonding or whatever that child can have. Right. I got this case, which I was just telling you all about this thing. So he was addicted to porn. Not taking your name, I'm sure anyways it was a fake name, but it happens to, I've seen these cases many times. So he was into porn. All of you all, please, even if you want to watch porn, watch simple basic porn if that gives you a kick. Do not go into incest wala porn. Do not go into bestiality. Do not go into cuckolding and threesomes and fucking foursomes and all that shit. Please stop. वो फैंटेसी तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगी. मेरे पास इनफ केसेस आए हैं जहाँ ऐसा हुआ है, जो लोग नजरें नहीं मिला सकते अपने फैमिली मेंबर्स से, क्योंकि जब आप ऐसा, अभी जो केस की बात कर रहे हो, उसने अपने बड़ी बहन को नहाते हुए देखा,
लास्ट वीक जो केस आया था उसने अपने माँ को ट्राई किया टच करना, क्योंकि वो पॉर्न देख रहा था, क्योंकि पॉर्न में ये सब शिट कन्वीनियंट है, ये सब दिखाते हैं, पर क्या ये सही है? नहीं. I would never want you all to go so low. लोग कुत्ता बिल्ली ब्रेनलेस जानवर तो नहीं है ना हम लोग, हमारे पास इतना अच्छा ब्रेन है, हम इतने अच्छे लोग बन सकते हैं, हम में कितना पोटेंशियल है इंसान, क्यों हम अपने फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? और किसी ने इफ यू पीपल नो, मेरा और शताब का इस बात पे एक मैंने मैसेज आया था और हमने इस बात पे डिस्कस किया था, जिसमें लोगों ने कहा शताब का पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा था और मैम का इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा था। तो किसी ने आई थिंक डे बिफोर लिखा कि इनसे सही बात है, अब मुझे ट्रिगर करने के लिए लिखा कि वो एक्चुअली बिलीव करता है, क्योंकि इट्स पॉसिबल कि आप लोग पॉर्न देखते देखते आप लोग का दिमाग इतना सड़ चुका है, क्योंकि सड़े हुए चीज को राइट और रॉन्ग समझ में नहीं आता है। तो आज आप लोगों ने मुझे बोला है इंसिस्ट पे पूरी तरह से बात करो, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, लेट योर फैमिली स्टे सीक्रेट, लेट द लव, द ब्यूटी दैट इज बिटवीन अ मदर एंड सन, अ फादर एंड डॉटर। आप लोगों ने इंडिया में भी केसेस देखे हैं जहां पे फादर ने डॉटर का रेप किया, ग्रैंडफादर ने डॉटर का रेप किया, आप लोगों के आंखों में आंसू नहीं आता है देखकर? इमेजिन अगर से आप होते तो यू आर हेल्पलेस, can't do fucking shit about it. You remember that case once I made a video where this girl was molested by her own cousin mama and she told her parents and they didn't even take her side. So where does it stop? I mean, if your family doesn't protect you, who is going to protect you when you're so young? Then you will grow up to think that it is normal to be touched like this. It is not. Consent is important, especially when you're young. If you remember, I recently made a post saying good touch, bad touch, but it's not called that anymore, by the way. It's called safe, unsafe touch. Why? Because sometimes when a person is being touched, it is possible your physiological reaction comes into play. It's not that you're fucking enjoying it, but you cannot help it. I know a case where this boy was molested by someone senior in the family, and he didn't want to feel the erection, but he did, because he didn't want to, but it's a physiological side effect, let's say, and he couldn't deal with it. He's like, what the fuck, I didn't want it. He tried his level best, but he was very young. He was in 14. So this is the reason I'm telling you, तुम लोगों के लिए मैंने इतने सारे पॉडकास्ट किए, पॉर्न एडिक्शन पे फ्रैंक के साथ, वो डिफरेंट न्यूरोलॉजिस्ट थी उनके साथ किया था, सिड वॉरियर के साथ भी ये बात हुई थी, शताब के साथ भी ये बात हुई। क्यों लगता है तुमको, क्या लगता है हम लोग आप लोग के दुश्मन है क्या? इसलिए आप लोग बोल रहे मत देखो, हम लोग को क्या जाता है, देख लो, करो अपनी जिंदगी बर्बाद। और ये जो लोग बोल रहे हैं ना इंसेस्ट इज फाइन, और ये ब्रदर सिस्टर का शिट जो चल रहा है आप लोगों के बीच में, ये आज का टाइम और डेट याद रखो, आप लोग एक दूसरे से नजर नहीं मिला पाओगे। आप लोग जब बड़े होंगे ना, आप लोगों को खुद पे गुस्सा आएगा, खुद की नजरें नीची हो जाएंगी, क्योंकि तुमको अभी जो सही लग रहा है ना, not necessarily when you grow up you will realize that the society there must be something why everybody says this is wrong, whether legally तो wrong है ही, everybody knows it's not legal to be married within the family unless you're a दूर का मामा, not related, and some religions as they allow cousins, and वो अलग बात, हम उस केस की बात कर ही नहीं रहे। So please, all of you, watch good content, follow good people, and don't destroy your life. It's possible that what if by mistake तुम cousins के बीच में, चलो let's say कि family में allowed नहीं है और cousins के बीच में कुछ हो रहा है और वो by mistake pregnant हो जाती है। आप लोगों को पता है, मैंने ये भी कवर किया है, जहाँ पे इतने ऐसे, किसने उस दिन पोस्ट किया था, किसी ने लिखा था किसिंग से भी क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं? I'm like, wow, in the generation of internet, somebody is actually asking this question. You're that lost that you don't know whether you're going to get pregnant or not. So please don't take such risks. Not only you put your body at risk, you put your mind, your families, your values, your principles at risk. ना ध्यान रखो यार, porn industry को कुछ फर्क नहीं पड़ता,
आप क्या कचरा देख रहे हो, आप क्या अपनी जिंदगी कर रहे हो। अभी कल वाला एक मैसेज, मैम प्लीज हेल्प मी, आई स्वेयर दिस इज द एग्जैक्ट मैसेज, मैम प्लीज हेल्प मी, आई हैव डिस्ट्रॉयड माय लाइफ masturbating. You have to take care of your career, you have to take care of your family, you have to take care of yourself. You don't want to become an animal. Nobody says don't have sex, nobody's saying don't masturbate, nobody's saying keep totally cut off porn, but be careful, it's a slippery slope. Watch it, just be careful. I love you all, that's why I keep telling. मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर से तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर, तो उनको ही मदद करती हूँ जो अपने आप को मदद करना चाहते हैं. सो अपने फैमिली का ध्यान रखो, एक फैमिली है, अगर से इसको ब्यूटीफुल बना सको, व्हाई नॉट. You have the rest of the world to have sex with, I guess. No kids, no family members. Consent is above all. Okay? So don't become shitty. हमारी बहुत बुरी एज है, like I'm 19, right? So the even with consent, obviously, यहाँ पे the age of women that, or rather girls, I'll say, it's like 17 से 20 के बीच में. Now technically, if the girl is like 17, that's a minor, right? Yeah. But I'm 19. So I mean, when you see it, 2 साल का difference is okay, right? हाँ. But वैसे it becomes like so hectic. Then you will be charged with rape. Rape. By the Even way, though it was all of with you who consent. don't know, जो younger girlfriends बना रहे हैं भाई लोग, जरा संभालना, आप लोग जेल जा सकते हो. Even if it's with consent, it is considered as rape committed by the boy. Exactly. मतलब हम innocent होके भी guilty. नहीं, आप इनोसेंट नहीं. अभी रिसेंटली एक केस आया था और इसने मुझे यही क्वेश्चन पूछा था. उसका इतना 2 साल का एज गैप नहीं था, इसका ज्यादा बड़ा था. तो मैंने उसको बोला, व्हाट इफ द गर्ल डिसाइड्स वन फाइन डे, बिकॉज दे आर स्टिल यंग, राइट, brains are not developed, she might want to have sex at that time, but she might regret it later. Then your entire life you're fucked. I'm talking about the cases जहाँ पे both the male and the female, और जो भी दो लोग हैं, they are of the same exact age, and उसमें भी अगर पता चलता है ना, the girl is seen as the victim and the guy is said as a rapist. You're saying if they're above 18, right? Or you're still talking about two minors? Below 18 and same age. Below 18. So both are below 18? Both are below 18, both are 17. No, but even then, if two minors are having sex, I don't think you can go to jail unless the girl says that you raped her. No, ma'am. Law में ऐसा है that if both are 17, then लड़के पे rape charges लगते हैं. अगर से उसने complain किया तो ना? नहीं, complaint की जरूरत नहीं. Even if it's revealed that there are two minors. अपने घर कोई lawyer है क्या? मेरी माँ lawyer है, मैं उसी से बात कर, वही एक चीज देख के बोल रहा हूँ. अपना कौन lawyer? एक lawyer था ना अपने Discord में. I would love to. हाँ कोई. Now that's unfair. Like that is like so triggering. So everybody above 18 only have sex with a girl who's above 18 and be above 18. I think that's. मैं तो दूर रहता हूँ मैम. You know my past. मैं दूर रहता हूँ. Yeah, but the thing is, I know many youngsters who are doing it from 15, 16. So. Yeah, I started young too. Yeah, like, so I almost every other case that comes to me, ma'am, my girlfriend is pregnant. Now what should I do? So पहले क्यों नहीं सोचा? And बहुत get pregnant so young, you can like die at childbirth, right? That's why they say teenage pregnancies are very scary. Because your body is not developed. पुराने ज़माने की अलग बात थी, पर अभी I'm talking if they go to any place to get an abortion and all that, छुप छुप के ये सब करते हैं. Please अपनी life बर्बाद मत करो, किसी को hurt मत करो, अपना भी ध्यान रखो. और ये टॉपिक से हम आगे बढ़ते हुए सारिम को हम वेलकम करते हैं. Finally he is here. Sarim, would you like to sing a song because I'm tired of talking? You know, ma'am, that's why I always keep protection in my wallet. Always. No risks. By the never. way, did you watch the Friends episode where it is only 99 or 98%? Yeah, I know. I remember. Joey like pulls out a whole. So be careful. Okay. Methods use करते हैं.
Okay, ma'am, many times we say that if people leave me, it doesn't matter. If nobody loves me, it doesn't matter. But when we are really in that situation, it really matters. Who told you this? That it doesn't matter. Of course it matters. We are human beings. We are social animals. We want to be liked. We want validation. We want people to like us. But yes, not everybody can like us. So there is no other solution but to bite the bullet when somebody doesn't like you. And you learn to live with them not liking you. And it's a process. It's not easy to come to that. Because not everybody at the same time is going to dislike you, right? कुछ एक आध इंसान के साथ आपको डिसलाइक होगी, या लेट्स से आपको और आर्यन का केस सिमिलर, राइट? आप दोनों का क्रश कोई और है और आपको रिटर्न में वो नहीं मिल रहा है. हम ये टॉपिक भगवान ही जाने मैंने कितने बार ये टॉपिक कवर किया है, ठीक है? तो आई एम गोइंग टू I just got a text from her ex. वाज दैट? I just got a text from her ex. ओ से नहीं, we are starting like an NGO together. तो उसके रिगार्डिंग था. अच्छा, तुझे कोई और नहीं मिला? एक्स के साथ ही काम करना, उसके एक्स के साथ? और अगर से वो करंट हो हम गया दोनों ने एक दूसरे को हेल्प किया to get her out of our minds and now we are great friends. ओके, हाय मोहित भाटिया, तुम अभी भी इधर हो तो हाय. आई एम सॉरी इफ आई डिडंट रीड योर मैसेज अर्लियर. आई एम सो सॉरी बिकॉज हम कुछ एकदम डीप कॉन्वर्सेशन में चले गए. आई होप नॉट एवरीबडी इज ट्रिगर्ड, बट इवन इफ यू आर, इट इज ओके. इट इज द टॉपिक ऑफ दिस करंट जनरेशन. If you do not address it, if you do not learn about it, how will you help the future generation? So it's okay. Yeah. So I replied to Gaurav, it's okay. You will be fine. Work on yourself. Stop overthinking. Stop looking down on yourself. Start. I know सब लोग बोलते हैं self-love, self-love. It is true. You have to like yourself enough that whether someone likes you or not, you should know कि मुझ में कुछ qualities हैं. And it's not that they don't. I think it's more a compatibility issue. I keep talking about that because you're not a bad person. Not everybody dislikes us, right? You're just not compatible, and the person didn't perhaps find you compatible with them. So they said, I don't think anybody said, I don't like you. You're a bad person. You're such a sweetheart. So I don't think, and so is Aryan. He's such a wonderful boy. So you all are good children. It's just that a person just didn't want to have a relationship with you. They were dumb. Simple. Yeah? They were stupid. No. नहीं मैम, मेरे केस में, just in my case. एक मिनट. So she didn't No, trust for not treating me properly, even as a friend. She was not a good human being per se with good traits of letting you down gently. That's what you're saying. Letting me down gently भी नहीं, even as a friend, you know, जो एक basic तरीका होता है ना, when there's someone doing so much, you need to at least like once in a while you ask them how they are. Like basic friendship. Right. He was very rude and used me. तो उसमें that's चलो ठीक है. So we'll give it to him. That, but ठीक है ना. Good riddance to. What is the quote? Good riddance to bad rubbish. Hello. Okay. So it's okay. कोई तो बोलने की कोशिश कर रहा है. Tej is trying to say something. कौन? Tej. तेज बोलिए बेटा. Okay, right. हेलो माइक टेस्टिंग. मेरी आवाज आ रही है? Yes bro, आ रही है. बोलो. मैम कुछ नहीं, बस छोटी सी चीज़ बोलनी थी, फिर मैं चला जाऊंगा. फिर तो थैंक यू. आई डोंट नो, अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं याद दिला देता हूँ. मैंने कुछ हफ्ते पहले आपको एक लंबा सा ईमेल लिखा था जिसके कि आपने वॉइस नोट भेजे थे. मैंने तभी बोला था आपकी डांट तो फायदेमंद थी. अच्छा. ओके. और बस वही था मैम. अब तो ये सब जैसे अभी मैं थोड़ा बहुत टॉपिक का सुना, वो जो आप डिस्कस कर रहे थे, तो ये अब तो ये सब सुन के थोड़ा मतलब थोड़ा सा डर तो लगता है कि भाई ये कि मैं किस चीज़ में मैंने टाइम बर्बाद कर दिया. तो अभी तो बस आपके रिसोर्सेज और एक यूं कह लीजिए एक अच्छा दोस्त मिल गया, एक इंजन मिल गया. वो भी मेरे को चीज़ें बताता रहता है कि तू भाई मेडिटेशन वगैरह कर दे. वरना आज के टाइम में कौन दोस्त मिलता है जो कि ऐसी चीज़ें बताता है. तो उसके भी करके आपके करके तो बस काम करने में लगे हुए हैं. बाकी ऊपर वाले ने जिससे मिलाना है ऊपर वाले पे छोड़ दिया अब तो बस. Yes. So all the best. I'm glad you're doing well, and I'm glad you found someone you can depend on a little bit. पर overuse नहीं करते friendship. हर चीज पे उसके कंधे पे रोगे वो छोड़ के भाग जाएगा. नहीं मैम, रोना तो छोड़ दिया. अब तो सीधा डायरी में लिख ही देते हैं.
Okay, good. So I'm good. I'm very happy कि आप journaling कर रहे हो. Very nice. हाँ मैम, चाहे एक ही लाइन लिखो लेकिन लिख लेते हैं, Okay, मतलब good. वही होता है। तो थैंक यू। अब मैं अनम्यूट हो रहा हूँ, अनम्यूट Okay, हो रहा ma'am, since we were on that topic, जी बोलिए. हाँ. अभी मेरा भी शो आ रहा है ना, एक्चुअली फॉर दैट शो आई रोट अ पोएम ऑन दिस टॉपिक लाइक मोलेस्टेशन, ग्रोपिंग. इस टॉपिक पे आई रोट अ पोएम. कुड आई? Wow. Oh, yeah, go ahead. Wow, a poem on molestation. Wow, that's interesting. इस बार मैं बहुत ही ज्यादा हेवी जा रहा हूँ. There's one on rape, there's one on अरे देवा molestation. परमेश्वरा. Okay, give me 1 second. आ रही हूँ. Go ahead, go ahead. Do you want me to highlight you? हाँ चलेगा. Do that. Okay, trigger warning, everyone. Poetry coming up for rape and molestation वाली poetry आ रही है और जिनका ट्रिगर नहीं होगा कोई. ऐसी लिखी कि ट्रिगर भी नहीं होगा बट एट द सेम टाइम मैसेज ऐसा भी जरूरी पहुंचेगा. नहीं है. Some people are little more sensitive. If they have gone through it, it can trigger them. That's why a trigger warning. Yes, right. If you all don't want to watch it, it's okay. And I know I have quite a few questions. I'm not going anywhere. Hardly we have been here for 1.5 hours, so we'll reply to everyone. थोड़ा सा पेशेंस रखो. अगर से आपके पास पेशेंस नहीं है तो स्ट्रीम को फिर से देखा जाता है, यूट्यूब पे रखा जाएगा, नॉट ऑन इंस्टा, सो डू वॉच. Okay, 1 minute. Let me highlight, spotlight you also. Okay, Okay, should I start? go ahead. आज फिर बीच चौराहे पर हैवानियत का मंजर दिखा. दिन दहाड़े बेखौफ इंसानियत का कत्ल हुआ. वो चीखती रही मगर सुनने वाले बस पत्थर थे. वार हुआ उस पे बार बार, न रोका किसी ने. उस राक्षस को न खौफ कोई, न कोई उसमें पश्चाताप था. एक और मासूम आज खामोशियों का शिकार हुआ. बैठेगा ये देश चुप कब तक, अब तो जरा आवाज उठा. वो राक्षस घूमते बेखौफ चलते शान से, और जो बेगुनाह मासूम वो रहते सहमे सहमे से. अब तोड़ो ये चुप्पी और रोको इस अपराध को. तो मौत ऐसी उनको कापे सारा शरीर उसका. तो मौत ऐसी उनको कापे सारा शरीर उसका, जो सोचने की भी हिम्मत करे ऐसा घिनौना काम करने का, ऐसा घिनौना काम करने का. Wow, that was really good. You should maybe record it or share it as a post. I'll post it. That was really nice and touching. एक दूसरी है that I will send you. It's like a little bit. Okay, manifest dead. Manifest deed, sorry. Wow, sis looking hot and orange. Okay, thank you. Narangi, pastry. Hello, ma'am. Seeing you after a long time. I'm happy to see you too. YouTube people, please wait. I am taking questions from Insta. Just give me 2 seconds. Yeah. Hello, ma'am. Happy to see you. Just a blink. I'm happy to see you too. SS Verma, Shanichar. Style baby. Oh my god. Acha, please consider hello to everybody who has joined. I can't say मेरा हाथ दुख जाता है इंस्टा को स्क्रॉल करते करते. What if they are your close ones? That's why I replied to the same thing as a close one only. It's not easy to detach. Namaste delusional god. Oh, क्या नाम रखते हैं. मैं कैसे हूँ? मैं ठीक. आप कैसे हो? What to do when they are your parents? Parents के लिए specific resources, DM me, I will send it to you. ना easy नहीं होता parents के साथ deal करना. Jatin Soni, hi. Manjeet, ma'am, you're taking questions here or on YouTube? I'm taking it both in between interim and on Zoom. I'm taking it on 3 places. Only I don't like Insta because हाथ दुख जाता है ये दूर से, क्योंकि इतना नजदीक भी नहीं जा सकते ना Insta का. Ma'am, how to manage time? Wow. How to manage time? ये इतना सिंपल आंसर नहीं है, क्योंकि हम सबका हमारी पढ़ाई, हमारा करियर, हमारा काम बहुत अलग है. बट बिकॉज यू हैव नॉट टोल्ड मी पढ़ाई क्या कर रहे हो, काम क्या कर रहे हो, तुम्हारा पूरा दिन तुम कैसे यूज करते हो. But let me just in 2 or 3 lines just give you some. Let me switch off my fan first. मेरे को बीच में गर्मी लगती है, फिर मुझे ठंडी लगती है. बंद हो ना. So मैं फैन से बात कर रही थी. तो managing time, read up on something called SMART goals: specific, measurable, attainable, realistic, time-based goals. If you don't have it, contact me. I have time management wale resource.
And then you can read up something called 4 quadrants of time management. अब रही बात आपको डे में अगर से आप पढ़ाई करते हो या काम करते हो, लेट्स अज्यूम आप 8 घंटे पढ़ाई में डाल रहे हो, आपके पास फिर भी 16 घंटे बचते हैं। अब आप उसमें से 1 घंटा आपका लेट्स से जिम या योगा या पिलाटेस या कोई स्पोर्ट, you should make sure that you exercise. Then you have some bit of meditation. People think that you have to meditate for hours on end. You don't have to. You can meditate for some time, whether it is 5 minutes to 10 minutes. If you don't have that, please contact me. Then you have to make sure that you have, what was I trying to say? Wait, somebody is just disturbing me, so I cannot, my flow of thought is gone. Okay, so then you make sure you have time for your hobbies. Now, most of you all don't per se have a hobby lately, because I think everybody's got into gaming. Now, I want you all to at least have some musical instrument you can play, or take up painting, or take up, let's say, pottery, or something, that reading a book, joining a book club. Try to do something different with your life. Try to upgrade your skills. 1 hour spent for your skills. Whether it's your studies and your career, whatever stream that you have taken, use 1 hour for that. अगर से आपने 2-3 घंटे अपने पर्सनल हेल्थ को, तुम्हारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट और आपका थोड़ा बहुत करियर डेवलपमेंट के लिए अगर से आपने डाला, तो ऑटोमेटिकली आपका डे इज वेल यूज. सो आपको टाइम को मैनेज करना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप लोग इसको बनाते हो. आप लोग बहुत हुआ मन चाहते हो, लाइक यू हैव 24 आवर्स, यू सिट ऑन यूट्यूब एंड वॉच इट एंडलेसली, और इंस्टा का स्क्रॉल करते नहीं. सो दैट यू हैव टू गेट आउट ऑफ. यू हैव टू, there is a 5-second rule of science. If you people remember, I mentioned it in a couple of streams and my overthinking session, or one of the sessions. So you count backwards. 5, 4, 3, 2, 1. Switch off YouTube, Insta, get to what you are doing. Set an alarm, because if you don't, you will just endlessly waste your time. You don't want to do that. And but I'm not saying कि मत देखो, comedies देखना, content देखना is okay. ज़्यादा नहीं करना. Content consumption आपके brain के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता. Continuously बहुत सारा देखोगे, you will be lost. And as much as people tell you hustle, 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 I don't think it is a very wise thing. Don't take too much on your plate. वैसे भी जैसे बहुत सारे टैब्स जब ऑन रहते हैं कंप्यूटर पे, हमारा ध्यान भटक जाता है, राइट? सो अपने जिंदगी को भी एंजॉय करो. सारा टाइम पैसों के पीछे भागते रहोगे, थक जाओगे. पैसा चाहिए, nobody is saying that, of course we need money, but make sure that you learn to balance your personal and your professional life and your study life. किसी ने मुझे लिखा कि मैम मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा लास्ट रिलेशनशिप didn't work, and now I'm with someone new, but I'm going to start giving my exams, and what should I do? Do you think I'll be able to, manage time and on? I'm like, ऐसे करते हो जैसे तुमको, like कोई कंस्ट्रक्शन ड्यूटी पे लगा रखा है कि तुमको कुछ मट्टी डाल के बिल्डिंग खड़ा करना है. रिलेशनशिप को तुम लोग इतना हुआ बना के दे. तुम बैलेंस कर सकते हो, बट यंग रिलेशनशिप, जो यंग लोग रिलेशनशिप्स में जाते हैं, ब्रेकअप्स आर हार्ड फॉर एवरी एज ऑलमोस्ट, राइट? सो जब यंगर रहते और भी, बिकॉज योर ब्रेन इज नॉट फुली डेवलप्ड. सो मेक श्योर कि you balance your personal life, whether it's with your parents, whether it's with your friends, whether it's with your girlfriend, boyfriend, whatever. So make sure कि उनके लिए भी टाइम रखो, अपने लिए भी टाइम रखो. चाहे वो आप आपके पास पूरा दिन नहीं है. Who's watching me there also? Somebody is watching my YouTube also at the same time. So anyway, make sure कि आप सिर्फ इसको बैलेंस करोगे, you'll be fine. Make sure कि आप खाना ठीक से खा रहे हो, टाइम पे सो रहे हो, टाइम पे. कभी कभी टाइम पे नहीं सोना is fine, but all the time is not good. All nighters are not good. Drinking Red Bull with coffee, not a great idea. It can give you jitters if you have coffee, allergies, or you're sensitive to coffee, caffeine and all that. So be careful. I know time management में आप लोग projects इतने सारे डालते हो. Don't take too much. indigestion हो जाता है, और फिर वो जो stress होता है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा. आप लोग बहुत young हो. You don't know how sick you're going to get later with your high BPs, and some people get a lot of ailments
because of the stress they take. You know, Aryan has a heart problem. So he's 19. So stop taking more than you can handle. I understand that we have one life, बहुत कुछ करना है. पहले शांत होना सीखो, पीसफुल होना सीखो, अपना घोड़े की तरह भागते मत रहो किसी चीज के पीछे, मिल जाएगा. और सब कुछ नहीं मिलता सबको वैसे भी. So don't feel dejected. Oh, 89 messages on Zoom. Sorry, I'm getting like. Aryan, can you do me a favor? Only if there are questions, please repost. I can't read 89 messages. It's just too much for me. I'll do that. Okay. मैम डिस्कॉर्ड का लिंक का है सारे, तुझे तो पकड़ के मैं मारने वाली हूँ, ठीक है ना. अगर से तुम लोग को ये जो लोग मेरे को सालों से फॉलो कर रहे हैं. अरे मैं यही हूँ, सॉरी मैम मैं ना जूम और डिस्कॉर्ड में कंफ्यूज हो गया था. बट अभी मैं जूम में हूँ. हाँ, तुमको गाना गाना है? नहीं, अभी तो फिलहाल मैं दवाई बना रहा हूँ. तो मैं अभी इसके बाद गाऊंगा. म्यूट हो जाओ तुम. ओके, वाओ, देयर आर सो मेनी पीपल ऑन इंस्टा आल्सो. मैं क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ, बट हाय, ये कौन है? अर्शमन. तुम्हारा नाम बहुत डिफिकल्ट है, बट तुमने कुछ हार्ट डाला है मुझे, तो आई एम एक्नॉलेजिंग दैट. हाय निमित, हाय अभय, चीफ राहुल. वाओ, आई डोंट इवन नो हाउ मेनी ऑफ यू आर. I hope, Abhay, that's considered a compliment. Saying my vocab and my tone has changed. Okay. So, you know, hi Piyush, how are you? So the thing is like this. Depends on the topic. Depends how agitated I am. Depends on my mood. Depends on how excited I am. Let's say, अभी मुझे वो वीडियो लगानी थी. तुम अगर से मुझे रियल लाइफ में देखोगे ना, तो आई एम लाइक दिस वियर्ड पर्सन, राइट? आई एम ऑल आउट नट्स. I talk to pigeons and like, okay, so I'll tell you this. So I was in Istanbul, right? So we went to check out a palace, and जब हम पैलेस देखने गए तो बच्चों के साथ मैं मस्ती कर रही थी. अरे मेरे मुझे चक्कर आ रही है, ये वेपन्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है मैं इस पैलेस में रहती थी. You know, like my son is just looking at me. So I'll tell you what he said. So मैंने कहा, hi, I'm feeling really giddy and I think things are just coming back to me. And I'm thinking, I was like I should rule this place on a. So I said, oh my God, my head is so lightheaded. So my son said this to me. Are you sure it is not due to all the knowledge that they're giving you? That overboard तो नहीं हो गया आपके दिमाग पे, ज्यादा प्रेशर तो नहीं पड़ गया कि वो जो गाइड थी ना, कंटिन्यूसली वो बोलती जा रही थी, this one, that century, this sword, that. Imagine my son's. So I am very different, okay? In person, depends who the person is also matters a lot. If I'm in a formal setting, you'll see a different me. So हम सब में एक different facets होते हैं हमारे personality के. कुछ हमारे I can give values also. तुम लोग को लगता है कि I'm sitting so sophisticatedly and I dress up so trim and proper and tea and cookies वाला चल रहा है session. But नहीं, I can give अच्छा वाला हिंदी गाली. So depends. मैं इंडिया में हूँ, मैं किसके साथ बात कर रही हूँ, मेरा क्या रिलेशनशिप है उस इंसान के साथ. So ये सब चलता है. तो yes. ऐसे कुछ लोगों को भाग्य मिला है वो गालियां सुनने का. हाँ, कुछ जो बैठे हैं उन्होंने सुना है हमारी गालियां. हाय पीयूष, हाउ आर यू? ओके, हाय मोहित, हाय गौरी, हाय, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस योर नेम. क्या? आई एम डिबोश शर्मा. आई डोंट नो, इज इट शर्मा और आई डोंट नो. मैम, आई कांट मेक फ्रेंड्स. आई एम 23 राइट नाउ, बट आई स्टिल फाइंड इट हार्ड टू मेक फ्रेंड्स. ओके. Have you joined Aman Shukla's class? I would recommend to do that. First, go for your public speaking class and make sure that you get your self-worth fixed with my resource. 1, Aman Shukla class. 2, get on our Discord. 3, practice talking to other people. Don't take yourself so seriously. 5,
don't expect so much from the world. You think that all of them are out here to make like great friends. The greatest of friends leave you in a lurch. ऐसा भी होता है. तो आई नो कि आपकी जनरेशन में बहुत, तुमको क्या लगता है मेरा डिस्कॉर्ड स्टार्ट ही क्यों हुआ था? इसी प्रॉब्लम, ऐसे तुम लोग जैसे आए थे, मैम फ्रेंड्स नहीं बनते रियल लाइफ में, तो आओ हमारे डिस्कॉर्ड पे फ्रेंड्स बनाओ, और आप यू बी सरप्राइज्ड कि ऑनलाइन फ्रेंड्स भी इतने बुरे नहीं होते, और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करो. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, घर पे बैठ के ये एक्सपेक्ट मत करो कि दुनिया आपको आके एंटरटेन करेगी, आपके साथ दोस्ती करेगी. आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपको जिम, बुक क्लब्स, टेनिस, खो खो, कबड्डी, जो भी मन कर रहा है, कबड्डी, और क्या वो क्या लंगड़ी को क्या बोलते हैं, हॉपस्कॉच हम लोग इंडिया में बोलते थे. सब कुछ, सब ग्रुप ज्वाइन करो. जस्ट गो आउट देयर, start going out, start talking to people. Don't look for friends per se, look for connections. धीरे धीरे you might click with someone. Go do some charity work. बहुत तरीके हैं, बहुत सारे clubs हैं. आप, what is that club you work with, Aryan? What was it? The one the Pune one I was supposed to talk. That was this Road Rack. So these kind of places, there are lots of clubs for just for recreation, swimming. तुम लोग बाहर ही नहीं निकलते. आज भी किसी का कनाडा से कॉल आएगा, सेम चीज, लोनलीनेस, फ्रेंड्स नहीं बन रहे. Ma'am, can I speak? Yes, sure, go ahead. Yeah, ma'am, I'm actually outside India, and I would like to know, like, is there any online therapy like which I can get in touch with who are based in India? Because I like go through occasional depression and anxiety sometimes. 1 minute. पहले तो You're talking about pain बात or कर रहा है, मेरे को तो जस्ट का बात, कौन बात कर रहा था? This is Sakib. Who? Sakib. Sakib, you never contacted me, is it? No, ma'am. This is the first time I'm getting in touch with you. तो हम किस मर्ज की दवा है बेटे? तो पहले तो आप कांटेक्ट करो, ठीक है? और आप, I'll give you even contacts of junior counselors. You can even talk to them. They also work for free because of me. If you cannot afford it, that's not a problem. But having said that, if you're feeling whatever you're feeling, all of us, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप सबकी ये है कि आप लोगों को लो फील करने से आप लोग बहुत डरते हो. हम सब ऑकवर्ड फील करते हैं जब भी हमको इमोशंस फील करना होता है, डिस्कम्फर्ट फील करना होता है, हमको कोई हमसे बात नहीं कर रहा, हमें कोई पसंद नहीं कर रहा, हमारा ब्रेकअप हो गया है. तो दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. दे विल कम, दे विल गो. One, till you do not understand this core concept that you cannot always be happy. Once you fix that, then I will give you the other resources. Because this is one thing you need to work on. Mental health is not one thing. Mental health is an eclectic approach. आपको हर एंगल से अपने आप को रिजर्व, आप अगर से abroad रह रहे हैं, even more so. This my daughter studies in Canada. Today's even क्या बोलते हैं, client was from Canada. So जब हम उधर seasonal depression भी होता है, इतनी ठंडी होती है, sunlight नहीं होता, आपके supplements कम होते हैं, आपको vitamin deficiency हो सकती है, आप अपने family से दूर, you feel lost trying to make a new circle. So there are lots of reasons that you can go through this highs and lows. And without being, let's say, without being diagnosed, don't call your problem depression. Depression is pretty serious. You could be just going through a low phase of your life. Okay. To be diagnosed with clinical depression or any sort of depression, you have to go to a psychiatrist. Okay. Ma'am, I've been, I'm sorry to interrupt. Like, I've been feeling this. I feel like ever since I was a child, I have been feeling this. Like, I am 29 right now, but even when I was in what? 29. I'm 29. 20. Okay, huh? So yes, but ever since I was in school, I had been feeling like this. Maybe like I guess the main reason for which I think it's that I'm not intelligent enough. Like other people are very intelligent, but sometimes I feel depressed like for no reason. Even if I have a good job,
Okay, I am a network engineer, and the pay scale is also good. But my dad, actually, he is way more successful. He owns a good business, and since I'm in foreign, I'm forced to live with him. And I mean, he's also with me. I was born and brought up outside India. I'm in Gulf right now. So my mothers and my siblings have moved back to India, but I'm still with my dad. And I mean, I'm forced to live with him, even though I have my own job, but still I have to stay with him in a house. And this is one of the reasons. But you know, I feel depressed for many other reasons. This is not specific actually. So then I we think don't I know get what why. he's So saying. so my, yeah, I'm sorry, like I know that my explanation was not very clear, because you know, the reason for my depression is not just one specific. But uh, do you think like that this can be, because sometimes I feel depressed for no fucking reasons. So do you think that this can be like something, there's some problem in me, or I don't know, like sometimes I don't, I can't even think for a reason, like why am I depressed? First of all, I have few friends, but as I said, you know, I feel like I'm not intelligent enough. So that makes me feel depressed sometimes. Okay. So, पहले तो nothing is wrong with you as per se, because everything is wrong with all of us. Okay, something or the other you will find wrong with me, with him, with this one. So nobody is perfect. पहले ये concept of intelligent, perfection, ये आपको सीखना है, इसको हटाना. Okay, क्योंकि we all have issues. तुमको अगर से किसी ने बचपन से ब्रेन वॉश किया है ना, सोसाइटी ने, फैमिली में, डैड तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल है, तो वो तुम में कहीं ना कहीं घर कर बैठा है. तुमको इससे बाहर निकलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. तो इसके लिए हम प्राइवेट सेशन करेंगे, बिकॉज आई वांट टू नो मोर अबाउट यू. आई वांट टू नो अबाउट योर डे. आई वांट टू नो अबाउट द सप्लीमेंट्स यू टेक, व्हाट एक्सरसाइज यू डू, व्हाट आर योर हॉबीज, how do you spend your day, and how can we disconnect from your dad if you cannot physically, but a little bit more emotionally. So for that you have to increase your emotional intelligence. We need to see it from his angle, your angle, the world's angle. There's a lot. अभी तुम कह रहे हो कि तुमको अगर से बिना रीजन भी हो रहा है, आई वुड सजेस्ट पहले काउंसलिंग लो. ठीक है, अगर से वो रिजॉल्व नहीं होता है, then I will tell you to seek a psychiatrist. I don't think you should be seeking a psychiatrist at this moment, because I don't want you to go on medication just yet. I want you to try everything else. Even the best of psychiatrists tell you to exercise. How much exercise do you do weekly? I exercise not every day, but like 3 or 4 days a week whenever I get time, because I work in shifts. I have different shifts, and you know, that has ruined my. Oh, so one of the reasons could be your circadian rhythm is like fucked up. So when you go But through, even, yeah, I know, like, you know, my sleep pattern has I mean, the shift has ruined my sleep pattern. But even as I said, like, even when I was in school, I used to feel this. So this is not just that it's happening right now. Okay, my question is, like, if I take medicines, like, do they help? I don't know. जब तक आप रूट कॉज को सॉल्व नहीं करोगे, लेट्स अज्यूम तुमको डायबिटीज हुई, तुमने इंसुलिन लेना स्टार्ट किया, पर तुम मीठा भी खा रहे हो, तुम वॉक पे भी नहीं जा रहे हो, तुम अपना हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, क्या हेल्प होगा मेडिसिन? नो. तो मेंटल हेल्थ सिर्फ मेडिसिन से ठीक नहीं होता. मेंटल हेल्थ हमारे रूट कॉज को रिजॉल्व करने से होता है, उसको अंडरस्टैंड करने से होता है. ये जो तुम बोल रहे हो ना, बचपन से फील कर रहे हो, इसको साइकोथेरेपी बोलते हैं. वी आर अ टोटल सम ऑफ आवर पास्ट. So I need to understand, when did it begin? How did it begin? You have to start doing journaling. You have to do meditation. You have to use my hypnosis audios. I'll give you a lot of different resources. When you're feeling low, what to do, how to journal. There's a lot that you can do to feel better. Having said that, we human beings cannot feel. This is what I was trying to make you understand. Point number one, we cannot feel good all the time. It's not possible. So when you are experiencing this low, not necessarily you're depressed. It's just that you're going through a phase, or those brief moments of just feeling perhaps you're missing your family, not your father, of course, or something else is missing. Like you said,
देखो, अगर से मैं तुम्हें जितना तुमने थोड़ा ही बोला है, मुझे जितना मुझे समझ में आ रहा है, तुमको कांस्टेंट कॉम्पिटिटिव मोड में रहे हो बचपन से। तो Yes, that is right. तो चाहे तुम्हारा वो इंटेलिजेंस हो, चाहे तुम्हारा फाइनेंशियल सक्सेस हो, यू हैव ऑलवेज have had low self-worth. You need to fix this. If you fix this, which takes time, it is not going to be overnight. It is a process. It's a long drawn process to come to a state of having that intrinsic value for yourself. That चाहे मैं अभी, तो आपको क्या लगता है मैं इंटेलिजेंट हूँ? कितने सारे काउंसलर्स मेरे से बेटर है। श्वेता से बात करके देखो, मेरे मुंह नहीं खुलता उसके सामने, ठीक है? वो मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो मेरे से ज्यादा वेल रेड है, But it's about being intelligent from like majority of the people who are around you. So that matters, I guess. I think आप अपने जो सर्कल है ना, तुमने पूरी बात सुनी नहीं मेरी। देखो, अगर से you think you're the most intelligent person in the room, then you're the dumbest person in the room. First and foremost, you can never be intelligent enough. You can never be the best. You cannot think that you're going to be perfect. The day you set this, one, you will become arrogant. No fucking person is going to like you because you think you're too good for everybody. Second, you also stop learning because you keep thinking, अरे मुझे क्या सीखना है, मैं तो perfect हूँ। तो आप वो नहीं, मैं आपको कुछ और समझा रही थी कि हमेशा आपसे ऊपर कोई होगा। मुझे दिखाई नहीं दे रहा बेटा, सारे मेरे को so I can't see. 1 minute, you just show me later. So हमेशा आपसे पैसे में, इंटेलिजेंस में, लुक्स में, हर डिफरेंट एंगल से आपसे कोई ना कोई किसी ना किसी एंगल से बेटर होगा, कुछ 2-3 चीजों में या 4-6 चीजों में। बट हमेशा तुम में एक बात होगी जो उनमें नहीं होगी। हमेशा याद रखना, चाहे वो तुम हो, यहाँ पे सारिम है, आर्यन है, मोहित है, गौरव है, साकिब, तुम में भी एक कोर क्वालिटी है जो मुझ में नहीं हो सकती या इनमें से किसी के पास नहीं है। तुमको जब तक वो रियलाइज नहीं होगा ना, यू हैव दैट एक्स फैक्टर, यू विल स्टक इन दिस रट ऑफ वांटिंग टू बी बेटर देन अदर्स बिकॉज यू ऑलरेडी गुड, नॉट दैट दे आर बेटर देन यू और यू आर बेटर देन देम। ये शिट कंपैरिजन जब तक आप नहीं छोड़ोगे ना, कि क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ किसी के पास होगा, कब तक अपना दिमाग का भरता करोगे? Doesn't make sense. I have something which Shweta doesn't. Shweta has something I don't. Vedant has something which Shweta doesn't. Shweta has something which Vedant doesn't. Everybody is so unique, so wonderful in their own way. Stop trying to be so intelligent. Stop. तुम घोड़ा नहीं हो, रेस में भागना बंद करो। तुमको जो सीखना है मैं सिखाने को रेडी हूँ, पर इसके लिए ओपन माइंड चाहिए, इसको डेली प्रैक्टिस चाहिए, इसको डीपर सोच, ताकि तुम इससे बाहर निकलो एंड देन ट्रस्ट मी यू विल बी सॉर्टेड। क्योंकि एक सक्सेसफुल इंसान, तुम्हारे पास पैसा भी आ गया पर तुम कॉन्स्टेंटली अगर से कंपेयर कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली तुम सेल्फ पिटी में, कॉन्स्टेंटली तुम्हारा इनसिक्योरिटी तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ रहा, कैसे सक्सेसफुल हुए आप? मेरे नजर में तो नहीं हुआ ऐसा इंसान जो कॉन्स्टेंटली चाहता है कि वो दूसरों से बेटर हो। मेरे लिए वो इंसान बहुत मुझे लगता है जब एक इंसान ऐसा कोशिश करता है कि ऑल द टाइम आई वांट टू बी बेटर देन अदर्स, आई एम बेटर देन अदर्स, एवरीबॉडी इज शिट बट आई एम द ग्रेटेस्ट, ये क्वालिटी आपको ढूंढनी ही नहीं है। आप और आपके डैड, आपका जब आपने मुझे बोला ना, मुझे अचानक अमिताभ बच्चन और अभिषेक याद आ गया। ट्राइंग टू रेप्लिकेट समवन एल्सेस सक्सेस, you are doing injustice to yourself. You are unique. You are meant to have a different course of life. So what if you don't make it like your dad? You make it on your own way. You make it different. It doesn't matter whether they give you or validation or not. मैंने एक बार बहुत पहले ये तुम्हें I don't know, you are new to my, I've never seen your name, so I'll repeat this story for the newcomers. Imagine there are 3 people. One is on Facebook, one is on Insta, let's say one is on TikTok. तो तीनों ने एक दिन एक फोटो लगाया, तीनों को बथेरे कमेंट्स, 30 कमेंट्स और 100 लाइक्स आए, बड़े खुश। सेकेंड टाइम लगाया, उससे ज्यादा 100 कमेंट्स और 300 लाइक्स आए, बड़े खुश। तीसरे बार जब लगाया तो तीनों सोच में पड़ गए,
लड़की जिसने अपनी फोटो डाली थी वो सोच में पड़ गई, एम आई नॉट प्रिटी इनफ? मुझे लोगों ने अभी तक बोला क्यों नहीं मैं कितनी खूबसूरत हूँ? जो अपने मीम्स डालता है बोलता है मेरे कंटेंट में क्या अब दम नहीं है? किसी ने अपना ये डाला है ट्रॉफीज एंड ऑल दैट, राइट, कि ओ किसी ने मेरे को बोला नहीं मैंने इतना अच्छा अचीवमेंट किया, मुझे अभी तक कॉन्ग्रेचुलेशन इतने कम कैसे है? ये लोग सब क्या कर रहे हैं? वैलिडेशन एंड अप्रूवल सीख कर रहे हैं। किससे? स्ट्रेंजर्स से और अपनों से। थोड़ा नॉर्मल है, हम सबको अच्छा लगता है कॉम्प्लीमेंट्स। आज सब लोगों ने बोला मैम ऑरेंज पेस्ट्री लग रही हो, मैम ये लग रही हो, बट अगर से मैं उसी शिट में अटक गई कि मेरे को कितने लोगों ने कितने कॉम्प्लीमेंट दिए, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ हूँ, जो लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं और जो जिनसे मैं वैलिडेशन सीख कर रही हूँ वो एक पेडेस्टल पे चढ़ गए, मैं ऐसे उनको देख रही हूँ। प्लीज मेरे को बताओ ना मैं कितनी अच्छी हूँ, प्लीज मुझे बताओ ना मैं कितना सक्सेसफुल हूँ और मैं कितना अच्छा कंटेंट क्रिएट करता हूँ, मैंने कितना अच्छा पैसा कमाया या कितना सक्सेस अचीव किया। आप क्या कर रहे हो? आप नीचे खड़े रह के दूसरों को बोल रहे हो टू टेल यू whether they are good or not, it doesn't fucking matter. You want them to tell you how good you are. How ironic is that? Because you don't believe you're good enough. So what fucking difference does it make whether people say you're good or not? You yourself don't have that confidence to see that you're good. You don't need so many people to tell you how great you are or how amazing you are. Why? Because you should know your own value. Your intrinsic core value has to be so strong, so on point that you don't keep taking a bowl and say, मुझे बताओ ना, मुझे बताओ ना. अगर से आपको वो नहीं मिलता और फिर भी आप sorted हो, फिर भी आप अपनी लाइफ में खुश हो, दैट डे आप सक्सेसफुल कहलाओगे। जब आप भागते फिरते नहीं हो लोगों के लिए। अगर से जिसने मेरा श्वेताब के साथ फर्स्ट या सेकंड पॉडकास्ट देखा था, हमने आप लोगों को बोला था कि ये लाइक्स और कमेंट्स के पीछे भागोगे अंदर से खाली हो जाओगे। ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि अंदर से अगर से खुद की वैल्यू नहीं होगी, दूसरों के पीछे भागते फिरोगे कि मुझे बताओ whether I'm good enough or not. Why don't you know that you're already good? You should be knowing that. Because there will be many people who will not like what you will do. But do you like yourself enough? Sakib, you don't. Why? Because you're looking for it outside. So to teach you that, it is going to take me time because you are going to do some efforts, make some changes in your way of mindset, of reframing how you think about yourself, how you think the world is your place to stand there and take a begging bowl and ask them how great you are. You're already good, beta. You're already doing well for yourself. You're already working. You just have to figure out few things in your life and you'll be fine. You're not as bad as you think you are. Stop looking at yourself from others' reflection. They will speak shit about you because everybody wants to feel good about themselves. So they will put, not everybody, let's say quite a few people in our life will look down upon us. But you're good. Don't underestimate the value of yourself. And once you figure that out, you'll be fine. And it takes time, with age, with experience, with practice. Got it? I can't hear you. I know I can see you, but I can't hear you. I'm really sorry, ma'am. Mute पे था मैम. मैम मैं आपसे टच में कैसे हो सकता हूँ for the therapy and DM कर. अच्छा ईमेल और इंस्टाग्राम की लिंक मैं अभी डाल देता हूँ चैट में, आपको मैसेज कर देता हूँ। जिनको थेरेपी चाहिए, जिनको डीएम्स में सिर्फ ऑडियो रिप्लाई चाहिए, आप लोगों को पता है, आई रिप्लाई बाय वॉइस नोट और आई गिव यू अपॉइंटमेंट्स. So do contact and I hope this hit home with many of you all because आप लोगों की जनरेशन अंदर से बहुत एम्प्टी है और कुछ ना कुछ ढूंढ रही है, वो बाहर नहीं है, यहाँ ढूंढो, मिल जाएगा ना, सुकून नींद सोओगे, ठीक है? Yes. Ma'am, can I speak or Yes. like I'm done? Ma'am, I would also like to speak like आप कह रहे थे like child molestation के बारे में. So I had gone through this like when I was around 10. So like I would just like to add कि the reason कि बच्चे लोग नहीं बता पाते. I wish I would have spoken about it to my parents, but एक like वो जो age होती है ना, उसमें you are growing up and you are exploring के like you are getting mature और आप थोड़े से sexuality भी आ रही होती है.
So एक वो आप में एक वो रहता है कि like कुछ हम because we are not open about it, so we have this guilty conscience about it कि maybe this is wrong, like मुझे क्यों हो रहा है. So उसकी वजह से हम ये चीज भी नहीं बता पाते कि हमारे साथ में ये हो पा रही है. So like I think parents को open होना चाहिए, like even if they are like small kids, like doesn't have to be girl, it can be with anybody. Right. So I just want to say that. Yeah, so I hope I've made videos on this and I've told my followers, subscribers to show it to their parents. But India mein, considering we are the highest population in the world, guess which topic is the least spoken? Sex. Exactly. And so, okay, all of you all know, I always say break the chain. So this is one of the things, since it happened to you, when you have kids, whether it has happened to you all or it doesn't matter. If something you people learn from my channel, I always tell you all few things to learn. This is one thing I want you all to learn. कि अपने बच्चों से बात करो, उनको सेफ अनसेफ टच सिखाओ. आप लोग भी चुप बैठोगे और उनके साथ ऐसे बिहेव करोगे, पॉन नहीं होता, हमारा बच्चा क्या कर रहा है हम देखेंगे नहीं, हम एक आंख बंद करके उनको देखते रहेंगे पर हम एड्रेस नहीं कर सकते. Break the fucking barrier. I speak to my child about, like, I remember telling you all that when I was telling my daughter, don't stay in the same dorm as her boyfriend. She's like, you do know that we'll have sex, right? So we talk like this to each other. I said, yeah, I know it, but I don't want you to. So I talk about teenage pregnancy. I talk about our boyfriends, a breakup and all of it, right? So do you think it's comfortable for me? I come from a much previous generation from all of you, but I still do it. Why do I do it? Because I could never speak to my parents. I could never, because like he said, we always think हमारी गलती है, हमको अगर से हमने शायद अलाउ किया है और हमको पता भी नहीं इसको बोलना होता है कि नहीं बोलना होता, क्योंकि वो बीच के भंवर में फंस जाते हैं. कभी हमको ठीक लगता है कि ओ समथिंग इंटरेस्टिंग इज हैपनिंग टू अस, बट इट्स फकिंग रॉन्ग. अभी कोई बताए तो हमको पता चलेगा ना, तब तक तो हमको पता नहीं होता क्योंकि हम इतने छोटे होते हैं, 10, 12, 13 साल के. आजकल तो बच्चे तो कुछ ज्यादा ही फॉरवर्ड हो गए हैं, बट आई एम सेइंग अदरवाइज. सो मेक श्योर यू ब्रेक द चेन. स्पीक टू योर चिल्ड्रन, स्पीक टू योर कजन्स, योर नेव्यूज. कोई भी बी वन ऑफ दोज पीपल where your family members के साथ, यार इसके साथ हम बात कर सकते हैं, हमको कहीं we don't have to be suicidal, we don't have to hide, we don't have to do self harm. कितने लोग कटिंग करते हैं after they have been sexually molested, क्योंकि that's one of the ways they find relief. And all of y'all who are getting into self harm, मैं आप लोगों से मिन्नत करती हूँ, please do not find this way to relieve your stress. There are lots of techniques to reduce stress. This is one of the worst ways besides suicide to harm yourself. After few years, जब आप sleeveless पहनोगे या shirt पहनोगे या swimming जाओगे या कुछ भी, आप फिर अपने आप को मार्क्स नहीं छूटे. ये जो कट आप लोग करते हैं, नहीं जाते, या कभी नहीं जाते. So please do not self harm yourself. Find a way to relieve your stress. Find the root cause of the problem. ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, दूसरी तरीके ढूंढो, रो लो, थोड़ा फ्रेंड से बात कर लो. और आपको इतने सारे चीजें मैंने ऑलरेडी बताए, सो आई विल नॉट बी रेपिटेटिव. और कॉन्टेक्ट मी अगर से आपको बहुत तकलीफ हो रही है तो आई गिव यू सम रिसोर्सेज. हूएवर इज सुसाइडल, आई डोंट टेक सच केसेस, बट डीएम पे मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ. एंड मोस्ट ऑफ यू आर जस्ट गोइंग थ्रू दैट, like he keeps using the word depression. Don't do that. You might most likely are not depressed. You're just fine and you're just going through a phase. You're just feeling like that. Yes, you felt insecure. The right word for you is I've been feeling insecure since I was a child, because the society has put so much fucking pressure on a boy to be very intelligent, to be a topper in class, So society, parents, comparing to your siblings, comparing you to your cousins, all this happens. So most likely you're just insecure. And yes, it eats away at your self-esteem, but it can be fixed. Self-worth can be, as you grow older, instead of blaming your past, blaming your parents, blaming what I used to feel as a child, उसको सारा प्रोसेस करने के बाद आगे बढ़ना जरूरी है. बट वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, टू एक्नॉलेज कि ओके आई फेल्ट लाइक दिस, नाउ व्हाट डू आई डू अबाउट इट.
ठीक है, I know. Even childhood depression can be fixed. Like, sorry, yes, of course, lot of even like I myself was diagnosed with depression at the age of like 11, 12, 13. So, for those 3 years, and yeah, I'll say I am totally past that, and it's good. Did you just write my ex says that I don't understand how no one would date you? How no one would date you? वो 1 घंटे पहले की बात है ना. मैं क्या करूँ? 99 मैसेज, 100 मैसेज प्लस है Zoom पे. Just we are talking. Scroll कर रहे हूँ. Okay, listen. I'm going to scroll the entire thing on Zoom. Just post if there are questions because I can't read much. Nothing to read. We are just talking among ourselves. But I see some pride that direct messages. I'm so sorry. Okay, direct messages. I'm so sorry. Please किसी का भी direct message मत किया करो. इसको भेज, अच्छा कर दो, ठीक है. अब फिर से रिपीट करो. एक मिनट पहले मेरे को पूरा तो होने दो. ये तुम लोग अपने बीच में भगवान जाने इतना स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? डायरेक्ट मैं अपने आप को मैसेज करो. मैंने अलाउ नहीं किया क्या? 3-4 लोग बात कर रहे साथ में एक दूसरे से. हाँ तो अच्छा वैसे तो ऐसा डिस्कशन चल रहा है. एक क्वेश्चन था तो बेसिकली जस्ट अ गाय जो है, he said that you know जो कल्चरल नॉर्म्स होते हैं लाइक वेरेवर ही इज फ्रॉम, वहां पे उसके फ्रेंड सर्कल में क्लबिंग वगैरह जाना या पैसे उड़ाना फालतू के, दैट्स लाइक सॉर्ट ऑफ अ कल्चर, एंड ही इज समवन हु डज नॉट लाइक टू डू दैट, यू नो, स्पेंडिंग रिलेंटलेसली वगैरह. तो उस वजह से उसे इंक्लूड नहीं किया जाता. ही इज जज्ड अपॉन दैट एंड सोशल कल्चर से सॉर्ट ऑफ किक आउट किया जाता है. सो वी हैव बीन डिस्कसिंग दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम. अच्छा, मैम को भूख लगा खाना. अरे भूख तो लगती रहती है, मैं हर सेशन में खाती हूँ और मैं आज अनार खा रही हूँ, हेल्दी खा रही हूँ. प्लीज थोड़ा खाने दो बिकॉज यू डोंट नो हाउ मच एनर्जी एक्सपेंड्स व्हेन यू आर टॉकिंग सो मच. सो ऑल्दो मैं खाना दोपहर में आई थिंक आई हैड इट एट 2:30. सो अभी कितने बज रहे हैं? 8:50 यहाँ पे. हाँ, यहाँ पे तो 8:15 हो रहे, पर मुझे भूख लगी चार्जर को ये करके. ओके, फिर क्या इधर नहीं तो सोशली फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. बॉटम तक वही चल रहा है. एक मिनट. गुरमुख सिंह ने लिखा आई लव यू मैम, लव यू मैम. किसी ने डिलीट क्यों किया है मैसेज? इट्स ओके ना, ही इज सेइंग लव यू, इट्स ओके. लव यू बैक गुरमुख सिंह जी. शिवम दवे, यू आर सो स्वीट, थैंक यू सो मच. क्या नहीं साउथ इंडिया में हिंदूज भी चाचा चाची? हाँ, आई नो साउथ इंडियंस में भी होता है. सॉरी आई डिडंट मेंशन दैट. मैम आप कौन से कंट्री में रहते हो? मैं दुबई में रहती हूँ. यार why are you deleting, Shivam, why are you deleting things? They're very harmless unless someone is, and even if it's a sexual comment, I want to get irritated and I want to give it back. Right. Because there's a reason. Last time Vedant, when I was discussing with Vedant, he says he ignores it. I don't ignore everything because I want to address it so people learn. ऐसे हाँ, okay ma'am, if you don't like it I won't do it. Just नहीं, it's not about I don't like it. I feel bad. You're earning and it's not about liking. It's very sweet of you. You're the only one does it. So मेरे को उसलिए बुरा लगता है कि ऐसा नहीं करके तुम कुछ बुरा कर रहे हो. Balaji, if you're listening to me, it's not that. And okay, अरे भगवान, मैंने बहुत ज्यादा स्क्रॉल कर दिया. Hey Krishna, एक minute. Good evening, Samar. Ma'am, why do you think worldwide religion is a common problem in poor cities and the rich ones, and the ones who need to be religious? Who told you rich ones need to be religious and poor ones don't need to be religious? I think I kind of disagree with you all कि poor लोगों के बीच में religion problem हो रहे हैं. उल्टा ये rich ones आजकल तुम देखो कौन से सोसाइटी में क्लैश हो रहे हैं. सिर्फ पोर वाले नहीं हो रहे, मिडिल टू हाई भी हो रहे हैं. आप गलत फहमी रह रहे हैं. आप इंडिया को नहीं देख रहे हो क्या? इंडिया में क्या हो रहा है? सो इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स देयर, इट्स ओनली देयर. सो ओके Ma'am, can I speak something? Sure. Go ahead. Reading. क्या बोलूं? Go ahead, speak. मैं कुछ बोलूं? Yeah. अरे आपने जो अभी वो बात बोली थी ना उनको कि वो जो रूम में अपने आप को सबसे ज्यादा होशियार समझता है वो सबसे ज्यादा बेवकूफ होता है. एक्चुअली मेरे को ना इस चीज पे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैंने भी ये एक ऐसा ही कोट लिखा था. मैं आपको भी शो करता हूँ, ठीक है? आप पढ़ना. हाँ, पढ़ने के लिए तुम्हें मुझे वीडियो पे डालना पड़ेगा, चलेगा? यार कौन पढ़ सकता है? मैं पढ़ता हूँ. एक मिनट, मेरे को स्पॉटलाइट पढ़ने दो. अब a wise man is who considers himself a fool is the one who thinks himself wise. Okay, got it, nice one. आपको अभी हम स्पॉटलाइट से हटा देंगे, ठीक है?
आपका कोट हमने पढ़ लिया, यस करेक्ट। तो मेरे को ना बड़ा uh, अच्छा लगा कि आपके साथ रह के इतना आप लोगों का असर मेरे ऊपर आ रहा है कि हाँ मैं ये सब चीजें समझ पा। That's good. ये 72 हूर सौदागर जो आप आए ना, बैन इंसेस्ट, पुट इंसेस्ट पीपल इन जेल, तो डालते हैं जब पकड़ जाते हैं। ओके अक्षित, तो अक्षित मैंने तुम्हारा क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर कर दिया था। करियर का स्टेबिलिटी नहीं है, चुपचाप बैठ, इतना जल्दी शादी करने की जरूरत नहीं है। अगर पूरा पूरा रामायण खत्म हो गया, राम को दे बोल, हम बोल दिया ना, इफ यू आर नॉट हैप्पी, इफ यू आर नॉट रेडी, डोंट डू इट। ओके, इन शॉर्ट करना तो कर। इन शॉर्ट मैंने ऑलरेडी इतना ज्ञान फैला था उसको, कितना ज्ञान देगा एक इंसान यार। Okay, Shreyas, but hello ma'am, I have joined your live after quite a long time. I hope you are doing well. Yes, I am well, and I hope you are also well, Shreyas. Suraj, ma'am, I know I have to study, but due to fear of failure, I don't even try until the 11th hour. सूरज जी, जब सूरज उगेगा तो अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हमको आपको प्राइवेट कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मैं डांट आपको लगाने वाली हूँ वो सिर्फ डीएम में होती है और रिसोर्सेज भी ईमेल किए जाते हैं। पर बेटा ये ऐसा फियर ऑफ फेलियर लिख कर मुझे समझ में नहीं आया ना कब हुआ था फेलियर, एग्जाम में फेल हुआ है कि सिर्फ डर है, और इस डर से कैसे बाहर निकलते हैं, इसके लिए कपल ऑफ रिसोर्सेज आपको दी जा सकती है अगर से आप हमें डीएम करें तो। इधर वीडियोस भी है ना मैम चैनल पे? क्या चीज? चैनल पे वीडियोस भी डाले हुए हैं रिगार्डिंग द सेम। फियर ऑफ फेलियर पे एक ही डाला है, एक but otherwise I have more resources, but you have to hear me out when, like, Suraj, I'm talking to you. I need to understand. You can't just write 2 sentences and expect me, मेरे पास इतनी दूरदृष्टि है, सूरज ने इस एग्जाम में ये किया। एक सब्जेक्ट है, पूरा टॉपिक है, आर यू रियली नॉट इंटरेस्टेड इन द टॉपिक, सो यू आर स्कैर्ड, हैव यू टेकन अंडर द प्रेशर ऑफ योर पेरेंट्स, सो मच व्हिच गोज ऑन बिटवीन ऑल दिस, राइट? So contact me and I'll try to help you if you help yourself. Tushar and ma'am, Tushar, I already answered. Hello ma'am, am I audible? Ma'am, can I? Okay, all right. दो लोग, okay, दो लोग एक साथ। Okay, go ahead. Go ahead. The other caller, he can go ahead. साकिब बाद में बोलेंगे। कौन बोलना चाहता है पहले? मैम अद्वितीय। हाँ बेटा बोलिए। मैम बेसिकली मुझे ना कुछ फिक्शन बुक्स के बारे में रिकमेंडेशन चाहिए था। यहाँ पे सिर्फ आपसे ही क्वेश्चन नहीं है, जो मतलब कि जूम मीटिंग में जो भी है ना मुझे बता दो। अब चल रही मेरी छुट्टियां, एग्जाम्स हो गए खत्म, तो अब मैं से खाली बैठा नहीं जा रहा, तो मुझे पढ़नी है कुछ फिक्शन बुक्स। तो तुम पाउलो कोएल्हो की द वल्काइलिस्ट। एक मिनट मुझे माफ करो, पहले तो ये लेमन डाउन बुक्स रिकमेंडेशन के लिए नहीं हो रहे। अगर से आपको आर्यन आपको रेकमेंड करना है या किसी को भी रेकमेंड करना है, जो यूट्यूब वाले हैं यूट्यूब पे लिखो, इंस्टा वाले मत लिखो, जूम वाले यहाँ पे लिखो, ये क्वेश्चन मुझे एड्रेस मत करो, मुझे माफ करो, बाकी लोग इसको मदद कर दो, ठीक है? साकिब आपको कुछ पूछना था, प्लीज बोलिए। Yes, मैम, मुझे क्वेश्चन करना है कि मैम आई एम 29 right now, and मुझे like generic, I don't know like if you are the right person for this, कि if somebody who is the age of 29, so if he has to start something new, like मैं currently I am into IT and networking, so if I don't like what I do, and like is it too late for me to start something new, or never too late? It's never too late, but having said that, are you sure you want to change? 1. 2, are you ready to do the hard work? 3, are you ready to hear the backlash which is going to come from your father and your family? Okay. 4, does it require capital? Do you have enough bank balance? 5, what if you don't succeed in whatever you're doing? How much time are you going to give it? Are you going to come back to what you're doing? Is it possible if you, let's assume it's like almost like a sabbatical from this career and you go into something else, how are you going to go back to it? Is it possible? If it's not possible, what are you going to do? There are lots of questions. So you have to sit and ask yourself that. It's the gift of life is yours. Okay. You do what you want. You unravel it, you open it, you take your sweet time, you enjoy it, you kick it, you do what the fuck you want. But remember this, you are not answerable to anyone, actually speaking. I know as Indians, or Asians, we are raised, we are answerable to our parents. But
you will outlive them by 20, 30, 40 years. Who are you finally answerable to? Yourself. So Exactly. if you think that you're unhappy with what you're doing, because this is overrated, मैं वो करना चाहता हूँ जो मेरा पैशन है. मेरा तो पैशन है सीलिंग को देखने के लिए, राइट? बट क्या उससे पैसा कमाया जा सकता है? नहीं. तो आप क्या करोगे फिर जिंदगी में? So don't get carried away with this concept that I want to do something I love, because most likely I'm going to end up not really liking it some of the time, or let's say most of the time. It's possible. So before you switch, make sure you take some courses, speak to people who are in that career, find out the ups and downs, the pros and cons. Then the other questions that I asked you, if you don't remember, you can revisit the stream, write it down. If after answering those questions, if you have some more questions, you can DM. All right. Thank you so much, ma'am. Let the passion be your slave and earn for you. ये वो ज़्यादा हो गया, पर ठीक है. Darling, life ऐसे नहीं होती. कभी कभी अभी ये मेरा पैशन है, राइट? जो मैं कर रही हूँ. Do I enjoy it every single time? Does it even pay me? Not really. So उतना आपको मैं अफोर्ड कर सकती हूँ ये लग्जरी. क्या सब लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं. तो वो सोचने वाली बात है. ऊपर मैसेज पढ़िए, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, हमें माफ कीजिए, हमने सारा इसलिए स्क्रॉल किया था क्योंकि आप लोग अगर से थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करेंगे तो क्या जाएगा आपका. पर चलो कोई बात नहीं. ओके, किसी को एक प्रॉब्लम है, हम उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें हमें डायरेक्ट मैसेज किया है. मैम, आई गॉट अ प्रॉब्लम. अब पढ़ाई वाली क्या ये satisfied कॉपी करके पेस्ट करो. ये हर टाइम होता है. मैं स्किल सीखता हूँ बट अप्लाई नहीं कर पाता हूँ. तुमने भगवान जाने हिंदी है कि कौन सा लैंग्वेज. अब पढ़ाई कॉपी करके पेस्ट करो ना. मैं सोचता हूँ कि मुझे आता नहीं है बिकॉज मैंने अप्लाई नहीं किया होता है और कोई टेस्ट एग्जाम दिया होता है जैसे इवैल्यूएट हो. I don't know what to make out of this. I'll have to reread it because तुमने जो ये ब्रेक 10 sentences बनाए हैं पर 3 वर्ड्स के, थोड़ा मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा. हर टाइम होता है कि मैं I think वो कह रहे हैं कि he studies a lot but वो skill apply नहीं कर पाते. I think I can relate with it क्योंकि जो आप पढ़ाई करते हो और जो एप्लीकेशंस में लाइक पढ़ाई आप 100 पॉइंट्स करते हो और जो एप्लीकेशन होता है लाइक 5 या 3 पॉइंट्स का उसमें रहता है. सो सब कुछ पढ़ाई करना आई थिंक नहीं होता है कि आप पूरा पढ़ाई करें. इट्स इम्पोर्टेंट कि ओवरव्यू जनरलाइज का एक वो फिर बाद में लाइक व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग देन यू रियलाइज कि व्हाट्स इम्पोर्टेंट व्हाट्स नॉट. सो आई थिंक that will help. He's saying because मैंने अप्लाई नहीं किया होता है, कोई टेस्ट एंड एग्जाम नहीं दिया होता है, so उससे so he is basically saying कि if I have studied something and I have not applied it and there is no specific exam for it, how do I evaluate myself whether I have send a thumbs up if this is what your problem is. Okay, let me read. No. So no, okay, क्या भैया जी? yes, he's written to me. Correct, I got it right. So what he's saying, even there are certain things in life when you learn, but how do you know whether you're executing it well? How do you know if you are without exams, how does one know if you're doing a good job? That's his question to me. Now, हर चीज का बेटा आंसर नहीं. आप अगर से let's say आप एक माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो, राइट? किसी ने वो माउंटेन क्लाइंब नहीं किया होता है. चलो इवन इफ लोगों ने क्लाइंब किया होता है, आप अपना खुद का जो एक्सपीरियंस से गेज करना है कि आपने सही किया कि नहीं. और हर चीज सही गलत नहीं होता ना. कुछ चीजें हम सिर्फ करते हैं क्योंकि करना होता है. हर चीज का टेस्ट नहीं होता है लाइफ में. जैसे आज मैं बात कर रही हूँ, अगर से हम इसको एग्जाम में डालेंगे तो मुझे तो नहीं लगता मुझे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? बट अगर से मैंने पब्लिक पोर्टल पे डाला, जैसे तुम लोग है कि मैंने बोला कि मैम का आंसर किस किस को अच्छा लगा, राइट? तो कुछ लोग बोलेंगे कुछ लोग बोलेंगे. तो देयर इज नो एग्जैक्ट टेस्ट फॉर दिस. देयर इज नो वे टू इवैल्यूएट माय परफॉर्मेंस. येट
I get better at it. According to someone, my diction got better, the way I speak got better, my whatever. So this is what you learn from your own self. I can खुद भी तो अपना कंपैरिजन कर सकते हो ना, हर चीज का एग्जाम कैसे दे सकते हो? उल्टा मुझे तो हर चीज पे एग्जाम देना ही नहीं होता, और आपको बाहर के लोगों से भी पता चलेगा। लेट्स से कि आप किसी से बात करते हो, कुछ लोग बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अगर से 4 लोग आपको बोलेंगे यार तू कितना डिप्लोमेटिक है, कभी सच नहीं बोलता, बहुत फेक है, तो ऑटोमेटिकली आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ी ना, आपको पता चल गया कि आपको ये बात आपको थोड़ी चेंज करनी है। लेट्स से द ऑपोजिट, कि आप बहुत ओवर द टॉप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप बहुत ओवर द टॉप कर्ट हो, और स्ट्रेट फॉरवर्ड की आर्ट में आप किसी को ज्यादा हर्ट करते हो। कभी कभी ये मेरी भी प्रॉब्लम थी कि आई वॉज ओवर द टॉप, I just say what I'm thinking. You have to filter it out, because then you're hurting certain people. Sometimes you deliberately hurt people because you want to prove a point. Sometimes you just are stupid. Sometimes you don't realize your mistake. Then you keep correcting it. So जिंदगी आपको आपका टेस्ट लेगी, ये लोग आपका खुद का अंदर का जो कॉन्शियस होता है वो आपको हेल्प करेगा। ये सब चीज में, हर चीज जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, हर चीज का एग्जाम कैसे दे सकते हो अनलेस आप डिस्कॉर्ड पे, लेट्स से 2 लोग बुक पढ़ रहे हैं, आप लोगों दोनों ने वो बुक पे डिस्कशन कर ली, आपका वो सो कॉल्ड टेस्ट हुआ कि how much have you picked up, maybe you missed out a point in that, maybe there was a deeper angle which perhaps one person understood and you did. Now you don't need to feel bad about it, you just didn't get it. So something like that. So whatever you're reading or studying, if you can discuss with your peers or someone on Discord or somewhere else. But rest of the time, not everything in life has tests. Okay. I hope you got the answer. And if I missed out anything, let me know. Or there should be a buddy with whom we can discuss. That is the whole point of our Discord, right? Now, हाँ क्या? कैमरा देखो, वो ज्यादा है, वो मेरे बातों में मगन है, ठीक है? तो है कि नहीं? थम्स अप। हाँ, तो मुझे पता है ये इसका मेरे को सालों से पता है। तो एनीवे, तो द थिंग इज, मैं क्या बोल रही थी, हाँ, हमारा डिस्कॉर्ड। अब मैं तुम्हें बताऊं, जो हमारा कन्फेशंस चैनल है, ठीक है, अब जिन जो भी हमारे डिस्कॉर्ड पे नहीं है, इफ यू नोटिस थोड़े दिन पहले कुछ पंगा चल रहा था, तो वो कन्फेशन चैनल के वजह डिबेट चैनल बन गया। किसी चीज पे, बुक पे बात कर रहे थे, उस पे भी लंबी खींची तानी डिस्कशन चल रही थी। वो कम टू आवर डिस्कॉर्ड, इतने सारे चैनल्स हैं, वहां पे आप क्यों नहीं डिस्कस करते कि आई एम रीडिंग दिस, इज एनीवन एल्स रीडिंग, एंड जस्ट मेक योर ओन थिंग। ओके, so it's not so difficult. There should be a buddy with whom but you cannot have a buddy to discuss every damn thing in your life. How is it possible? That's why you do internal dialogues. It's not possible. Even when I'm talking, you all are having an internal dialogue. Yes or no? Yes. Some things hit you, some things don't hit you. Sometimes you're paying attention, sometimes you're in your own bloody dhunki. तो ये नॉर्मल है, ये इंटरनल डायलॉग्स चलते रहेंगे जिंदगी भर। इतना हाँ, यू आर एन ओवर थिंकर एंड अंडर थिंकर, यू आर ऑल दैट काइंड ऑफ थिंकर। सो काम डाउन बेटा, एंजॉय योर लाइफ, इतना सीरियसली मत लो, एंड यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट एट एवरीथिंग। इट्स जस्ट फाइन, बी योरसेल्फ, बी कूल, बी काम, एंड बी frazzled, be sad, be imperfect, जो मन में आए, बस किसी को हर्ट मत करो, अपने आप को भी ज्यादा हर्ट मत करो, तब तक सीखते रहो। इट्स ओके, इट्स अ प्रोसेस। ओके, ट्राइंग टू गेट इंटर्नशिप फ्रॉम मंथ्स अगो। किस में चाहिए इंटर्नशिप? मुझे लिखो, डाल दूंगी इंस्टा पे। अगर से कुछ फॉलोअर्स ने देख लिया आपको, हम मतलब डेटा एनालिटिक्स में पेड अनपेड, अब अनपेड बोलेगा जल्दी मिल जाएगा। लिख एक्सपेरिमेंट, मुझे डीएम कर, आई राइट, आई पुट इट ऑन डिस्कॉर्ड। एंड आज जो भी सुन रहा है यहाँ पे, अगर से मैम ने आपकी फ्री में तो 3 साल से ज्यादा मदद कर रही हूँ, बट आपको अगर से हमें मदद करना है, आप प्लीज इनको मदद कीजिए। कोई भी डेटा एनालिटिक्स में इनको अगर से आप इंटर्नशिप दिला सकते हैं, तो हम आपके क्या होंगे, व्हाट इज हिंदी वर्ड फॉर ग्रेटफुल? शुक्रगुजार होंगे, ठीक है? तो बी नाइस, बी काइंड,
help someone out, it will make you feel better. And if you can pay him, if he does a good job or keep him longer, even better. Okay? Okay. Hello, ma'am. Hello. May I take your name? Because you've written it in the general. So, hi, I am Monica. I need your help in understanding my 9-year-old daughter. I'm from Hyderabad. I don't understand much of Hindi. She has anxiety issues, hyperactive sibling rivalry with her 8-year-old sister. I would like to take all this to, oh, okay. So as much as you don't speak Hindi, so don't worry, I'll speak in English. So as much as I would love to help you, and thank you so much for reaching out to me. I am not a child's counselor. I deal with cases 18 and above, and some time between 15 to 18, if I feel it's, if I can help. So what I would like you to do is seek a proper child counselor. Do not go towards psychiatrist. Make sure that you look for a child counselor. Now, agar se usko anxiety issues or hyperactive or maybe agar se you're noticing so much, it could be the child has got ADHD. Okay, and sibling rivalry to हमारे मेरे बच्चों में 8 साल का फर्क है, अब तक कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं. So वो बड़ा normal सा है. But if you see sorry, I spoke in Hindi. Okay, sorry. So if you sibling rivalry is pretty normal, especially if a parent favors one child over the other and reprimands the other child more, or compares the child more to the one child. So this happens, and like you're saying, she's 9 and 8, so hardly that you must be already perhaps a parent who's stressed out, right? To have children back to back, which are like so close, and there's hardly any age gap. So maybe sometimes we as parents, we say the wrong things to our children and they notice, and the rivalry comes more in the forefront is when they feel like they're being compared. And then if you say, look at your sister or look at your brother, or you say you're the older one, although there is only 1 year difference, right? So I would suggest that don't do that to that child. Make sure that you treat them individually. Try not to show favoritism to either one of them. Be more softer in your approach, and find out why is the child at 9 so anxious. Is it possible that they're getting bullied or sexually molested, or it is just an internal family thing? And if they are hyperactive, most likely it could be that if they are all over the place and not focused on their studies, then they need a specialist counselor. I wish you all the best. I wish I could help you, but it's not my, I don't want to just say something and not help you out. So I hope that you will reach out to any hospital, a good hospital, wherever, where did you say Hyderabad has got one of the best hospitals. Reach out there. And before you go anywhere, just make a call and ask them for a child's psychologist or a counselor. A psychologist would be also fine, but not a psychiatrist. I don't want you to think that your child needs medication so early, unless the psychologist tells you that yes, this kind of this thing, it's possible. I don't know what else the issues are, and the child needs. And also, most likely, they will tell you to bring the child for therapy. And there is also, do you know this play therapy? So because she's so young, most likely during play, they try to resolve the child's issues. So maybe that would help you. And I'm sorry that I cannot help you more. God bless you, and I hope it gets resolved. My pleasure, my pleasure. Thank you. Okay, for the person who needs internship, he wants web development, data entry, software development, app development, kuch bhi hoga, he is ready to learn. Okay. I got something. Okay. What? I might have something then. Okay. What? You have something for him? Yeah. Okay. So, Mohit, contact Aryan. Oh, Arshi, beta is here. Hello, beta. How are you? Arshi, do we have a channel? Hello, ma'am. Hi, beta. Do we have a channel on Discord where these people can discuss like topics which are
where there are no exams per se. Like we have Yeah, ma'am. We have it, but nobody's using it. That's the problem. यही ना, इंटेलेक्चुअल लोग कम है, झगड़ा करने के लिए और रेडी हो जाते हैं, है ना? Yes, ma'am, very true. मैं से इंटेलेक्चुअल लोगों की खुद की लाइफ के लगे पड़े. I swear. अच्छा, you're good otherwise, बेटा? At present, I'm like a little too terrible, but I hope I'll be fine. 1 second. आरशी's cooking lives are like, आरशी को कुक करते हुए देखना चाहिए. Okay, how to deal with jealousy of a person but you admire them actually. So I guess बोलते हैं ना करके imitation is the greatest form of flattery. So you feel jealous because you feel that they are better than you. But there are qualities you will have, and if you admire them, try to take those qualities. This is somebody just likes the way I speak. Now you cannot speak exactly like me, right? Or they like my hair. Let's assume. Example there you. I'm not saying you people like my hair. But I'm just saying, सब डुप्लीकेट थोड़ी हो सकता है, ओरिजिनल क्या होगा फिर? तो अगर से किसी का कुछ चीजें हैं जैसे आपको अच्छी लगती है, उसको थोड़ा बहुत अपने इम्बाइब करने की कोशिश करो. Why do you need to be them? And jealousy is इतना ठीक है, स्वाद अनुसार. ज्यादा हो गया तो आपका माइंड खराब कर देगा. तुम कभी किसी को appreciate नहीं कर पाओगे. हमेशा अंदर तुम्हारे कुछ ना कुछ चलता रहेगा. तुमको गंदी वाली फीलिंग आएगी उस इंसान के लिए, और तुम हमेशा it will show in the way you talk to them. You will be curt with them and you will not compliment them, or when everybody is complimenting, you're feeling shit inside. But let them also have their time in the limelight, and then you will also get your share of compliments. You might just get a different sort of compliment, right? So work on that, work on yourself, work on your self-worth. When you feel, जैसे कितने सारे काउंसलर्स मेरे से बेटर होंगे, मैं सारा टाइम दुखी फील करके उनसे उल्टा मैं ऐसे पेजेस फॉलो करती हूँ ताकि मैं उनसे सीखूं. There's nothing wrong. So learn and grow. Ma'am, हाँ बेटा, बोलिए बेटा. ma'am, पता है क्या हुआ? Like something happened in my family. Can I share it? If you're okay sharing it live. Yeah, I'm okay with that because it's going to the law anyways. So basically, my cousin and his wife were coming, and highway पर वो मतलब रुके to drink water, and like साइड में सर्विस लेन पे लगाया. मतलब वो मेरे घर के साइड में जो आते हैं ना हाईवे, वही है. मतलब यहाँ से आधा पौना घंटा दूर होगा. And as they stepped out, it was like night, रात का टाइम था, करीबन 10-11-12 ऐसे. And then like पूरी डिटेल तो मुझे भी नहीं पता. what actually happened was they got out to drink water. पीछे से 2 लोग आए बाइक पे, and they had the revolvers, okay, revolver जो भी बोलते हैं, and they like threatened them to give their money and chain and everything. वो तो उन्होंने ले लिया. जब my cousin was sitting in the car scared, they like ripped his chin and the neck, like बहुत ही ज़्यादा, it was like very very serious condition at present. So then somebody just like his wife, he just like जल्दी में बस drive करके close by hospital पे गया भी, and I'm also freaking out, like even I can't process what just happened. So are they now okay? अभी हमारे फैमिली में से जैसे मेरे ताऊ जी के बेटा है वो, तो they have just gone there. I'm not sure about it because अभी इतना अपडेट नहीं मिल पाया है. कभी नहीं क्राइम लोगों को क्यों समझ में देते नहीं, फैमिलीज को डिस्ट्रॉय कर देता है. सो आई एम प्रेइंग कि दे आर सेफ एंड व्हाटएवर उनको. The country is going to shit. The amount of criminal activities, like यार मेरे को कोई प्राइम मिनिस्टर बनाओ यार, मैं तो इमरजेंसी. मैम हम तो कब से बोल रहे हैं रचना मैम फॉर प्रेसिडेंट. आज भी देखो यूट्यूब पे जाके लिखा है. और ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे, लाइक लिटरली. अगर कोई सुनसान जगह होती फिर भी बोला जाता, लेकिन नेशनल हाईवे पे ऐसा क्राइम हो रहा तो एग्जैक्टली. हाँ यार, पुलिस और गवर्नमेंट सिक्योरिटी है. और तुम बच्चे हो जो, अब मेरा उम्र चला गया है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बनने का. हाँ, अभी इसके लिए ऐसे ही चीजों के लिए ना, लाइक नॉट एग्जैक्टली समथिंग दैट वुड प्रिवेंट इट, बट सो अ फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम कॉलेज एंड मी, वी आर वर्किंग ऑन दिस रोबोट. जो हाईवेज वगैरह होते हैं उसके बाजू में व्हाइट लाइंस होते हैं ना, दैट रोबोट विल बी कंटिन्यूअसली फॉलोइंग दोज लाइंस. और अगर कोई भी ऐसा इशू होता है हेल्थ रिलेटेड या व्हीकल ब्रेकडाउन वगैरह,
So you can just through your phone or through the nearest like जो भी आसपास का जो भी स्टेशन होगा वहां पे तुम उस रोबोट को बुला सकते हो, वो आएगा. यू कैन गेट मेडिकल हेल्प, यू कैन गेट व्हीकल रिपेयर हेल्प. ऐसे कोई भी इश्यूज हुए तो यू कैन यूज दैट रोबोट टू like help out. Okay, but it's an expensive thing, right? So No, not that expensive. हम बना ही ऐसा रहे कि उसको चीप में बना सके. okay. Excuse me, मेरा Vaseline. We started working on it in So college. if anybody gets this, please try to get this. It's so tasty. I know the cocoa butter Vaseline lip therapy is so tasty. मुझे तो बहुत अच्छा लगा, उसका खुशबू इतना अच्छा होता है. सॉरी, हाँ आई नो. मैं थोड़ा आई कैन पता नहीं क्या नाम रखा है यार आर्यन ने, पता नहीं तुम लोग मेरे को इरिटेट काहे करते हो. थोड़ा टाइम लगा देखने के लिए कौन है, फिर मैंने तेरी फोटो देखी, मैंने अच्छा ओके वही है. Pneumono ultra microscopic silicovolcaniosis. मेरे को स्पेलिंग भी याद हो गई उसकी. ओके, नेक्स्ट बालाजी सुमे, नया नाम है. बालाजय. हेलो मैम. हेलो. SR, I replied to you. Tushar, I replied to you. 7 more, I don't know what you retracted. I don't care. Rahul Sharma, we have heard. Can you all get over this topic, or I am reading it very late? I have no clue, but ma'am, I replied. बाबा बेटा तुमको रुकना पड़ता है, इतने सारे क्वेश्चन देख इंसान कितना रिप्लाई करेगा. Okay, Mihir, hi ma'am. Hello, Kapil Sharma. Hello ma'am. How are you? Looking beautiful as usual. Thank you. धन्यवाद. शुक्रिया. ओके, फिर से मैंने ज्यादा ये कर दिया इसको. अब क्या राहुल के लिए है, मेरे लिए नहीं है. डोंट पुट योर माइंड. वेरी गुड पॉइंट मॉम. ओके, थैंक यू ऋषि. थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. वेयर इज द मीटिंग गोइंग ऑन? इट्स कम ऑन जूम. रजनीश, एनॉयड एज फक, ऐसा नाम लिखेगा कभी ठीक ही नहीं होएगा तू. आई एम 15, जब सेल्फ हार्म किया उस दिन के बाद एल्स ऐसा दिन नहीं आया. मेडिटेशन इन जनरल. आई एम हैप्पी, पर ऐसा नाम ना रखो. इफ यू राइट annoyed as fuck, you'll always be annoyed. You're sending your subconscious the energy that you're never peaceful, you're always pissed off. Okay, and what is the benefit of self-harm? There's no benefit. It's just a coping strategy to feel better, because you're already hurting so much, it overpassed that hurt. So there is no benefit. It's just bad for you. दीदी एक बात बताओ. Rachna ma'am for president. Everybody, sorry, not president, prime minister. President हमारे नाम country में different होते हैं. हाँ, बोलिए बेटा. तो मैं दीदी मैं कंफ्यूज जाती हूँ मैम बोलने की. दीदी नहीं, तो दीदी मैम सब चलिए. तो sorry for hiding this from you for long, but today was the first day of my clinical therapy. Online therapy. हाँ. Okay, why are you sorry? 1, 2. नहीं मतलब I haven't updated you ना, तो मतलब it is like जहाँ मैं पढ़ती हूँ counselors there, तो मैंने उनसे ही शुरू करा था. and now the situation was not improving, so they talked to my parents, but like अभी इतना नहीं कर रहे थे वो. तो I found somebody who sponsored me for a clinical therapy. तो अभी आज first day था. Need therapy or you're learning? I didn't understand. No, I'm taking. No, it's okay. I'm glad. I'm very proud of you that it takes guts, it takes courage to say, okay, I need help and I'm going to talk about it. So it's a very good thing you're doing. Proud of you. I hope you feel better soon. But take care of yourself, okay? Yes, ma'am. और तुम्हारे जो जोक्स है ना, मैं सर के ऊपर से जा रही. क्यों? क्योंकि मैं पढ़ने का टाइम नहीं. इतना जो पढ़ रही हूँ ना 3 चैट्स में मेरा. मैम प्लीज हेल्प मी गेट रिड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन. श्रेयस, तुम वो नहीं हो ना हाटी. अनलेस तुम वही हो, यू नो माय DM, कॉन्टेक्ट मी, I'll send you resources, but you have to work hard. मेरे resources पढ़ के कुछ नहीं होने वाला. उसको you have to commit yourself to making a change every day. ये Zoom पे कैसा हो गया है चैट सिस्टम, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है. ऐसा ही तो हो रहा है. क्या डिफरेंट क्या है? नहीं डिफरेंट है, जैसे collapse all replies and everything. I'm not getting it. थोड़ा सा अलग दिख रहा है. You'll get the hang of it. You're smart enough. Just थोड़ा टाइम ले लो.
Okay, coming back after a month, finally I'll move out this month and leave this toxic house. I also left college and getting a fresh start. Avijit Gupta, all the best. Congratulations, and I hope you do well. God bless you. Abhay More, hello, how are you? आज का रैंट, आज मैंने कहा ना, मैं आज रैंट नहीं करना चाहती, मैं सब अच्छा अच्छा बोलना चाहती थी, बट वो बीच में एक क्वेश्चन आ गया तो उस पर तो रैंट हो ही रहा था मेरा. तो अरे अबे, अभी हमने पूरा इनसिक्योरिटी पे साकिब को कुछ सुनाया था, आप प्लीज रिवाइंड करके देखोगे. हाइट का तो हमने किया है पहले. आई एम गुड संदीप सिंह. अरे किसका है, म्यूट करो बेटा. सॉरी. ओके, तुम्हारा क्वेश्चन हाइट वाला, इनसिक्योरिटी वाला is as good as what his question is, whether it is your looks, whether it is your financial status, whether it is your height, whether it is your color, all needs to be worked on. You cannot like work on, obviously koi tarika ek I think maybe 1 to 2 feet you can do surgery and make yourself a little taller, but is it really worth it? And so you need to think about increasing the height of your intellect rather than your physical height. The day you do that, where you increase not only your intellect, but height of your emotional intelligence, you'll be sorted. You can contact me, I can help you with that and get you out of this. And yes, people will call you this, that, and the other. And why it bothers us so much is because we have not resolved it within us. The day we resolve it, okay, the day we are comfortable in our own skin, our color, our height, our eyes, our hair, you know, all of that put together, our weight, all of it, तब तक खटकेगा जब तक हमने अपने आप को इतना फियर्स नहीं बनाया होता है, ताकि हम इग्नोर करें जो गधे हैं जिनको लॉजिक समझ में नहीं आता कि हाइट इज जेनेटिक, लुक्स आर जेनेटिक, व्हाट द फक कैन वी डू, राइट? बर्थडे सेलिब्रेशन स्ट्रीम कम होगा, कब होगा? आई एक्चुअली काश मैं इस पे नहीं होती. थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी बालाजी. कब करें? बर्थडे को 1 महीना हो गया बर्थडे जाके ना, तो ट्राई करेंगे. मैम आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज. जंपसूट है ये? हाँ, वेरी शॉर्ट, पर वो घड़ी घड़ी ऊपर चला जाता है, तो मैं तो उसको फिक्स कर लूं. 1 मिनट, इस चीज को भी जंपसूट बोलते? ये हाफ जंपसूट. मेरे को भी जंपसूट लेना है, पता काफी टाइम से. हाफ जंपसूट. मेरे को जंपसूट मतलब स्विमिंग सूट टाइप लगता था पहले. प्लीज शट अप. मुझे नहीं समझता यार, लाइक इतने टाइम. स्विमिंग सूट एक सेक्सी बात हुआ यार. स्विमिंग नहीं, सूट जंपसूट ऐसे स्पोर्ट्स चीज, स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ ऐसा लगता था मुझे. नहीं, आजकल तो कुछ भी कभी भी पहनो टाइप. पॉइंट है. I don't let reality disturb my delusional life. Wow. Okay. That's interesting. Nimit Das, good evening. Sorry, अच्छा वाला हिंदी गाली. I know, I was trying not to abuse. Okay, I tried. Bruce Wayne, Batman is yours. Hello, Batman. दीदी, हाँ बेटा बोलिए. मैंने ना अभी अपना एक कोट लिखा, माई लाइफ आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट बेस्ट कोट्स आई थिंक. मैं बोलूं? बहुत छोटा सा 1 लाइन का है. लिव द मोमेंट बिफोर यू विश टू रीलिव इट. Oh, nice. Thank you. That's cool. Make it a post. I'll post it and I'll give you credit. Yeah, but like for now I have a bigger. Right? Like थोड़ा फ्लावर वाला डाल के बीच में लगा दे, फिर मैं और तेरा नाम लिख देना, नहीं तो लोग बोलेंगे करके मैम ने क्रेडिट नहीं दिया. कुछ रैंट याद आ गया. बालाजी तू इधर है कि नहीं? तब तक मैं रैंट नहीं करेगी. रैंट किधर है? मैं देखता हूँ. देख है क्या बालाजी? यस नो लिख, अभी तक है चैट में, और यूट्यूब पे आता है जनरली. है बालाजी है. यस लिखा उसने? यस नहीं लिखा, लेकिन उसका चैट दिख रहा है इस नहीं, वो तो अब भी लिखा था. जूम का लिंक चाहिए इनको, को देता हूँ. इसको you are the best. Yes, I've been told that many times, but thank you. I'm just pulling your leg. Thank you for your compliment. Hi Dhaval, कैसे हो? Sorry, like बहुत देर के बाद मैं हेलो बोल रही हूँ आपको. His videos are fun. आओ कभी Discord पे. Yes, correct. Okay, Akshat, falling in love with the work
you are doing. अच्छा मेरे लिए falling in love with the work you're doing, because these days I'm getting out of this mess that others are asking, and I can totally relate. Thanks for being there for all. Thank you, Akshat. Thank you for your beautiful compliment. Hi, Vitamin DJ. How are you? Hi, Rajat. Hi, Sanam. Sanam, तेरी कसम. किसने वो मूवी देखी? Hi, Tommy. कैसे हो? As an Indian, it's like a must watch. What? Sanam तेरी कसम. It was so cute. मेरा हाथ थक गया. सनम रे, उन्हें वो अलग है रे. सनम रे नहीं, सनम तेरी कसम गाने वाला. नहीं, आज का जनरेशन सनम रे वो गाना नहीं गा रहे हम, ठीक है. हम पुराना जमाने का. बाय द वे, सारे तुम पुराने जमाने के गाने सुनते हो क्या? वो नहीं है, मैं ही हूँ. अच्छा, बालाजी है कि नहीं? बाय द वे मैं रैंड भी भूल गई. डैम इट. हाँ, याद आ गया. जब तक वो आ रहा नहीं तब तक एक मिनट ना. इधर था ये. एक मिनट, मुझे कुछ रिप्लाई अर्जेंटली करना है. हाँ मैम, आप किसके गाने सुनते हो पुराने? मैं ज्यादातर गाने ही नहीं सुनती. पूरा दिन कोई गाना नहीं सुने तो सुनती. किशोर कुमार है? किशोर कुमार हाँ सुनती हूँ, पर लाइक अब you will never hear me, I mean you will never see me hear any music per se full day, except it is a भजन. और आजकल मुझे ये लगा है कि मैं भजन, थर्सडे का भजन सब साई भजन होता है. आजकल भगवान ही जाने, मुझे बोला गया कि बुरा वक्त चल रहा है दुनिया में, और whatever my friends, some of them have been sick, my relatives have been sick. So I've been listening to Mahamrityunjaya Jap, and I've been listening to some mantra just supposed to, I can't say it 108 times, so I listen to it. I say it 11 times, but I don't know how to pronounce it. So I say it when I'm listening. And yeah, every day there is Hanuman Chalisa, which I do, which I've been doing it for 20 plus years. So those, but songs only when I'm clubbing. Or maybe when we are driving, maybe. Otherwise, I'm not into songs that much. हाँ, तो किधर गया Zoom chat? किधर गया हमारा YouTube का stream? बालाजी, हाँ, बालाजी rant or not, always here. Okay, so sweet, thank you. अच्छा बालाजी, तुम rant इसलिए आया क्योंकि अर्शी ने कुछ बोला. हाँ, और उसने बोला करके उसने कुछ लिखा है. I know I've read your question. Penguin Hope, just give me some time. So तो क्या बोलते हैं, हाँ, उसको कुछ पोस्ट करना था. मैंने अर्शी को बोला कि अपना नाम लिख दो ताकि लोग ऐसा ना बोले कि मैं क्रेडिट ले रही हूँ. अब क्या हुआ कि इफ यू रिमेम्बर, कोई पोस्ट था, कोई वीडियो थी, तो उधर किसी ज्ञानी आदमी ने मुझे ज्ञान देने की कोशिश की कि यू नो आई हैव नोटिस्ड यू हैव डन इट बिफोर एंड यू आर डूइंग इट नाउ, बट यू डोंट गिव क्रेडिट टू द थिंग. एक तो भाई साहब, आप लोग रोज गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ इतने सारे जो मैसेजेस जाते हैं, इतने सारे जो मीम्स जाते हैं, इतने सारे जो वीडियोस जाते हैं, आप लोग कब क्रेडिट देते हो किसी को भी? हम जनरल लाइफ में नहीं देते, करेक्ट? बट मैंने जब ये वाला पोस्ट किया था तो मुझे किधर से मिला था? जनरली हमको कहीं से फॉरवर्डेड आता है तो हम उसको डाउनलोड करते हैं, फिर मैंने उसको अपलोड किया. कभी कभी मुझे जब कुछ अच्छा लगता है तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देती हूँ, पर उसमें तो उधर लिखा था किसने बनाया है वो वीडियो. अब उसको मैं क्या और कितना क्रेडिट दूं, राइट? अगर से वो आता है क्रेडिट लेने के लिए तो एवरीबडी वो अपना, ऑफ कोर्स देन व्हाट आई, ये इतना तक ठीक था, दैट इज टेलिंग मी समथिंग, आई टुक इट वेरी नाइसली, आई वांटेड टू रिप्लाई, तो मैंने पूरा रिप्लाई कर दिया. और सेंड जब क्लिक किया ना, दिस पर्सन डजंट अलाउ यू टू रिप्लाई टू देम. अब anybody who does this shit either have the guts to write to somebody with your settings open. You cannot do something like this, that you will write to somebody and you do not keep your settings open for them to reply to you. तुम कौन से इतने महान आत्मा हो कि तुमको कोई रिप्लाई ना करे? तुम्हारी इतनी privacy है तो bloody don't fucking write. Now there are two things, right? One is in the same post. I didn't want to hide it. So I will obviously reply. I said, one, it was good content.
2, it is because it's helping people. 3, it is a gentle reminder. 4, I never put my logo over there, right? If I put my logo, that means जिन्होंने अभी अपना मेरा वीडियो देखा है, by the way, have you all bloody watched the breadcrumbing video? It is one of my most long content. Yet nobody, except for 3-4 people who admired my work, तूने देखा और तूने कमेंट भी नहीं किया उधर. ऐसे 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 लोगों ने पूरा कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, इसीलिए रिकमेंड. मेरी गलती है, तेरी गलती है, मेरी गलती है. मैं किसके लिए बनाती हूँ ये सब? तुम लोग के लिए. तू साला इतना मेहनत करते हैं, एडिटिंग वाले लोग इतना मेहनत करते हैं, थोड़ा लाइक्स इतने आए पर कमेंट्स भी नहीं आते. क्यों लेजी क्यों है तुम लोग? हाँ, तो पूरा देख के करेंगे मैम. अच्छा, मोहित को ब्रेड क्रम्बिंग समझ में ही नहीं आया. बिल्ला है भगवान, 1 घंटा ऑडियो, 1 घंटा नहीं, सॉरी, आधा घंटा, 20 something minutes was audio and video was separate and you still didn't get it. हाँ, part 2 है ना, with all explanation of tips. और इतना सिंप्लीफाई किया इस टर्म को, इतना सिंप्लीफाई किया, from the story to how one can breadcrumb, what to do if they do it. Anyway, we were ranting. So this is what I'm trying to say. So this person not only did allow me to comment in the post, guess what? This person doesn't even allow anybody to DM him. Then why the fuck do you write to anybody? Either have the decency, the etiquette, and the guts to say it with a real profile, 1. 2, when you write to somebody, give them a chance to explain and justify or give you galis, whatever. If you are saying something, they are over. But I didn't say anything bad. I was just explaining myself, and then my logo was not there. I was not taking credit for anything. Yes, we all like good mornings and inspirational posts. अभी हर चीज तो मैं इंसान नहीं लिख सकती, मैं कंटेंट क्रिएटर हुई नहीं. थोड़ा बहुत जो बनी हूँ, तुम लोग के गनीमत बनी हूँ, क्योंकि तुम लोग मुझे बोलते हैं मैम इस पे वीडियो बनाओ, मैम उस पे वीडियो बनाओ. मैं कोशिश करती हूँ. Not that I'm very successful at it, but I tried. Now, don't be so like harsh on me and saying I am taking credit. And मेरे को क्रेडिट लेना होता ना, तो मैं बहुत स्टूपिड चीजें करके, अपना लोगो लगा के, प्रिटेंड करके, वर्ड्स को रिवर्स करके, उनका लोगो ना रखते हुए, कुछ निकालते हुए नहीं, अपना नहीं लगा, सब मैं कर सकती थी, पर मैं ऐसा नहीं करती. मुझे आई एम बेटर देन दैट. आई डोंट वांट टू टेक एनीबॉडीज क्रेडिट. इफ आई पोस्ट समथिंग and I genuinely don't know, I didn't have the time to go and research if this person exists, doesn't exist, इसने उसका चोरी किया, उसने उधर से लिया, इधर कितना चलता रहता है यार, पूरा दिन चलता रहता है. इतने सारे आपको फॉरवर्ड्स आते हैं. मुझे बताओ, हम जब ये लाफिंग मीम्स और वीडियोस देखते हैं, कुछ भी फनी वीडियोस जहाँ कोई गिर रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई अभी वो गेम वाला वीडियो चल रहा है आजकल की, वो यस नो वाला, किसी ने देखा है वो वीडियो, जिधर एक लाइन है और वो बोलता है यस तो यस पे जंप मारना है, नो तो नो पे जंप मारना है, अगर से आप कुछ गड़बड़ होती है तो आपका फेस वो आटे में डालते हैं, whatever, मतलब इफ यू फॉल्टर. अब किसको याद है कि वो वीडियो किसने बनाई है, कहाँ से आई है, किसको क्रेडिट दें? किसी को कुछ याद नहीं रहता. अगर से समथिंग इज मेकिंग यू फील बेटर, यू आर शेयरिंग इट, why are you trying to unnecessarily insinuate that somebody is taking credit? I'm not going to sit and make like, yes, I do have some of my quotes which were supposed to go on Redbubble. According to Kanhaiya, he thought it was good, but we never ended up doing it. He's going to kill me. So I didn't show interest, then we lost interest. But I have some of those. If I want to, I could. I still have my logo and all, and those are original, and I've never posted them. So please don't insinuate that I do such shit things. There are better things in my life. This is my rant of the day. I hope I made Balaji and everybody happy. And Balaji, thank you, darling. You've been very sweet. मैं ये नहीं कह रही थी मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि हमेशा तुम ही contribution करते रहते हो चैनल के towards, और कोई नहीं करता, तो I don't want you to like feel pressurized to do that. Okay, that's all I wanted to say. Okay. हाँ बेटा, आपके राइट साइड में एक ड्रॉअर अपने आप खुल गया. क्या खुल गया? ड्रॉअर भूत ने खोला. ये वाला नहीं, इस साइड, दूसरे लेफ्ट साइड. नहीं, अरे पागल. ये ना, ये जो ड्रॉ है ना, इट वर्क्स विद प्रेशर. तो व्हेन थोड़ा भी बाहर से डोर खुलता है ना, तो वो हवा से आगे आता है. नहीं, वो महर्षि भूत है. सो इट्स नॉट वेरी टाइट. आई विश, सी मैं तो वैसे ही भूत प्रेत में नहीं, अगर से खोला होगा तो भगवान ने खोला होगा.
कि वो बोलोगे क्योंकि एक मिनट, तुम लोग को याद है मैं पॉपकॉर्न पे भी लाइफ लेसन बोलती हूँ, तो मेरा बेटा हमेशा मेरे को बोलते ओह प्लीज डोंट स्टार्ट विद योर लाइफ लेसन अगेन। तो आई एम थिंकिंग इसका लाइफ लेसन क्या हो सकता है? डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। वो ड्रॉवर में कुछ तो भी रखा होगा, गॉड इज रिमाइंडिंग यू टू डू समथिंग विद व्हाटएवर इज इन देयर। नहीं यार, कॉफी कप से आई कैन शो यू ऑल माय गुड कॉफी कप। हाँ सोने के लिए सो नहीं जाओ, नहीं, इतनी आई कॉफी टेल मत यू, पियो। ओके आई कॉफी इज गुड फॉर हेल्थ, क्या बोल रहे हैं? नहीं बट लाइक सो जाओ, सोया करो, बस कॉफी पी पी के जागो मत। Okay, कब से याद आया? So my husband just reminded me when we were on a trip. So I have these fabulous, I don't remember the designer, but from Taiwan we bought these cups. It's peacock shaped, this teapot and this whole beautiful carved cups. And I have not used it for almost 5 to 6 years. तो जब तूने बोला ना कि गॉड ने कुछ बोला है कि यूज कर ले, तो मुझे अचानक इस कप्स को देख के वो कप्स उधर रखे हैं, इधर नहीं रखे हैं। तो आई लव गेटिंग बाइंग कप्स, आई डोंट यूज इट। सो चाहे आधा हो या पूरा हो, लाइफ में हमेशा फुल नहीं होगा, हाफ भी होगा, तो उसको अप्रिशिएट कर। मैं मेरे घर वालों के लिए मग्स वगैरह लेके आता हूँ, ये लोग फोड़ देते हैं। मैं दार्जिलिंग गया था, आई वेंट फॉर अ ट्रेक वंस नेपाल में, तो वहां पे दार्जिलिंग से मैं स्पेशल ऐसे ड्रैगन्स वाले एनग्रेव्ड कप्स लेके आया था गोल्ड के। ओके, फोड़ दिए। किसने? नाम एक तो मेरी नहीं माँ रहा ने, है। एक मेरी बहन ने। दीदी, मैं दीदी किलोमीटर पैदल चल के लाया था वो कप। दीदी क्या बेटा? हाँ सुनो, तो लाइक व्हेनेवर आई हियर दैट अगर भूत आ जाए तुम्हारे सामने तो क्या करोगे, आई ऑलवेज से कि यार कोई आए तो सही, आई विल बी एन एक्वेंटेंस टू देम, लाइक आई विल जस्ट बी फ्रेंड्स, आई विल बी लाइक कोई क्या तो भाई, क्या होगा। हाल चाल। नहीं, मैं तो कुछ नहीं करेगी, मैं लाइक हाय हेलो करेगी। पॉज आई ड्यू विल लाइक टू कैसा कनेक्शन चल रहा है। वाले, पॉज ड्यू टू पुअर कनेक्शन। अच्छा ओके, वैसे आज के इंडियन खुद को इंडियन क्यों बुलाते हैं? आजकल के इंडियन खुद को इंडियन क्यों बुलाते हैं? वो कल्चर संस्कार वगैरह पूरा जा रहा है ना, जस्ट टोटली वेस्टर्न कल्चर, दैट्स व्हाट यू मेंट। उल्टा नहीं बुलाते हैं आजकल के इंडियन, खुद को इंडियन कहाँ नहीं बुलाते हैं। मैं कितने सारे इंडियंस को देखती हूँ जो अमेरिका जा गए, I'm American, I'm Australian, even though they are born in India and just their passport perhaps is changed, but ठीक है। So ऐसा होता है। अरे शुभम, what you want view on non-veg पूछा ना? Oh, I eat non-veg. Please let's not get into this ज्ञानबाजी of non-veg और non-veg. जिसको खाना है खाओ, जिसको नहीं खाना है मत खाओ। वीगन बनना है, जो करना है खाओ, नहीं खाओ, ये सब चीजें। Plants also have life, by the way. ऐसा बोलते हैं सब, कुछ लोग बोलते हैं उनमें थोड़ा कम फीलिंग है, कम जान है। अब यार, whether we like it or not, this industry is not going to stop anytime soon, right? So whether we एट like एंड ऑफ द डे मैम, इट्स फूड। नेचर का रूल है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। आई मीन दैट्स माय बिलीफ। हाँ वो भी है। तो जिंदा रहने के लिए कर रहे हैं ना, हम कौन सा ऐसे फालतू का कर रहे हैं, जिंदा रहने के लिए कर रहे हैं, वो ईटिंग बोलेंगे देम। सब्जी खा के जिंदा रहो, हम सब्जी भी प्लांट खाएंगे। में भी जान है। यहाँ पे तो आप गलत हो। क्या नाम है आपका? अक्षय? आर्यन। आर्यन नहीं नहीं, यहाँ पे तो आप टोटली गलत हो यार। जिंदा रहने के लिए तो इतना सारा फूड प्रोडक्ट और भी है। हम सिर्फ अपनी टेस्ट और टंग के लिए खाते हैं। ये बहुत हार्श ट्रुथ है, खाने वालों को हजम नहीं होता, बट ट्रुथ ये यही बात है। सही है। एक मिनट, रिलीजन, पॉलिटिक्स, फूड, टाइम आउट, नो डिस्कशन। खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, दूसरों को ज्ञान फैलाना बंद करो। Did you just say time out? टाइम आउट Yes. टू प्लीज पीपल। वो मैं डिस्कॉर्ड वाला करने लगी थी। नहीं टाइम आउट नहीं। आरशी बीइंग आरशी। मैं बोल रही हूँ जैसे अपने जिंदगी में जिसको जो पहनना है, जो खाना है, किसी को तुमको पूछने की जरूरत नहीं है। आपका फ्रीडम है, खाना नॉनवेज खाना है, सब्जी खानी है, इस चश्मे को खाना है, तुमको ये प्लास्टिक खाना है, झगड़ा मत करो। वैसे भी तुम्हारे ज्ञान फैलने से या नहीं फैलने से कुछ नहीं होगा। जो करना है हम वैसे ही करेंगे।
Okay, it's like someone telling me not to wear shorts. I'll fucking do it even more. Okay, so just shh. No politics, no religion, no food, clothes. ये सबका इंडिविजुअल चॉइसेस है, ठीक है। और जो अब बोलोगे अनार मत खाओ, मेरे को आपको अपने पापा दिखाने हैं, रुको। मैम फनीली इनफ सच के पापा की फोटो पापा? नहीं, सच के पापा। किधर है? जस्ट कह रहा था। दीदी आपके शॉर्ट से एक बात याद आ गई। वो असली में फादर थे। क्या हेलो, हाय, हाउ आर यू? गुड टू सी यू। अचानक कैमरा लेके चले गए यार। आदाब। भाई अचानक लेके चले गए कैमरा। क्या चल रहा है? मेरे को ऑलमोस्ट ऐसी फीलिंग आ रही थी कि पापा से अप्रूवल ले रहे हैं कि मैं रचना दरियानी को देखूं या नहीं देखूं। रचना दरियानी मुझे बोल रही है नॉनवेज खाने, नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रही। मेरा काम आप लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाना है। आपको ये नहीं सिखाना है जबरदस्ती कि लाइफ में ये मत करो, वो मत करो। कुछ चीजों में मेरा हार्ड एंड ड्रिंकिंग एंड ऑल वो मत करो, ऑब्वियसली दैट्स लाइक क्या ड्रिंकिंग वगैरह वो सब मत करो, बट वो तो सही चीज है बोलने। नहीं, पर कुछ लोग ड्रिंकिंग भी करते हैं, मॉडरेशन में करो, बट स्मोकिंग और ड्रग्स नहीं करना, ठीक है। नमस्ते साहिल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? तो शुभम, आपका मैंने आंसर कर दिया। अच्छा, तो दिल्ली से नहीं है क्या? No, I don't know much about parapsychology. We spoke with Jay. नहीं, what was the guy? पता नहीं पैरासाइकोलॉजी क्या होता है। Who was the guy? अरे मैंने इंस्टा ध्यान ही नहीं दिया। एक मिनट बेटा, ओके। क्वेश्चन, सॉरी इंस्टा पीपल, हम कंप्लीटली भूल जाते हैं यूट्यूब और जूम के चक्कर में, यहाँ और लोग बैठे हैं। Okay, how to do dopamine fast? How to do dopamine? You mean how to increase dopamine? So देखो, ऐसे कुछ क्विक रिलीज तो इतना नहीं होता, बट अगर से आप हेल्दी खा रहे हो, सो रहे हो, एक्सरसाइज इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वे आई गेस, एंड क्रिएटिव प्रैक्टिसेस जिससे आपको खुशी मिलती है, आप वो कर सकते हो। नेचर इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वे, आसमान के नीचे हवे में, तो ऑटोमेटिकली आपका। पर ये क्विक फिक्सेस में मत जाओ। एवरीडे अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखोगे तो ये सब क्विक फिक्सेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट यस, अगर से आप लो फील कर रहे हो, दिस इज डोपामिन फास्टिंग। I don't know about fasting for dopamine. I know how some people believe that it helps, fasting में होता है, but मैंने इतना रिसर्च नहीं किया इस टॉपिक पे। हम सिर्फ बेसिक चीजें करते हैं हमारे चैनल पे। हम इतना मुझे शायद उनसे बात करनी पड़ेगी, सदगुरु जी से, कि फास्टिंग से क्या क्या। हम इतना तो कभी सोचा भी नहीं था। सुबह सुबह उठ के जो खाने को मिल जाए वही बहुत है कॉलेज को जाने से पहले। because you're busy or what? बिजी हम सुबह सुबह उठ के पहले कॉलेज को भागना पड़ता है, रिक्शा से जाता हूँ। हाँ। जो खाने को मिल जाए वही बहुत है। हाँ, हमारे जमाने में हमको जब क्या बोलते हैं कि बटर ब्रेड, जैम ब्रेड, अंडा, क्विकली हमारा भी वही है। हाँ, मैं तो कितने बार कॉलेज में जाने के बाद ही खाता हूँ। कॉलेज के बाद वड़ा पाव वगैरह खा लिया, या सम सैंडविच और समथिंग इन द कॉलेज। वही होता है मोस्टली ब्रेकफास्ट। ओके, सो ये तुम लोग को याद है किसके साथ, जय अलानी, सॉरी, who asked me about parapsychology? Please, you are asking what is that? It is just like the phenomena which is you cannot explain. I read about it abhi Google pe. By orthodox, yeah. So like if you remember, Jay Alani he is into paranormal activities, as in he tries to explain how these things don't really exist. If you people remember the podcast with him, right? Yeah, hypnosis is not anymore considered paranormal. Okay, it is actually. What is the name of the guy? Jay Alani. I did a podcast with him, and he was discussing Jay Alani. I'm following him. You will see him.
So he when he was on my podcast, he was explaining that these claims of people having experiences during near death, or when they are so-called possessed, or telepathically, can anyone? So we did discuss all this. I don't know much about it. I just know, I don't know why hypnosis was put in that, because it's actually, if you do the research, you will see whether it is smoking, whether it is IBS and weight loss and other things. And so many of my clients, I think it should be by now into the mainstream of psychology. So yeah, but the other things of paranormal and all that stuff, no idea. I don't believe all this. So and neither does Jeff. And I remember when Shweta was discussing, like हम कौन सा stream में बात कर रहे थे about astrology and ये जो palmistry and all that. So I don't think even I don't believe, and he also doesn't believe all that. So each one to their own. Okay, podcast with Shweta. When I who asked me the other day that somebody wrote to me DM, ma'am we miss, और अभी beginning में please उसको जाके लिखो, मुझे लिखना बंद करो. I'm ready to do the podcast whenever he is ready. Hello ma'am, good to see you. Hi Mansi, how are you? Good to see you here. हम नाम की स्पेलिंग वही है ना जो डाली है मैंने चैट में? I think so. जय I think so. नहीं है? Paranormal लिखा होगा उसके next to his name. Like, I am quite into paranormal activity, and so find his videos are super fun because he shows you how much bullshit there is into it. Okay, Balaji, what did he say about my rant? So I have to miss a lot of. God is asking you to invite all महान आत्मास for coffee. आ जाओ हम कॉफी पे चलेंगे इंडिया में. पक्का मैम, एड्रेस दो. ये सब बोलना तो ठीक है, but I don't know. हम आ जाएंगे सही. तुम कहाँ रहते हो बालाजी? और अरे तू कहाँ रहता है? मैं रहता हूँ महाराष्ट्र, औरंगाबाद. Never been. I don't know where he lives. कोई तो ऐसे जगह बताओ जो इंसान मिल भी सकता है. आप लोग ऐसे ऐसे जगह रह रहे हो, मैं कैसे आएगा? हाँ मुंबई. बेचारा मृदु मेरे को बोल रहा था he might move from there, and I was like, ma'am, you have not come to Bombay. I said, I don't. Last few visits to India has not been Bombay. So how to, yeah. Okay, Sahil, ma'am, आपसे help लिया था 1 year पहले, बहुत helpful रहा, feeling good in life. अब now looking forward to abroad studies. I am so happy, Sahil. Thank you for the update and thank you for appreciating my work. Thank you. Okay, Mumbai. अच्छा, he also live. Oh, Uganda. ये ज़्यादा नहीं हो गया? 72. हैं? एक तो ऐसा नाम रखा है तूने, हैं? बहुत मस्ती है आपको. बट आपको हम युगांडा में मिलने नहीं आएंगे. ओके. हाय तनवीर, आई एम फाइन, आई होप यू आर वेल. अभी तक इंस्टा के कुछ लोग बचे बेचारे, थक गए मेरे को ये करते. रुतवी, आई एम कमिंग बैक ऑन 7 जुलाई. रचना, वी हैव टू मीट. यस यस, खाली आजा. 7th को आ रही है, हम 8th को मिल रहे हैं. रुतवी, डीएम यू झटपट. खाली डीएम का तो तूने रिप्लाई किया नहीं, पता नहीं अभी तक है कि नहीं स्ट्रीम में. आई एम गोइंग टू राइट टू यू. आई हैव योर नंबर, आई सॉ इट चेंज. ओके, हेलो मैम, आई गॉट काउंसल couple of months, got help a lot, feeling a lot better, or I've also been very productive since then. Thank you, Jay. I'm so happy. So many of my ex-clients showing up and appreciating my work. Thank you. शुभम कुमार, आपने सेम यूट्यूब पे क्वेश्चन पूछा था, हमने आपको जवाब दिया था और आपको दोनों क्वेश्चन का जवाब मिल गया था. ठीक है ना, हम फिर से जवाब नहीं देंगे. मंजीत, हाय सानिया दरियानी, मैम इज नॉट रीडिंग चैट्स हियर, आई गेस. आई एम सो सॉरी. अब कैसे एक इंसान कितना पढ़े? बच्चा लोग मैम की आंखों पे थोड़ा तरस खाओ. ठीक है. ब्रूस, ओके. My girlfriend is suffering from grief since her mother died. I'm sorry to hear that. It's very hard to console her. She cries all the time when the topic comes up. I want to know how to comfort her during grief. Okay. Bruce Wayne, one, I'm sorry to hear about your girlfriend's mom. If she sounds like maybe in your 20s or early 20s or 19. So it's going to be one of the toughest times to lose your parent because you're already very emotional. Your brain is not developed. Plus a mother figure is
if she had a very good mother, so she's going to miss her even more. So there is no quick fix to the solution to this problem. It is going to take time. She's going to go through the entire grief cycle of crying and denial and feeling guilty sometimes that I wish I could have done more, and all of that. And finally the acceptance can come. It can take a year, or depends on the person to person, depends on the relationship, but all you can do is be a good listener, take care of her. Like I said, even earlier when somebody said, "Okay, aur kya kar sakte hain aap?" You can take flowers, you can take food, you can take them for a movie, you can do a lot for people, take them for a walk. And try to avoid completely आप triggers avoid नहीं कर सकते, क्योंकि उसी घर में अगर से उसकी पेरेंट मॉम रहती थी, उसके घर में पूरा ट्रिगर्स है, तो अगर से हो सके तो उसको थोड़ा शॉर्ट ट्रिप्स पे लेके जा सकते हो, उसको नए कोर्सेज में एनरोल करने बोलो, but give her time, let her do some journaling, let her use some hypnosis to help overcome the grief, make sure she's eating on time, and only with time. And if she's very troubled, ashwagandha low, it helps you stay more calmer, and make sure that she's getting enough vitamin D, and if not, take a multivitamin, and try to let her come to terms with it. At this time of your life, it's not easy when you lose a parent. It's not going to be easy. So just be a little patient. If she's crying, let her cry. And some of us get like very impatient कि यार हो गया ना यार, तेरी हो गया, कितने बार रोएगी, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है? और ऐसा मत बोलो कि I understand what you're going through. If you have not experienced it, then they'll say, what do you know? You never lost a parent. How the hell do you know? And the thing is this, कि कितने भी साल हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं, अगर से हमारा उनका रिश्ता अच्छा रहता है तो we always miss them, and tell her that he's her mother is watching over her, and she would want her to see her happy, because God forbid जिस दिन मैं ना रहूं और मेरी बेटी सारा टाइम रोते रहे और पढ़ाई पे ध्यान ना दे, अपना हेल्थ पे ध्यान ना रहे, मेरा भी like, if anyone is spiritual and religious, we believe in the soul and all that, right? If she is one of them, tell her कि तुम्हारे लोगों के आत्मा को दुख पहुंचता होगा, ठीक है, let her cry, nobody is saying कि रो मत, but make sure that she's not self-harming, she's at least eating well. धीरे धीरे डिसेंसिटाइज होता है एक इंसान, वो सेम चीज जैसे अब माय डैड हैज पास्ड अवे, इट्स बीन ऑलमोस्ट 28 years, and if I would speak to you about it even right now in the proper order of how it happened, I'm 100% sure I'll end up crying, even though it has been so many years. I pray to him every morning, as in हम मेरे फोन पे मेरे इन-लॉज का या मेरे डैड का या जो भी मेरे लिए मेरे नाना नानी दादा दादी सबके फोटोज है, तो पर सबसे ज्यादा ट्रिगर मेरे को सिर्फ मेरे डैड के फोटो को देख के होता है, तो वो इतने सालों बाद भी आई थिंक नहीं जाता है। मे बी आप रोगे नहीं, पर आपको बुरा तो लगेगा, आप उनको मिस भी करोगे, और बट आई स्पीक टू माई फादर, सो डू टेल हर दैट they're listening. If they're listening or not, I don't know. I can't prove it, but it feels good that they're around, because we human beings are, we feel bad losing our loved ones, right? So we'll do anything to perhaps make ourselves feel better, है ना? तो अपना उसको बोलना अपना ध्यान रखे, और if I can help, if I can talk to her, most welcome. Please give her my contact, and God bless. जी बोलिए। मैं सारे हाँ बेटा बोलिए। अभी ये ऑफ होने वाला है ना? क्या ऑफ होने वाला बेटा? नहीं, मैं बैठी हूँ, कहाँ जा, एक मिनट, मेरे को ये पहले पढ़ने दो कि कहाँ मैं भूल ना जाऊँ। हाँ, युगांडा के बाद, हाँ अब बोलो। एक मिनट बस, आप ये बता देना कि मेरी आवाज आज ठीक आ रही है। नहीं, मैंने 5G फोन ले लिया। क्या ले लिया? 5G फोन। हाँ ओके, अच्छा आवाज आ रही है बेटा। 30 लेने थे, 30 नहीं अच्छा, वो गाना आ रही, ठीक आ रही है? आवाज ठीक आ रही है? हाँ आ रही है। क्या यही कुछ छुट्टी है क्या? ऐसे ये कोई मेडिकल स्टोर है यहाँ पे? तुम्हें इंजेक्शन और वो दे दो, जाओ। ठीक है, तो मैं गाना शुरू कर रहा, ठीक है?
That's it. Thank you. Sarim, as always. इस बार आवाज ठीक आई थी? हाँ, अभी आवाज आ रही थी। ऑल्दो मेरे हिसाब से वो म्यूजिक हमेशा कट जाता है, क्योंकि तुम्हारा वॉइस का पेस, म्यूजिक का पेस जब तक दूसरे तक आता है, ऑब्वियसली इट कैन नॉट रीच ऑन टाइम। तो तुम यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है, तब तुम्हें समझ में आएगा व्हाट आई एम सेइंग, बट यू सिंग रियली वेल एज यूजुअल। एंड किसी ने कहा बड़ा बिंदास है। I know Siren for almost 3 years and he's been singing in Discord and here and मेरे को बिंदास बनाने में सबसे बड़ा हाथ इनका है। हाँ, अच्छा, मेरा हक है उनको बिंदास बनाने का। एक टाइम पे वो गाना नहीं गाते थे, so he had left his passion and that's how I know him. So today he sings for me and all of you. So thank you so much, Sarim. It was wonderful. And किसी ने कहा, am I teasing? I'm not teasing anyone. I'm reading YouTube chats and मस्ती कर रहे हैं। आशु पटेल, hi. And who wrote something. ये इंस्टा का प्रॉब्लम। क्या काला चश्मा लगाते आ गया अक्षित? काला चश्मा तू लेकर आ, मेरे लिए एक काम कर, तू पूरा डिफरेंट ब्रांड्स के काले चश्मे, सनग्लासेस लेकर आ, मैं पहनना स्टार्ट कर दूंगी। डीप वाइब्स, व्हाट एम आई डूइंग? आई एम टॉकिंग टू यूट्यूब, जूम एंड इंस्टा एट द सेम टाइम। ओके, एक मिनट, क्या मैं एक और गाना गा दूं? एक मिनट बेटा। आदित्य, आई एम वेल। Raj, ma'am, no, why would I be tired? Because I have not done this for ages. I've just come back from a vacation. I'm wearing orange, all bright and whatever. So no, I'm fine. Hi, Dr. Gupta. Good to see you here. Namaste ji. I'm looking forward to hopefully a podcast with you. I will write you. Ma'am, can you recommend me a book for increasing my concentration? Cannot recommend a book, but I can give you resources to improve your concentration. Please contact me. What a sweet voice. Who is he? He's Sarim, the songster. You can follow him for more songs. And Dr. Ayush Sankrit, hi. Sachin, hi. Ayush, how have you been? Shubhansh, I'm well, thank you. I hope you're fine. TF Amen, you're looking beautiful in orange or tangerine. You've got the color right. It's tangerine. Thank you so much. Man, where are you? Why are you far? Why are you? तो क्या लिख रहा है? Why are you? I don't know. Okay, मैम गाना बिना लाइव करे भी सुन सकते हैं। I know. But उसे गाना था मेरे लिए। Why can't you just enjoy something? Exact, Ujjwal. I can't stand fan. तो क्या लिख रहा है? Stupid on it speak. I know तेरा नाम stupidity on it speak, but 4 sentences जो लिखे मेरे एक भी पल्ले नहीं पड़ा यार। Come on. So please can you all like इतनी दूरियां क्यों? अच्छा, इतनी दूरियां क्यों? मैम वो बोल रहे हैं, अच्छा, why am I so far? Where am I so far? You mean distance wise I'm in Dubai, or from the camera I am so far? Either which ways, this is the best we can do. Okay. एक सेकंड, अब YouTube पे एक मैसेज आया है, मुझे पढ़ने दो प्लीज, नहीं तो लोग बोलेंगे करके मैंने इनका रिप्लाई नहीं किया है। क्वेश्चंस किसी ने क्या लिखा? हाँ, तुमने कुछ लिखा था, किधर गया वो? साहिल ने कुछ, हाँ, साहिल ने लिखा, मुझे एकदम से याद आया, आपने हेल्प किया था 1 ईयर पहले, सोचा लेट ही सही, अप्रिशिएट तो कर लूं, आपका चैनल गुम हो गया था, अब मिला है। चैनल गुम नहीं हुआ था, तुम लोग इतना सारे चैनल में सब्सक्राइब करोगे तो मेरा चैनल कहाँ से नजर आएगा? वो एक आध बार जो मेरा कंटेंट क्रिएशन होता है, अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी भी गलती नहीं है, मेरी भी है। चलो इंस्टा पे, हाय कृष्णा किधर गया? फिर से मैं भूल गई, किधर था? Do you watch Acharya Prashant? No, I don't. Why I don't? Because I don't have so much time. It's not like I disrespect anybody. It's just that मेरे को टाइम नहीं मिला है। मुझे एक बुक फिनिश करना है, वो भी नहीं गया। राजन बोरा, हेलो मैम, बहुत ट्राई किया बट वन साइडेड लव से ओवरकम नहीं कर पा रहा। 7 साल का क्रश लव था, उसको पर से किया था, उसने मना कर दिया। उसको प्रपोज का स्पेलिंग प्रपोज किया था, उसने मना कर दिया। वो मैरिज कर रही है नेक्स्ट ईयर। वो आई एम सो सॉरी। मेंटल संधू जट पंजाब वाला, मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करो, हम इसके बारे में बात करेंगे, हम इसके लिए आपको रिसोर्सेज देंगे। ये 4 शब्दों से ठीक होने नहीं वाला है।
आपको थोड़ा टाइम लगेगा, स्पेशली अगर से आप बोल रहे हो 7 साल का एक इंसान इधर 4 साल से, एक इंसान 7 साल से, क्या बोलो बच्चा लोग आप लोगों को। स्टॉप फॉलिंग फॉर पीपल हु डू नॉट फॉल फॉर यू यार, इतना टाइम मत रुका करो। There are more people in this world who will appreciate you, give you value and time and love in return. As beautiful it sounds, एक तरफा प्यार की ताकत तुम क्या जानो, please, it's not very good for you all, especially when you people have a tough time when they're getting married or they're dating someone else. It's not easy, right? So I mean, if you want to hurt yourself, मैं तो हमेशा बोलती हूँ जितना आप कोशिश कर सकते हो, don't do this one तरफा thingy. If someone says no, move on, walk. Got better things in life to do than to be stuck there for so many years. What do I think about masculinity and femininity? You know, I find, did you see the podcast with the latest podcast? Maybe I'm really tired. I can't even think of it. So it's a blend. It's like females have some masculine energy and masculine have some female energy. I think there are social constructs, of course. ये मत पहनो, उधर मत जाओ, इधर मत बैठो, रात को लड़कियां नहीं जा सकती, लड़के जा सकते हैं. Of course there are these things, but धीरे धीरे I think things like even pay scales, right? There is also this thing कि men work more, women don't need to get paid. So many things, right? And लड़कियां ही खाना बना सकती है, लड़के नहीं कर सकते हैं. और बच्चा संभालना है तो माँ करेगी, बाप नहीं कर, फादर नहीं कर सकता. सॉरी, माय हिंदी इज क्वाइट बैड. सो प्लीज, आई थिंक ये सब हमको धीरे धीरे करके चेंज करना जरूरी है. सब चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आई थिंक if you people watch Sarath Kalra also, I think sometimes he says something really interesting, and recently he was talking about how females are also turning as promiscuous or casual dating, or that one is they're like, he's like, the female energy is so beautiful, why do you want to like settle for every Tom, Dick and Harry? And then he rated the man as an Uber driver like 3, because he's like, सब जगह तो तुम average ही perform करोगे, average ही दोगे अपना life में. So it was a very interesting point. So I think it's females are beautiful, men have their own certain things. I don't think कि ये जो आजकल है ना कि the women also should pay, the men should not be chivalrous. थोड़ा chivalry अच्छी बात है यार, थोड़ा old school भी होना गलत बात नहीं है. Some of them here are quite old school. I think mix होना चाहिए. इतना भी disparity, इतना hatred, इतना men over women, सब में अपनी अपनी अच्छी qualities होती हैं. तो यार, feet are cold, rest of the body is sweating, बड़ा अजीब लग रहा है. तो मेरा भी feet by the way अभी cold है, और क्योंकि यहाँ AC on है, मेरा BP low हो गया है, but मुझे गर्मी लग रही है क्योंकि मैं बात कर रही हूँ. तो ऐसा होता है, इतना ओवररिएक्ट ना करो, थोड़ा डीप ब्रेथ्स करो, इट विल बी फाइन. मैम, सारा फाइनेंशियल प्रेशर मेन के ऊपर आता है, इसलिए ऐसा बोलते हैं. आजकल थिंग्स आर चेंजिंग. मेरे कितने भाई लोगों की शादी और गर्लफ्रेंड्स है, सारे गर्लफ्रेंड्स काम कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां काम नहीं कर रही और फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर रही है. मेरा जो छोटा भाई है, मेरा जो बड़ा भाई है, सब ओके, ठीक है, आई एम नॉट अर्निंग पर से, बट आई एम वर्किंग, राइट? बट ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग इनकम, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. Just kidding. So I'm just saying that there are a lot of women who are working also. Look at Shweta, his wife also works. So please, let's not go into that, right? Yes, होता है प्रेशर आप लोगों को, बट इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है कि लड़कियों ने पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लड़कियों का किसी और के घर जाना है, तो हम क्यों उनको पढ़ाई लिखाई करें? क्योंकि अगर से वो पढ़ाई लिखाई भी करेंगे तो अपने इन-लॉज को देखेंगे. तो ये सब हमको चेंज करना है ना. ये किसने किसने? हमने तो किया है ना, एज अ सोसाइटी, राइट? इसको भी तो चेंज करने में टाइम लगेगा. अगर से मैन एंड वुमेन बोथ टेक केयर ऑफ द इन-लॉज, द मैन टेक्स केयर ऑफ द वाइफ साइड एंड वाइस वर्सा, ये स्ट्रेस कम हो जाएगा. ऑल्सो मेनी अ टाइम्स आप लड़कों पे आता है, लाइक आई वाज एक्सप्लेनिंग इन द अर्लियर थिंग कि क्या अर्निंग वुमेन भी बोलती है मेन पे कर, तो वो मुझे लगता है करके वो थोड़ा ओल्ड स्कूल होता है कि अरे व्हाई इफ द गाय कैन नॉट अफोर्ड टू टेक मी ऑन अ डेट. सी ये किटपिट आई थिंक देन शेयर करो, लाइक माय डॉटर इज डेटिंग समवन, दे शेयर. सो लाइक लॉट ऑफ द
places he only paid, and then we said, okay, give him a gift or pay for something else and all that. So कुछ chivalry होती है dating में, freeloader नहीं होना चाहिए. We are not saying कि then you will gauge, right? If a woman is like, let's say after your money, or what is that word nowadays, हर woman के पीछे gold digger. आजकल हर इंसान वो वर्ड ऐसे रैंडमली किसी भी औरत के लिए यूज करते, सो फकिंग स्टूपिड. यार, यू आल्सो हैव सिस्टर्स एंड कजन्स एंड ऑल दैट, राइट? So it's not necessary that everybody is a gold digger, right? And it just must be that the girl is just checking, is he like going to take care of me later? Because it's possible that after childbirth she might not earn, or like घर की responsibility देखते देखते शायद वो नहीं करना पड़े. But I think कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, अगर से woman wants to work and the man can, like both incomes can help them to have a better life, why not? और हमारे घर में तो वही हो रहा है. तो I don't know आप लोग किस आजकल, like my daughter, she has to study. I will not allow her to get married till she doesn't earn. I don't want her to become a freeloader or like be dependent on a man in case it doesn't work out. She doesn't have anywhere, like she won't do anything. So both my kids have to pitch in, whether it's the housework, whether it's the financial thing. So things are changing, and you people will also change. You will get women who will respect you, and you will respect the woman, because being a woman is not easy, man. I'm not saying it's easy to be a man, but the biological things that we have to experience since the time we are like young, how to explain to you all? I wish like it's not as easy as it looks. So we also have our own shit going on, okay? And I'm not saying for men it is easy. We all have our own different types of things going on. एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो. ये पैसा 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 सारा क्या कर दिया है तुमने? मैरिज की वाट लगा दी है. ये सारा टाइम पैसे पे तुम लोग ऐसे करते हो जैसे ऊपर लेके जाने वाले तुम लोग सब यार. So I think you need to be a little, if you're paying also for certain things, stop acting like you're doing fucking, जैसे तुम लोगों ने करोड़पति हो तुम, और तुम्हारी पूरी जायदाद तुमने किसी को उठा के दे दी है फ्री में. यार तुमको भी रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलता है, प्यार मिलता है, तुमको कंपेनियनशिप मिलता है. कोई ज्यादा करता है किचन में, कोई बाहर करता है. बैलेंस लाओ ना लाइफ में. ऐसा क्यों करते हो कि इट्स लाइक, oh my god, I'm paying for a dinner, and it's like, why should I pay? I'm paying for a taxi. So big shit, yeah. What is the big deal? Why do you all need to overreact? And whoever is asking to join this stream on Insta, it is not possible. I have tried. I have moved to Dubai. It doesn't work. Whoever wants to come, Jatin and Vasu who wants to join, please come on Zoom. I'm still sitting here, although I'm bloody hungry. All of a sudden, this anar doesn't seem to be helping. And yeah. Yeah, so that's what I am saying, right? Just a guy, I don't know what your name is, but yeah, you're correct. We both genders are facing different kind of shit. And if we are supportive, if we are respectful, it can be, all I see is people are making heavy weather out of small things. I mean, I have never earned in my life. Okay, I work, but I have not earned, as in even in my own business in Roti Dal and the 6 restaurants that I had. I worked like my fucking ass off, right? I did a lot of work, but did I make, I was not like getting any salary for, because we were partners or whatever. It was the initial part of the business. So I also worked. So I had my own shit going on. Maybe I didn't contribute with money, but I contributed as a human being, as a mass, let's say, to the ops or the whatever back end or whatever I was doing, right? So even though it was a family thing that we did, my husband never made me feel like shit. Why are you not earning? You worked in Roti Dal, why didn't you get money? He never made me feel अरे तू free में counselling कर रही है, तूने कभी पैसा नहीं दिया. He never did that. And that is a sign of a good man. And because I'm not earning, okay, but because my dad is no more, he supports my mother also. I mean, how beautiful is that? Because when my in-laws were alive, whether they were in the hospital, whether they whatever, I took care of them. Right? I never stopped my husband from ever supporting his sisters, his parents, nothing. Because I believe we are a family. We do things for each other. Okay?
क्या मैम वर्किंग एंड अर्निंग में डिफरेंस है? यू वर्क फॉर योर इंटरेस्ट एंड पैशन बट अर्निंग में यू हैव टू, ऑफ कोर्स आई अग्री. आई थिंक माय हस्बैंड has a lot of pressure because he was the only son, and then my father passed away. My brother had a lot of pressure because we had two siblings who were 6 and 8 years old or younger, and my stepmother, right? My father passed away when he was so young. We didn't have a single penny. We had to do everything, right? My husband, me, my brother. So but we never did this shit. We never said to our stepmother or to our brothers, हम क्यों करें? हाँ, तुम हमारे रिस्पॉन्स. ये आजकल साला तुम्हारी बीवी को ही तुम ऐसा बोलते हो, तुम अपने पति को ही, तुम्हारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ही तुम लोग एक दूसरे को नहीं अच्छा बिहेव कर रहे हो. क्या घंटा फैमिली करोगे तुम लोग? फिर फैमिली स्पिरिट कहाँ गई है? पैसे पैसा 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 कर करके तुम लोग फैमिली स्पिरिट को डिसॉल्व कर रहे हो. अप्रिशिएट करो एक दूसरे को, सपोर्ट करो, किसी को यूज मत करो. लाइक इफ आई वुड I think ये अमेरिकन माइंडसेट भी हो जाता है कि प्रॉपर्टी लड़का लड़की पहले से आई ओ यू दिस मच दैट. कभी कभी वेस्टर्न कुछ ज्यादा ही हमारा ईस्टर्न वैल्यूज जो इंडियन वैल्यूज हैं, यू नो, या जेंडर डिस्कशन नहीं हो रही है अब. जेंडर प्रॉब्लम्स मुझे लगता है जेंडर नहीं, कोई जेंडर डिस्कशन में हम उल्टा एग्री कर रहे हैं कि मेन के प्रॉब्लम्स अलग है, विमेन के प्रॉब्लम्स अलग है. मैं तुम लोग को ये समझा रही हूँ, लेट्स नॉट divide. Let's not play the gender game. Let's be nice to each other. Let's, whoever can earn more. The truth is this, that men get paid more. Now, if you get fucking paid more, you have to spend more, right? And I think women also can chip in whatever way they can, whether it is housework, whether it is taking care of the kids, whether it is driving, whether it is anything, whatever it is. And some people are lucky. Like, I've always had staff, right? So my husband never makes me feel like shit. So don't do this. आई थिंक फैमिली में हमने हमारे पेरेंट्स को लेके, हमारे एक्सटेंडेड फैमिली को लेके हम उनको भी मदद करते. तुम अपने बीवी और बच्चों के लिए तुम ऐसा बोल रहे हैं कि वुमेन आर, यू नो, क्या क्या तुमने वर्ड यूज किया था, क्या वर्ड था मैं भूल गई, व्हाटएवर, गोल्ड डिगर्स काइंड ऑफ वर्ड जो भी था. नहीं करते यार सब लोग. अगर से किसी के लिए तुम कुछ कर रहे हो और स्पेशली तुम्हारी वो फैमिली बन जाती है यार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा पति, जो भी, मैं दोनों जेंडर्स को बोल रही हूँ, मैं एक जेंडर के साथ नहीं बोल रही हूँ. मेरे भी भाई लोग हैं, मेरे भी बहन है, मेरी पूरी फैमिली है, मेरा लड़का भी है, लड़की भी है, मैं सबको बोल रही हूँ एक दूसरे को सपोर्ट करो, किसी को नीचा मत दिखाओ, एक दूसरे का हाथ मीट मिडवे. And yes, there will be sometimes you will not meet midway. Sometimes the man will do more, sometimes the woman will do. It's okay. Stop overreacting to the situation. You're not going to take money upstairs. जो भी है यही है आपका, ठीक है? अच्छा, आज का सेशन हम खत्म करें. मुझे भूख जोर की लगी है. मैं कितने देर से बात कर रही हूँ, कोई मुझे बताएगा कितने घंटे हो गए आज? आज एक्चुअली पता नहीं चला टाइम का. गणपति बप्पा मौर्य. राजन, थैंक यू. इंस्टा पे जवाब नहीं मिला. अच्छा, ओके, सॉरी शुभम. Mansi's ma'am, in some of your live sessions, almost 4 घंटे. Oh, ma'am, in some of your live sessions, you helped me regarding friendship problem. Thank you so much. My pleasure, Mansi. When I drink ashwagandha, I sleep for 10 hours sleep. भाई सोच समझ के नहीं, अश्वगंधा का lower potency 1 and ashwagandha just like it's a slow release tablet. Some of them take it like at 7-8 o'clock. Then you will know if it is affecting you 10 hours. Then break the bloody tablet. Then you will sleep less, but it does calm you down. Don't just Raj would explain it better since he is into all that. But read up on it and take the correct combination वाला. मेरे लिए कुछ है क्या? तुम लोग एक दूसरे के बीच में बात कर रहे हो. कॉपीराइट किस में आएगा? मैंने तो, अच्छा हाँ, अभी आएगा. वो लास्ट टाइम भी सारंग ने गाना गाया था, मुझे कॉपीराइट वाला मैसेज आया था. पर ये टाइम म्यूजिक थोड़ा कम था. होपफुली नहीं आएगा. इतना भी अच्छा नहीं गाता मैं. ये मेरे पीछे क्यों पड़ गया? अरे तेरे गाने से लेना देना नहीं है डार्लिंग. इट्स द म्यूजिक. They catch the music. They don't catch the singer. So if Sorry, you मैं नेक्स्ट से नहीं करूंगा. मैं नहीं करूंगा, कसम से नहीं करूंगा. मैंने सुन लिया दूसरे फोन में, बहुत ही गंदा हुआ है. हाँ, मैंने बोला था तुझे लास्ट टाइम भी बोला, तू सुनता नहीं. अभी तू माइक चेंज करके आ गया. माइक नहीं, मैंने फोन ही चेंज कर दिया. ठाट है भाई. तो मैं क्या बोल रही हूँ कि तेरी आवाज इतनी अच्छी है, यू डोंट नीड म्यूजिक टू सपोर्ट यू. उल्टा तो म्यूजिक इज फकिंग अप द होल सॉन्ग. कोई नहीं, मैं दोबारा गा देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है इसके अंदर. राजन ने क्या लिखा है?
मैम तो वाइब में है। हाँ मैं तो वाइब में ही रहती हूँ, क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो तुम्हें मैम, ओ हाउ स्वीट। शरण संधू, पहले तो आपको बेटा पैसा देने की जरूरत नहीं थी आपका हाईलाइट करने के लिए डार्लिंग। आई हैड ऑलरेडी एड्रेस्ड योर दिस थिंग कि आपका अगर से प्रॉब्लम चल रहा है, दिस इज टू शॉर्ट इन 4 sentences टू हेल्प यू। प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन DM, जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल रिप्लाई टू ईच वन। समबडी जस्ट रोट टू मी, मैम वी नेवर एक्सपेक्टेड अ रिप्लाई। काफी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। So I'm like, I reply to everyone. It's been 3 years. I will reply to you unless you irritate the shit out of me. Otherwise, you'll get replies. And so please contact me. This is not something I want to address here. And if I can help you, of course, I will try to do that. ठीक है? और कौन क्या? अश्वगंधा इंसोम्निया को सजेस्ट हो जाती है, तुम बोल रहे हो नींद नहीं आती है? अश्वगंधा किसने बोला नींद नहीं आती? कब किसने लिखा नींद नहीं आती? Insomnia के लिए तो I don't think so. It is actually for insomnia. It's to stay calmer. Please read up on ashwagandha. Yes, it has some properties which make you sleepy, but it's not really for that. But fine. क्या smile है भाई? क्या? क्या पता? Please address मैम respect. क्या पता? मैम तो वाइब में, मैं हमेशा वाइब में रहती हूँ। राजन तू ज्यादा ओवर रिएक्ट ना किया कर। मैं हर सॉन्ग अप्रिशिएट करती हूँ, हर टेक्स्ट अप्रिशिएट करती हूँ, मैं सबके साथ खुश रहती हूँ। और तुम लोगों को भी ना पता नहीं क्या क्या स्माइल है। यस मेरी स्माइल बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। राजन मैंने बोला ही नहीं। तुषार व्हाट आर यू राइटिंग एंड रिट्रैक्टिंग? राजन एंड तुषार प्लीज स्टॉप. It's very annoying because I have to go through so much. Do you all understand that it taxes my eyes to read so much? क्या? I'm an Tushar, I'm a NEET aspirant. Last I came to Kota, joined offline coaching. Okay, I don't know whether it is for me or not. I'm going to skip Tushar and I'm going to skip Rajan. And साहिल ने अच्छी चीज लिखी है। Lalit, I answered this question about counseling. Please remind the stream. I cannot reply. Lalit, I already answered कि काउंसलर बनने के लिए मेरा इनिशियल पार्ट, किसी ने मेडिकल डिग्री नहीं चाहिए आपको काउंसलर बनने के लिए, पर अगर से साइकोलॉजिस्ट बनना है और साइकेट्रिस्ट बनना है देन प्लीज गूगल है ना। आप इंडिया में हो, आपको इंडिया के अलग रूल्स होंगे कि कितने साल लगेंगे। हर कॉलेज का सेम नहीं होता। अगर से आप बाहर जा रहे हैं वो अलग काइंड ऑफ स्टडीज है। ठीक है? ओके, अब मैं आई थिंक आई हैव डन विद मोस्ट questions. I don't think I left anything, and we are completing 4 hours, is it? Which Sarim has old Salman Bhai hairstyle. Yeah, he does. Of that, Tere naam? Was it Tere naam? Okay, so anybody wants to say anything? Now I'm done talking. I'm exhausted. Aryan, ma'am, question. My question for next. नहीं अभी किधर? सॉरी, डिड यू राइट अ क्वेश्चन? कहाँ है बेटा? मैंने सारे क्वेश्चन पढ़े मेरे हिसाब से। मैंने पीपल आर नाउ सेल्फ सेंटर्ड, ये तुम्हारा क्वेश्चन नहीं है, सेंटेंस है। यार क्या बोल रहे हो? नो, आई विल आस्क लेटर। अच्छा यू मीन नेक्स्ट स्ट्रीम? हाँ, हमको बर्थडे स्ट्रीम भी करना है। हमने सोचा है बर्थडे स्ट्रीम पे हम गाना करेंगे और हाउसी खेलेंगे, म्यूजिकल। आई वंडर इफ दैट, लाइक आई सेड, आई डोंट नो इफ दैट गाय इज स्टिल इनटू म्यूजिकल हाउसी। So 10 minutes to 4 hours. Okay, ask me a fun question, Chalo. You look tired or stressed. Yeah, 4 hours almost, but we are going to do 10 minutes. So yes, to 10 minutes. Chalo, now please don't ask. Please don't ask me any serious questions. I can see some more. मैं आँख बंद कर रही हूँ। मैं एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ेगी जब तक तुम लोग कुछ फन क्वेश्चन नहीं पूछोगे। ठीक है? Only I will reply to Rick. तुषार अभी बोला मत पूछ, उसके ऊपर भी क्वेश्चन था, मैंने वो रिप्लाई नहीं किया। तो तुम अभी तुमको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, कॉन्टेक्ट मी प्राइवेटली, आई विल टेल यू हाउ टू डील विद दैट। मैम आपका बर्थडे कब था? सब भूल गए, सब नहीं मिले। सॉरी, ऐसा नहीं बोल सकते, काफी लोगों ने विश किया था। 2 जून को था, ऑलरेडी 1 महीना होके गया। मैम वो डिफरेंट तुषार है, मुझे क्या मालूम यार, एक तुषार पिंक में, एक तुषार ग्रीन में, मुझे नहीं पता। जून 2 को था ऋषि श्रीवास।
या तो फन क्वेश्चंस ओनली. किसी ने आई एम द पिंक, आई डोंट नो व्हिच वन यू आर, आई डोंट नो. हाय सिद्धार्थ, हाउ आर यू? मुझे नहीं पता, तुम लोग फोटो नहीं डालते हैं तो मैम माय क्वेश्चन आई विल, हाँ वाओ. सो 10 मिनट जाने, चलो फन क्वेश्चंस कोई तो पूछो. तुम कैसे बच्चे हो? सीरियस क्वेश्चंस. व्हाट कलर डज ग्रीन एंड पिंक मेक? एक मिनट, ग्रीन में पिंक डालेंगे तो क्या बनेगा? ऑरेंज? नहीं. नहीं, ग्रीन और पिंक, पर्पल. उसने यार मैंने कभी वायलेट आई थिंक. वायलेट बोलते हैं, पर्पल वायलेट सिमिलर ना? सिमिलर बट डिफरेंट शेड्स. अच्छा अच्छा, कौन मिशन इम्पॉसिबल देखने जा रहा है? मैं अभी घर पे देखूंगा. मैं तो जाऊंगी. मैं कल वो देख के आई ना, तुम लोगों को लॉस्ट, रेडर ऑफ द लॉस्ट, पता नहीं क्या मैम लेकिन पुरानी जो मूवीज है ना इंडियाना जोन्स की, दे आर लाइक ऑसम. ओके ऋषि, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे मैम. थैंक यू. मेरा बर्थडे पूरा साल चलेगा एज यू नो. जो भी मुझे विश करेगा इज मोस्ट वेलकम. मैम आपकी कॉस्ट्यूम ऑलमोस्ट ड्रैगन बॉल ये गोकू देवी कौन है? ये कोई एनिमे है? हाँ. अच्छा चलो ठीक है. वैसे भी मेरे पे तो एनिमे मीम भी बन चुका है. आई एम रेडी टू टेक दिस. पंजाबी बोल के दिखाओ ना मैम. सानू पंजाबी नहीं आती बट मैं तेनू प्यार कर दिया उतना आता है, बस उतना ही प्यार मुझे मेरी पंजाबी, और खोते आता है. मैं हाँ ये 3-4 चीजें आती है मुझे. तुम लोग बोलोगे तो मैं बोल सकती हूँ. हैप्पी बर्थडे दीदी राजन, थैंक यू. सॉरी. समझ गया दिल्ली से. मैं दिल्ली से नहीं हूँ. किसने बोला मैं दिल्ली से हूँ? किसने बोला? मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं बॉम्बे से हूँ. और बाय द वे मैं पार्ट साउथ इंडियन और हिंदी हूँ. मुझे हिंदी बोलना आता नहीं. बिग गाय लुकिंग प्रिटी मैम, थैंक यू. लुकिंग सो ग्रेट. वो विकी, थैंक यू. मी क्या है? Oh, who wished me? Okay. Except came show. Except, okay. Try speaking Gujarati. I don't know. I know came show. I know Dokla. I don't know. It doesn't consider. Hey, wait. गधेड़ और छे, something like that, right? और मुझे लगता है सब गंदी चीजें आती नहीं, पर I don't know. How do you say? What else do you say in Gujarati, man? I don't know. Kukra insult. No, I don't want. I mean, I do watch Big Boss in those snippets. और क्या फुकरा इंसान बिग बॉस से बहुत अलग है. वो बेचारा अभी गया, लेकिन उसका चैनल अच्छा है. I mean, चैनल अच्छा है बट मुझको नहीं मालूम है वो कौन है. मेरे को इन लोगों में से कोई नहीं पता था एक्सेप्ट के दिस वन सुपरस्टार. हाँ क्यों पता था? क्योंकि तुम जैसे लोग, तूने कुछ लोग मेरे चैनल पे, लेकिन मैं उसको बुला, उसको कौन है, किसको बुलाने बोल रहे? तो मैंने एक बार जाके उसका मैंने पेज देखा. मेरे को आई वाज ऑलमोस्ट नॉसिएटेड एंड वो अजीब है वो इंसान. एंड देन ओके ठीक है, he gave whatever fucking rating or whatever the shit he did, but he was loud. But you can watch this for like an hour, 2 hours, but you can't keep yelling, screaming. Even people would get bored. So I don't watch him naturally, but it was funny. What he was doing was like, he was really getting on people's nerves, and then finally he had to get out. But they say he'll come as a, what entry is called, whatever. So I don't really watch it, but I really don't care who the hell wins or who doesn't win. All of them are equal for me. मुझे कुछ फर्क नहीं. मैम बिग बॉस जीतना कोई अचीवमेंट नहीं है. हाँ exactly. Mostly it's rigged, as I've heard. बहुत सारे पागल लोगों के बीच में तुम साबित करो तुम सबसे बड़े वाले पागल. नहीं, but some people really enjoy. I used to like it initially. जब इतना झगड़ा नहीं होता था, वो मिर्च मसाला मुंह में आंख में डालना, ये सब, ये कौन इतना हर्ट कैसे कर सकते हैं दूसरे इंसान को, यू नो? मैम व्हाट इफ आई टेल यू, मैंने मार्वल की एक भी मूवी नहीं देखी. रियली? मैंने भी देखी है यार. तूने कैसी नहीं देखी? ऐसे कैसे है? क्यों? मतलब ऐसा नहीं, एक हाथ दो देखी होंगी, बट मुझे पता नहीं कौन सी मार्वल की है कौन सी नहीं है. ओके एनीवे, सो नॉट अ फैन. आर वी डन फॉर अस? कैन आई लीव? मार्वल इज ओवररेटेड. तूने देखा नहीं तो तुझे कैसे पता चलेगा? नहीं, नो क्या, आई कांट लीव यार. 4 घंटे हो गए. मुझ पे थोड़ा तरस खाओ बच्चा लोग. एंड 7:30 को आए थे आप. अभी 11:30. 3 मिनट और.
3 मिनट, अच्छा सब लोग 3 मिनट काउंट करो चलो। और 3 मिनट में और मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है, जल्दी जल्दी पूछो, कुछ फन क्वेश्चन प्लीज, नो मोर आई वांट टू किल माई सेल्फ, आई वांट टू सेल्फ हार्म, एवरीथिंग इन डीएम, प्लीज स्टॉप हर्टिंग योरसेल्फ, स्टॉप दिस। अच्छा, फेवरेट गजल सिंगर? मैम सिंग अ सॉन्ग, अभी तो मैंने गाया था यार, वो क्या गाया था मैंने? मैम गजल सिंगर। कौन माय फेवरेट गजल सिंगर? हम्म। अनूप जलोटा एंड वो वाला पंकज उदास। पंकज उदास, यस, द लेजेंड। मैम विच रियलिटी शो यू विल लाइक टू गेट इनवाइटेड? आई डोंट थिंक आई लास्ट इन बिग बॉस। वो चिल्लाना पुकारना और ये सारे लोग लड़ाई करते हैं, मुझे मेरी पैल्पिटेशन स्टार्ट होती है, तो मुझसे न झेला जाएगा। और कोई मैम टाइम पास के लिए मैं पोयम सुनाऊं एक और? नहीं रुक जा, मेरे को क्वेश्चन आंसर करना है। हाय रिदम, हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम नो सी। सॉरी आई डोंट सिंग सॉन्ग्स एंड फुकरा इंसान, नो आई डोंट सपोर्ट हिम बिकॉज आई डोंट नो हू ही इज एंड आई डोंट सपोर्ट एनीबडी इन बिग बॉस। It's just a game show and it's all rigged. I think it's just doesn't make sense. Yes, go ahead with your poetry. Okay, so it's a bit dark. फिर dark, कपड़े तू dark ही क्यों लिखता है? गा के थोड़ी लिख रहा हूँ। अच्छा चल बोलो। कपड़े ही तेरे गुनेगार, जो हुआ वो था कसूर बस तेरा। कब तक दोगे ऐसी दलीलों से जवाब, कब तक करोगे पीड़ित को जिम्मेदार? जरा सुनो उन चीखों को भटकती उन अंधेरी गलियों में। वो तो बस एक छोटी सी मासूम बच्ची थी। स्कूल के रास्ते पर मिले उसे कुछ हैवान, थे बेरहम वो जानवर, किया उसका भी बलात्कार। अब बस करो ये अन्याय का अंधेरा और रोको ये अपराध। सजा दो उन पापियों को, पापी मन भी सुन के कांप जाए। ऐसी न्याय की तलवार चलाओ। आगे कुछ लिखा था, मेरे से डिलीट हो गया। डिलीट कैसे हो गया? टाइप करते करते गलती से बैकस्पेस दब गया। और मैं सड़क वेरी इंटरेस्टिंग एंड नेक्स्ट टाइम कंप्लीटेड। किसी ने बोला डिनर के लिए क्या खा रहे हो? तो डिनर मेरा ये है, क्योंकि मैं रात को हेल्दी खाना नहीं खा सकती। मैक्सिमम मैंगो पड़ा है फ्रिज में, आई थिंक वो खा सकती हूँ। Yeah, only fruits. I can't eat anything heavy and sleep. It makes me very uncomfortable. Ma'am, अब आ रही है क्या हुआ? कौन है भाई, कौन अरे है? कौन है? मैं हूँ सारिम। मैं सड़क पे चलते चलते एक गाना गाना चाह रहा हूँ। हाँ गा दो चार लाइन। ओके सड़क चलते चलते गाना। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं। क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। बच्चे हंस रहे हैं मेरे ऊपर। कौन हंस रहा है? घूम रहा हूँ ये रहे। तो देख भी नहीं, मैं YouTube चैट पढ़ रही थी। बेबी का ये सब पोलाइट है, प्लीज वो कितना चिल्लाती है। आई थिंक इज बीइंग sarcastic. Anyway, you sang very well, सारे। ये बच्चों पे मत जाओ, इन लोगों को गाना गाता नहीं है और इन लोग हर चीज पे कुछ ना कुछ। He has a voice, see इधर लिखा है, he has good voice. तुम ये don't listen to all of it. But thank you for singing. Are we done with 3 minutes? ये for the second time I think we have done 4 hours. I could have sat little longer. बिगेस्ट रिकॉर्ड हमारा 6 घंटे का है। हाँ क्या? हाँ 6 घंटे। एक I दिन हम remember. जिस दिन हम बर्थडे स्ट्रीम करेंगे, पहले हम स्ट्रीम करेंगे, सब कुछ जमा करेंगे, फिर हम गेम खेलेंगे, ठीक है? मैम लेजिट वो 6 घंटे वाला स्ट्रीम, मैं कॉलेज से घर पे आ रहा था, मैंने गाड़ी चलाते चलाते जूम मीटिंग ज्वाइन की, पॉड्स पहने, मैं गाड़ी चलाते चलाते सुन रहा हूँ, फिर बाद में घर पे आके लैपटॉप सेटअप करके पूरा आई वाज सेटिंग फॉर लाइक 6 आवर्स स्ट्रेट विद यू। वाओ। अच्छा किसी ने लिखा लेट डू 5 hour मोर। अरे इधर 5 मैं बैठने को तैयार हूँ। मुझे माफ कर दो बच्चा लोग। आई नो यू लव मी सो मच एंड आई लव यू ऑल बैक एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो नाइस, सो काइंड, सो पोलाइट एंड द मोस्ट अमेजिंग ऑडियंस इफ एनी यूट्यूबर हैज इज मी। चाहे वो 5 हो 10 हो, बट मेरे पास वो क्वालिटी लोग हैं who are so sweet and नहीं आप कैमरा बंद कर दो, 5 और मोर कर लेते हैं पागल। हम ये देखोगे ये बैकग्राउंड 5 घंटे के लिए सिर्फ नाम के। आप कैमरा बंद कर दो, हम बैठे रहेंगे, हम बातें करते रहेंगे।
तुम लोग अपने अपने स्ट्रीम पे जाओ. लोग अगर से मेरा स्ट्रीम ही नहीं देखना वो दिल से कि हमको स्ट्रीम ही नहीं देखना है, मैम ऑन करके छोड़ जाती है और पता नहीं कौन कौन क्या क्या बातें करता है. मेरा शायद बैन ही हो जाए चैनल. आई विल मेक 5 AIs देन 36 अर्न्स. मैम डू समथिंग यूनिक ना. अरे सारा यूनिक ही तो काम कर रहा है इंसान, फ्री में तो काम कर रहा है, पैसा नहीं चार्ज करता है, 3 साल हो गया. तो सारा टाइम इससे यूनिक क्या हो सकता है, खुद ही यूनिक हो और फिर इससे ज्यादा यूनिक कैसे कर सकते हैं. लीव स्क्रीन ब्लैंक फॉर 5 आवर्स. माफ कर बच्चे, ऐसा सब उठ पटांग काम. ये कौन है, ये तूने क्या डाल दिया, ये क्या नया जूम लिंक, इतना बड़ा जूम लिंक. हेलो, व्हाट जूम लिंक हैव यू पोस्टेड? ओए आर्यन, आई एम टेलिंग यू. यही जूम है. Okay, Nitish Singh, I respect you a lot, ma'am. Thank you. Good night, everyone. Please, he has. रुक. क्या लिखा है? Dhruv, you look really pretty, ma'am. Thank you, thank you, thank you. ये जनित, जतिन, सोनी एंड वासु, तुम लोग तब से रिक्वेस्ट मांग रहे हो, मैं नहीं ऐड कर सकती. प्लीज अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा मुझे. सो मुझे माफ करो. अब मैं चली. ठीक है, हैक्ड पैंट. I think he's just no, he's not this thing hacked. He's just posting some link. I think he wanted you all to get together. Acha, YouTube wale, Insta wale, Zoom wale, thank you, darling. Ma'am, thank you from the bottom. Soccer 22 Road. Ma'am, I thank you from the bottom of my heart for the work you're doing for us. You're a beautiful human being. Thank you for all that. Thank you, Soccer. That's a wonderful way for me to end this stream. And I'm really, really happy that all of you all are with me, and I will come back again and we'll have some more fun. Thank you so much. And stop fighting about big boss. It doesn't really matter. अपनी real life पे ध्यान दो. ये सब चीजें ठीक है? Thank you so much, ma'am. Good night. Good night. See you all. Love you all. Bye.